Namaskar. Welcome you all to JKSC. Today, as you all can see on the screen, we will be discussing June 23 paper. Let us start. Of course, you all know the system if you have earlier seen any of the videos regarding any of the past papers. I'll be discussing the 40 sums of maths. So I'll be going in one flow, but as we all know, the questions are random, and so when you check the question numbers, you'll see in between the left out ones they'll be of LRs and stats, which my colleague will be then dealing after this part of the video. So we are dealing with first 40 sums on maths right now. They are random in the exam. We are going in one flow, 40 sums. Looking at the first sum, it's indices. And indices ka, I would say it's a good quality sum because it demands no a plus b ka whole cube. Now, first of all, I'll be writing the given first line as, we write it as a raised to, as we all know the cube root is always, let us say it's x, so we happen to write this in the power as x raised to 1 by 3. So coming back, b raised to 1 by 3 and plus c raised to 1 by 3 equal to 0. Now I have the plans of cubing for the simple reason that I am seeing in my what they are asking me to find is a plus b plus c. Now if you want to reach to abc, of course the simple logic is you need to cube it, but cube mein I am comfortable with only that formula, a plus b the whole cube, and only binomial ka cubic expansion, as in it will be going a cube plus b cube. This ab is not the question ka ab, just the formula writing, plus 3ab a plus b. So we'll be using that. So we just have to keep two terms on one side. So then what I'll be doing is I'll be shifting my third term on the other side. So that will be then minus c raised to 1 by 3. Now we go cubing on both sides. So it's going to be a b, cubing on both sides. So when I cube in a cube, I'll be getting a. I don't know how good it's happening. Just give me a second. Okay, let me put it in this way, cubing on both sides with minus inside, of course. Now we have got a plus b ka whole cube to be done. So let's start. It's going to be a, because a raised to 1 by 3 on cubing it's going to become a. Similarly b cube it's going to become b. Now we'll be cubing that part, plus 3ab. So we'll be copying 3ab, 3a. In my sum, the a is a raised to 1 by 3 and the b is b raised to 1 by 3. So in place of ab, I'll be writing a raised to 1 by 3, b raised to 1. And then in the bracket, I was supposed to copy that. So I said that is basically minus c raised to 1 by 3 in the first equation. So I happen to go that way. In place of writing a raised to 1 by 3 plus b raised to 1 by 3, I thought of writing the other side minus c raised to 1 by 3. Equal to what? The cube of that side. So minus stays as it is because it is getting cubed. And c raised to 1 by 3, as the power will cut, will be left with c. Now what is the next step? So I was keeping in one side, no, I need to reach to that. So minus c dekha, so I thought of pushing it on this side. So I am getting a plus b plus c. I was happy at least I got that part of what was asked to me. Now minus I bring it in the center. 3abc the whole raised to 1 by 3, because each of them a, b and c each were at, of the power 1 by 3. So let's take the 1 by 3 power common outside, equal to 0 because minus c has been taken on this side over here. Finally I say a plus b plus c is then equal to what? 3abc, just shifting the term on the other side. Then I take my 3 over here. Now you may be thinking how we are going to come to know 3 ko yahan aana hai, usko wahan jana hai. Now I'm just keeping I need to reach over here. So once I reach to a plus b plus c, my next job was to get upon 3. So I push my that term on the other side and then 3 comes, 3 comes down over here. Now finally, if you remove 1 by 3 from here and push it on the other side, it becomes raised to 3. So that expression is equal to ABC. Let me explain the last step.
If somebody says x is to 1 by 3 is equal to a, you can always say x is a cube. 1 by 3 you push it on the other side, in the power it then becomes cube. We take it as cubing on both the side. So, but I always say okay, if you shift the power on the other side, it reciprocates. Just like no ground terms, if you take it on the other side, it reciprocates. The power may be वही rule से 1 by 3 on the other side will become 3. But while explaining, we do explain that it's cubing on both the side. So finally we got the answer ABC. So our option A is the answer. I would suggest if you haven't got this, once again watch that part of the solution. So now moving to the next sum, seems to be quite easy now. Can I just clear the space? Okay. So now we are looking into the second sum. It's log. Seems to be quite simple. So let me copy the expression. Log to the base 10 of what? 5 log 100 to the base 10. And the whole thing was supposed to be squared. So I hope you read the question correctly. Now the very first shot any student would have done was what? He would have written this as 10 ka square. That power 2 will fall down and make it 10. Now log 10 to the base 10, it becomes 1. So that's gone. So finally I am left with only log 10 to the base 10. Check that. And that was taken on whole square. But the inside value again goes 1, the whole square, which is 1. Can I come again? Okay. Let's try one more time. Check it. So sometimes you need to in fact do some scratchy work in the question line itself only, because that's one more way of going quick in the sum. As in many to start working over here only. Let me put in once again log 10 of what? 5 log 100 to the base 10. But then the whole thing was supposed to be taken as square if you read the question correctly. My first step was what? If I put down the steps. Log to the base 10, 5, 100, anybody would have written log 10 square. The whole square. This 2 falls down, makes it 10. Now we all know log a to the base a is 1. So log 10 to the base 10 was 1. So that's gone. You're left with again what? Log 10 to the base 10. Even that's 1. And then finally the square of that 1. So answer goes option A. Now let's move into the next one. We are coming to quadratic equation. Okay. Now before we start, as you are reading the question, alpha beta are the roots of this equation and this is easily factorizable. So I'll be in a very good position of finding alpha beta. I need to make a QE. I need to make QE whose roots are alpha plus beta and alpha minus beta. Form QE आया तो something what strikes me first is how do we form a quadratic equation? X square minus sum of root x plus product of roots equal to 0. But whose s? These two roots ka s. Whose product? These two roots ka product. So to get to s and p of these two roots, we need to have this and this. So I start my solution. X square minus 2x. So this is backtracking. मुझे QE बनाना है. माने एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी मेरे दिमाग में भागा. किसका एस? इसका एस. किसका पी? इन दो रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए. Those roots whose quadratic you need to make, उसका s and उसका product will be going in that. So now x square minus 2x minus 3 equal to 0. So I would say 3 and 1, the factors of 3. I'll put the sign to get to minus 2. I'll put x to get to factors. I hope I'm using the right words. I now reach to my two roots 3 and minus 1. So I say alpha goes 3 and the beta happens to go minus 1. So I then crack my alpha plus beta, which is then 3 minus 1, 2, and alpha minus beta, which happens to then go 3 plus 1, 4. Now I know this 2. So I go for s of that two roots, s of this 2, 6, product of this 2, 8. And then my equation is x square minus sx plus p equal to 0.
So hypotenuse x square minus 6x plus 8 equal to 0. It's my second option. Once again, when they ask you form QE, दिमाग में या in the cloud, x square minus sx plus b as sum of roots. Whose sum? These two roots जिसका उन्होंने हमको QE बनाने बोला. Whose product? These two roots का product. But to crack this two, we have to find alpha beta. Now that was very easy. A school going kid factorize करके alpha beta find कर लेते हैं. Once you get alpha beta, strike your this and this, then take the s and p of these two roots and get into the last line. Now coming to the next one, simple question. Equations. It seems to be equations, but later on turns out to be inequality because यहाँ पे एक word आ गया at least 59. The largest side is 3 times the shortest side. So I'll say the shortest side bx. So largest side will be then 3x as per the 3 times the shortest side. And then the third side was 4 shorter than the largest side. So it was 4 shorter than the largest side. So take a note of it. Shortest side x, largest side 3x, and then the third side was 4 less than the largest side. So 3x minus 4. The perimeter of the triangle needs to be at least. So perimeter has to be at least 59. So either 59 or more. I hope I can take a chance of saying this way. I pray to God I must have at least 2 wives. That means what are you trying to say? Or what are you asking for? 2 या उससे ज़्यादा बीवी. At least 2 wives बोला ना. So when they say at least 59, so either 59 or more than 59. Now perimeter, everybody knows sum of all 3 sides. So it's going to be 7x minus 4. I hope without writing I can add it. Should be greater than equal to 59. So 7x has to be greater than equal to 63. X needs to be greater than equal to 9. I can see the last option. The length of the shortest side means x needs to be greater than or equal to 9. So option D is your answer. Now, अक्सर ऐसा कुछ देखकर ना, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो सबसे पहला वरिंग फैक्टर, विल आई बी एबल टू फैक्टराइज, भगवान तंग नहीं करना. एंड व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक तो अच्छा खासा बंदा भी हिल जाता है. इट्स नॉट अ टेक्सचुअल सम, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Add this to your kitty. You have a set of sums of QE. Add this sum over there. Increase your base. Now coming back. Alpha beta are the roots of this equation. But I can assure you it's going to be a easy sum. If I cannot crack alpha beta, one thing I can crack in place of that. Alpha plus beta, always. Minus b by a. So I'll be writing, let us say this is 1. So I can see my a, I can see the b, and I can see the c. So let's start. If not alpha beta, I can at least find alpha plus beta minus b by a, which is going to be n square plus 1 because b was minus of n square plus 1. So minus b then becomes m, and divide by 1, so I can ignore. A was 1. And comma alpha beta, which is c by a. So my c was half n raised to 4 plus n square plus 1. Check please. Sir, upon a was 1. So I have now alpha plus beta, alpha beta. Now let me check what they are asking me. They are asking me to solve that. I said okay, I know how to get to that. Alpha square plus beta square happens to come in alpha plus beta the whole square. But when you expand this, we also do happen to get the center term to alpha beta, which is not supposed to be there because we just want alpha square plus beta square. So anybody with simple algebraic skill can understand. Okay, this will, when you open up, you'll be left with only alpha square beta square. You may be thinking why there is a need to do that. I have in my armory only alpha plus beta, alpha beta. So whatever they ask me to find has to be then expressed in terms of this two, because that's the only two things which are available to me. अगर alpha beta individually होता तो why should I would have never written this as in the previous sum. Alpha 3 था, beta minus 2 था, minus 1 था. I would have straight away put the values for alpha square plus beta square के लिए. But here we have to go around the way. Alpha square plus beta square किस में आता है?
अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर में आता है, मैं उसमें एक सेंटर टर्म आता है 2 अल्फा बीटा. दैट इज नॉट व्हाट आई नीड ओवर हियर. So I need to then no push it. Alpha plus beta the whole square. So I'll bring in my n square plus 1 the whole square. It's going to turn out quite simple. Minus 2 alpha beta is that 1 by 2 n raised to 4 plus n square plus 1. So 2 is gone. N square plus 1 the whole square. So let's apply a plus b the whole square. That's a square plus 2ab plus b square. And let me open my bracket. So minus n4 minus n square minus 1. n4 and n4 gone, 1 and 1 is gone. From 2n square, when you subtract 1n square, you happen to get only n square. That's your option B. Sometimes the looks are really scary. As in, anybody looking at this kind of quadratic, he would say, I'll check this sum afterwards. But if you know the basics, ke alpha square plus beta square, which happens to be in too many questions in your module, so you must have surely practiced alpha square plus beta square. You must have gone for alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. This is backtracking. Alpha beta I can manage minus b by a, b by a, c by a. Whatever be the shape of the quadratic, I will always be able to manage these two things. If I can manage these two things, let me give a try right now only. Working was quite simple. But yes, such kind of thoda sa drifted questions at this moment only, you are not solving the paper. Let us say you are going to the paper. Take your pen, take your file of quadratic equations, whatever you have made it. Add this question over there. June 23 का worth watching sum. देख के डर लगा, solve करके कुछ भी नहीं था. Now moving to next one. Okay, time value of money. Systematic investment plan in a mutual fund. At my age, I didn't understand SIP. That means at your age. Then I was reading again. 1 lakh every year. Oh, every year. From today, annuity immediate. From today onwards, 1 lakh every year I'll be depositing in some mutual fund ka scheme for next 10 years. Rate of return 10%. Compounded annually. Okay, fine. Find the future value of annuity. Okay, they have used the word annuity. Even if they would not have, 1 lakh every year for 10 years starting from today, I got an annuity ka sum. Let us now go for future value. It's going to be A, the annuity amount what you keep aside every year. 1 plus I the whole raised to n minus 1 upon I, and make no mistakes. You read it from today. So this is annuity immediate, annuity due. So it's into extra 1 plus I. So now 1 lakh was the installment what you are going to keep aside into mutual fund every year starting from today. 1.1 because I is 0.1 for 10 years. Okay. Minus 1 upon 0.1 into 1.1. Now calculation. Okay, I am gifted with that value. So I start with that on the calci. So it's going to be 2.59374, double check. Minus 1 divided by 0.1 into 1.1 into 1 lakh. It turns out to be 17 lakhs 53,114. Have I got some option? Oh, all are looking so close. 17 lakh 53,114. No, you don't get trapped over here, please. So option D is your answer. Only thing you need to take real good care. Maybe one of the options in this may be with the answer without that. Don't fall trap to it. Need to read every word. In fact, I always say when you come to annuity ka sum, you have to ask yourself, is it today or period end pay? Only then you proceed. Now coming to the next one. Paul is investing 1 lakh in a mutual fund scheme January 2018. After 1 year, he gets dividend amounting to 10,000 for the first year. So 1 year end pay he gets 10,000 dividend. It's a dividend paying scheme. Second year ke end pay 12,000, third year ke end pay 16,000, fourth year end pay 18,000, fifth year pay 21,000. Find the CAGR of the dividend return. किसका growth rate find करना है of the dividend return. So we have to focus on dividend. How much your dividend has grown. So what was your first dividend?
फर्स्ट ईयर एंड में you had received no 10,000. Yes, you had received 10,000. I don't think so this will help us anywhere. Your dividend grows by what rate? So first dividend and the last dividend needs to be taken into picture. मेरा 10,000 कितना बनना end में? So first year you were getting 10,000 dividend and the same dividend then became 21,000 at the end of fifth year. So at the end of fifth year it was 21,000. It is as good as now you can think that way कि your 10,000 has become 21,000. So your initial dividend was 10,000, the final dividend was 21,000. So your dividend has grown by what rate? So now you can take it in this way. मेरा 10,000 21,000 बन गया. क्या रेट पे? Compounding, of course. But then don't fall trap to that it was 5 years. No, you may think it is 5 years. It happened in 4 years. First year end say fifth year end. There is a gap of only 4 years in that. First year start say fifth year end is 5 years. But first year end and then fifth year end, there is a gap of only 4 years. So all this happened in 4 years. So we have to take it k 1000 became 21,000 in 4 years time. So now compounding the formula A is equal to P 1 plus I the whole raised to n. So your 10,000 ka initial dividend finally it becomes 21,000 in the last year into 1 plus I raised to 4. Make no mistakes, it's not 5. 10,000 first year end, 21,000 fifth year end. So your 10,000 has grown to 21,000, but in a span of in between 4 years. Now 2.1, when I push my 10,000 on this side, it's 1 plus I. Now this was a gift. Check the given thing. 2.1 is also 1.2038 raised to 4 as per the given data. So I can then say the 1 plus I is equal to 1.2038. So then you can say I is equal to 0.2038. I has got inbuilt 100. So the answer is 20.38%. The option A is your answer. Do not get trapped to something else. You are supposed to find the compound growth rate of dividend return. So आपका initial dividend क्या था, final dividend क्या था? Only that should be in your mind. Initial 10,000 था, final year I got 21,000. So my dividend has grown 10,000 to 21,000. So then it becomes a simple compounding का formula and they gifted us with such a wonderful value. Okay, what raised to 4 is 2.1, which was I badly needed while solving it. So now I hope this again I would say it's not your module ka stuff. So add such kind of sums. Simple compounding ka sum hai, but look at the language, look at the figures they are giving me. If you just go back and look at the figures, starting with 1 lakh, so public wo 1 lakh dala ho uske andar. They are not talking about your amount has grown by what rate. In fact, those who know a bit of the language of this mutual fund, you are getting your dividend. So it's not adding on the principal. So it's like dividend payout. You got your 10,000 first year. Last year you got 21,000. So how much your dividend has grown? तो ऐसा सुनने में आया ना कि 10,000 21,000 बना. 10,000 has grown to 21,000. So that's the whole catch. In between ka figures, initial figures make no sense. Now, Ram is in, it's a sum. Now this is what I am asking you all, those who are viewing it, because those who are viewing are a bit serious. A bit more serious than the other people. Let me not hurt anybody else. But if you are watching this, any sum which you see ke it doesn't come into my regular course of sums, you should have your files ready. Okay, मेरे cupboard में मेरा वो annuity का file किधर है? Let me make a page starting में add one sum. मैं वो भी नहीं लिखना चाहता वहाँ पे. I don't want to write June 23, check June. मैंने every time when I am solving annuity का sum from my course material, I'll have to open up a file of June 23 on my tab or on my mobile and see the sum number. Rather copy the question over there यार. छोटा सा एक question, छोटा अपना words में लिख दो. Add to your kitty of already you have made a set of sums. Now coming back, बहुत ज़्यादा ज्ञान का बात हो जाता है. I'm really sorry for that.
Mr. Ram is investing 1 lakh in 2 schemes, in 2 different banks. First bank giving him 9% and the second bank giving him 11%. Total interest at the year end is 9.75% per annum. Assuming simple interest. Let's go forward. How to solve? There are 2 ways to solve. I am taking this as allegation and mixture ka sum. It's really right now. શું વાત કરે છે આ? Time value of money માં allegation mixture ક્યાંથી આવી ગયું? I see as allegation mixture. Let me show you. Okay. पहले तो one which you feel कि okay, this is the way you have to solve the sum. Then we come to allegation mixture का sum. 1 lakh का 2 parts. Let one be x and the other be your 1 lakh minus x. So one going in one bank and other going in other bank. So x was invested in the first bank who was giving you 9%. So 9 by 100. Simple interest, no? For 1 year. So it is 1 year, na? In 1 year, at the end of 1 year बोला है. So n नहीं आता है. The balance 1 lakh minus x was put in the other bank who was paying you 8%, sorry 11%. So 11 by 100. Now equate it to what? He said overall you got 9.75% total. So 9.75% of 1 lakh, which I feel very easy. It's going to be 9750 on the CALC maybe. So I need to equate it to 9750. Now, first of all 9x plus 11 lakhs, I'm opening the bracket, minus 11x, and down ka 100 I post it over here. So it gets multiplied. So it's 975000. Now 11 lakh minus 975000. So 9,75,000 will be equal to 2x. Tu bolega, अरे ऐसा कैसा फटक से? That's minus 2x which I put it on that side 2x, and 9,75,000 I got it over here. So 11 lakhs minus 9,75,000. That's 1,25,000. Divide by 2 to get 2x. The x is 62,500. Our answer is that 62,500 in one bank, and balance 37,500. That anybody can do it. Minus 1 lakh, the other amount. That's 37,500. So one bank may you are parking 62,500 and the other bank will be taking away 37,500, and then in return you get 9750. This is one way of solving. Can I recollect? X amount parked in bank A giving you 9%. Okay. The balance 1 lakh minus x. I hope you understand. Balance 1 lakh minus x was parked in other bank paying you 11%. And equal to total interest you got at the year end was what? 9.75% of 1 lakh. So easy, 9750. Now in simple working, 100 वहाँ park कर दिया, open the bracket, you got your x. That is one way of working. Now I would like to show you the other way. For me it sounded like allegation mixture. If you have gone through allegation mixture ka set of sums, there are only limited set of sums, but it gives you a good idea of allegation mixture. You can apply. I'll just show it to you. So then it is you who have to decide how to solve. But if you know this kind of things, na, you are quick. Now this working took away a lot of time. Now there was a bank A and bank B. He was offering me 9% and he was offering me 11%. Collectively I got 9.75% on the whole amount. So I subtract, I see 0.75. I subtract, I see 1.25. In this two ratio, I need to split my 1 lakh. That's what allegation mixtures happen to. Mixtures happen to explain us that thing. Okay, now the entire mix, if you want to distribute in this two, it has to be distributed in that ratio. So can I just settle down? Can I go 125 to 75 multiplying both by 100 and then dividing by 25? So it's going to be 5 to 3. So total parts are 8.
and total amount corresponds to 1 lakh. So I found the relationship 1 lakh divided by 8, and that turns out to be 12,500. So I got 12,500. Now that relation if I apply over here 12,500 ka, I can see 62,500. You can check it into 5 and that's 62,500. And the balance 37,500 goes over here. So if you don't talk and if you just finish off by mixtures, it happens so quickly. No x, nothing. So can I just recollect? A was giving you 9%, B was giving you 11%. You had 1 lakh with you. You had to divide the mix. You had a mix of 1 lakh. So you had to make a division. How much should go in A and how much should go in B. So overall I get that percent. So mixtures teach you very simple thing. Difference 0.75, difference 1.25. Okay, split the 2 in that ratio. Split the 2 in that ratio. So I multiplied by 100 to get rid of points 125 to 75. I saw 25 ka multiple divide by 25. Simple ratio. Total 8. Total amount 1 lakh. So one part corresponds to 12,500. I applied it over here and here. Quick answer for that. So there is one more way you can always add in your kitty. Sum tha time value of money, but we beautifully can think in this way. Mixture का sum समझ के कर सकते हैं. Now coming to the next one. Okay, moving to the ninth question now. Company wants to replace machine at the end of 10 years. Expected cost 10 lakhs at that time. So future value. It's a sum. By now I got it's a sum of sinking fund. So I need to create a fund of 10 lakhs at the end of 10 years. So management creates a sinking fund. So this is all regular stuff. How much needs to be kept aside every year to get to that 10 lakhs? So simple sinking fund ka application. So let's apply future value is equal to amount which you keep aside every year to reach to 10 lakhs into 1 plus I the whole raised to n minus 1 upon I. But then again I have to read, is he starting from today? No, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है. Normally sinking fund में it's always no period end पे, because profits and the revenue part happen to be at the end of the year, whatever the year end is. So then from there they try to keep aside a particular amount as an installment. They could keep doing it for 10 years, keeping target value 10 lakh rupees. So now coming back, because I saw that, I need to just remind my viewers, okay, this is your ANI. So let me call the installment in this sum as C. So ANI, your interest factor, future value interest factor given to you. Now 10 lakhs is your target value what you have to achieve at the end of 10 years. Installment, how much you need to keep aside from your profit or revenue of your company, that's what we need to decide. Into A 10 comma 0.1. So what is that? 10 years, or maybe you have to take it 10 installments you have to keep aside, and the money is growing at the rate of 10%, 0.1. That full value was given to me over here. So what I need to do is divide 10 lakh by that value. So 10 lakh divided by this value 15.93745. Before you press equal to, just check in one more time. 15.93745, and I get my answer. The installment to be kept aside is 62,745 point some 39 paise. So 62,745, option C seems to be the correct answer. That is the amount which you need to keep aside every year for 10 long years, and then you see a handsome future value 10 lakh. Use it to replace your machine, existing machine. Now, okay, once again, nominal rate, effective rate. Once again, I know if you are watching this video first time, and that's why I keep explaining in all my videos whenever I come to few such kind of sums where I need to make some base, or you have to remind, I have to remind you something. So what's effective rate? In all my videos you may listen the same thing, so those who have already listened can just fast forward the thing. I heard one of the schemes reading 10% per annum compounded half yearly.
So I was very curious, okay, effectively I'll get what? So I paid in 100 rupees because compounding was done half yearly. So at the end of half year they were supposed to put in 5%. So they put in 5 rupees and my principal grows to 105. My principal will now become 105. In the next half year they pay me another 5% on 105 now. So 5.25, if you do the calculation, it's 110.25. So 10% nominal rate compounding half yearly effectively becomes 10.25%. Or I do understand in this way also, effective rate is one single rate which takes you to the end same result. In 10% compounding half yearly, your money was compounded 2 times. But if you want to see the same effect by single rate, that rate has to be 10.25. That single rate giving you the same effect like the compounding, that is called as the effective rate. Now we have the formula E is equal to 1 plus I the whole raised to n minus 1 into 100. So if any element of doubt, this is not a lecture, so I would have surely shown you how. But even now you can check for our given example. Then we'll work out for the question. My I in my given question, in my given example was what? 5%. I is one period ka compounding. So it is going to be 1.05. I is 5%. Compounding was done 2 times in a year. So raised to 2 minus 1 into 100. So let's try out. 1.05 into equal to minus 1 into 100. And you can see 10.25. 10.25%. So I think everything was pitch perfect. Now coming back to our sum. Okay, coming back to our sum. This was regarding our example. So now 10% per annum and it was compounded quarterly. So quarterly rate will be what? 10% by 4, which turns out to be 2.5%. So in I it's going to be 0.025. No, we have to divide 100 for I. 100 is dissolved in I. Can I come again? 10%. The nominal rate is what? 10% per annum but compounding quarterly. So our quarterly rate will be then what? 10 divided by 4 quarters. So it comes to be 2.5% every quarter, which if you dissolve 100 becomes 0.025. So now it's going to be 1.025. Check. Raised to 4 times because in a year the money will be compounded 4 times. It was compounding quarterly. So in a year compounding 4 times. Minus 1 into 100. So let's figure out 1.025 into equal to, that square, cube raised to 4 minus 1 divide by 1 and into 100. It turns out to be 10.38%. So option D was your answer. Check it please. Now comes combination ka sum. So just a small brief. Let us say I have got 4 boys and I have got 3 girls. I need to form a committee of 2 boys and 2 girls. 2 boys will be selected from 4 in 4C 2 ways. Because I have got and, my committee has to have 2 boys and 2 girls. It will be in 2. 2 girls from 3 will be selected in 3C 2 ways. And then the calculation. So now coming back to the sum. This was just a small brief. Now coming back to the question. I think this question must have come in so many times in the MTPs and papers. So many to know the answer also of this sum. I have to make a committee of 3 ladies and 4 gentlemen. And I have got with me 8 ladies and 7. So I'll say I have got 8 ladies and 7 gentlemen. From there I need to pluck out 3 ladies and 4 gentlemen. I need to make a committee of that. If nothing was given, the answer would have been 8C3 into 7C4 and then a calculation. But now we have a condition over here. Miss X refuses to serve in the committee if Mr. Y is a member. So if Mr. Y is member, then Miss X will not be a member in the committee. So I got to understand in this way, okay, the two will never be together in the committee. So what I did was, rather elaborating the solution by, in the form of cases, I said why not from all committees,
We subtract committees where X and Y are together. The rest committees will contain them not together. Can I come again? Miss X refuses if Mr. Y is a member. That means X and Y will not be in the committee together. So what we can do is, if you want to go one short calculation, from all committees you subtract committees where the two were together. The other committees will not have the two together. So let's work out all committees. All committees we'll have to focus over here. 3 ladies from 8 will go in 8C 3 ways and 4 gents and बोला तो into आ गया. 4 gents from 7, 7C 4 minus X and Y are already in the Now here we are working what? Committees where X, Y are already in the committee. That's what we have decided. So if X is already in the committee, if Miss X is already in the committee, my requirement has come down to 2. And available ladies now are only 7 because X is already in the committee. So remaining 2 from 7, 7C 2 ways. Similarly, Mr. Y was already there. So my requirement of gent now reduces to 3 gents. And available gents are only 6 because Y is already in. So from 6 I have to select 3 and that happens in 6C3 ways. Now comes the calculation. Okay, 7C4 I can make it 7C3. We all know it. From 7 I select 4 is as good as I reject 3. So why not reject 3? That happens quick. Now 8C3 ka calculation. So 876 upon 3 factorial, which is 6. 7C3 ka calculation, 765 upon 3 factorial, which is again 6. Okay, easy cuts, minus 7C2, that is 762, and 6C3 is 654 upon 3 factorial, which is 6. So again 6 cut over here. So I have got 56 into 35, 1960 over here, the first bracket. This is 21, something what I can do, into 20, that's 420. So when I subtract 1960 from that, I happen to get 1540. So 1540 is your answer. Standard sum hai, standard figures is there in the module also, must have popped up in your MTB so many times, in your class ka periodic test also so many times. So normally you know the answer, nothing better than that. This is those who are solving it. Those who know the answer, they are of course going to mark that answer. But just be sure that it was the same numbers. Sometimes no short tricks can prove very fatal. Now coming back over here, okay, just making space for the next one. Okay, now the sum number 12. It's a very interesting sum. I think so you will have to add this also to your time value of money. Mane, this is the attempt. Okay, you may have one thought running behind. नसीब है हमारे हम इस अटेम्प्ट में नहीं थे. I would have taken in this way, नसीब है आपके, आप इस अटेम्प्ट में नहीं थे. मैं नसीब कैसे पॉजिटिव है? I got some new sums. So I got some new armory, new weapons in my armory. So now I can deal with some bigger enemies in my coming battle. But for that you have to be ready. You have to include this sum in your पहले का. See, while solving, while listening to this, you may say, ha, correct. Today evening, when you try to recollect, you may not be able to recollect the question also. क्या question क्या था वो भी याद नहीं है. And now you lost it. कौन सा year था वो याद नहीं है. One wonderful search of yours, your efforts, was in vain. So such kind of thoda sa eccentric sums you need to include right now only in your file. But now coming back, I have to tell. So it may add on okay, he's just going blah blah blah. A car is available at 498 200. Sorry, 498 200 cash. So if you buy on cash, you have to pay 4,98,000. So I would say the price of the car is 4,98,200 as of today. You pay this amount, car is fully yours. But I think purchase mein they opted something else. They made a down payment of 60,000. So I said down payment of 60,000. So then the balance 4,38,200. They
took the loan. The buyer takes a loan of that. That's common sense. Price of the car is 4,98,200. Cash payment I made on that day was, first down payment I made was 60,000. So balance 4,38,200 somebody has to pay on my behalf to the car company. So I took a loan of 4,38,200, which I agreed to make 3 equal annual installments. I agree to pay back in terms of 3 equal annual payments. So I would say, okay, he pays A over here, A over here, A over here. I did check, did he start from today itself? No. It's year end, say year end, yes, annual. So he'll be returning the amount, loan amount in the way of annuity, wherein he decides to make 3 annual installments. A first year and second, okay. The present value was the loan what you had taken. The present value of all this 3A is the loan what you have taken today. So that will be equated to, let us say, A, and then into P, I would rather write 1 minus 1 plus I, the whole raised to minus n upon I. This part is also called as P and I. You have been many times listening from my end, future value interest factor, A and I. Similarly, your annuity tables also have present value interest factors, P and I. So this entire calculation what I have circled is given to you as a ready value. So we have to learn, no, we have to use it. It's given to your benefit, so you are supposed to use it. So now going aage, so it's going to be A into P and I, that's 4,38,200. So 4,38,200 is equal to A into P and I ka value. But can we check your N and I? Okay, N was 3 installments, correct. And the rate applicable was 14%, and even that's correct. So I am very comfortable using that value 2.32163. Okay, so that value we divide over here. So now let's move on. 4,38,200 to be divided by 2.32163. Let us check it. 2.32163. Okay, it turns out to be, the installment size turns out to be 1,88,746.70, rounding off to 2 places. So can I just repeat that? Not that part, the entire solution. That is quite simple. Can we just recollect? 4,98,200 was your car price. You made a down payment 60,000. So baki 4,38,200 was the loan what you have taken. That is today. And you happen to pay it back in terms of annuity. 3 equal annual installments. So I applied present value of annuity ka formula, please. So that's how we reach to A, the installment what you have now got to pay. That's the amount what you have to now pay for 3 years, every year, and shelling out that. So installment size was 188,746.70. So let me come back to question now, as you can all see. Question is how much was the question is asking you how much was the interest charged to you. You paid back in terms of installments, so always interest will be charged to you. So how much was the interest charge? Now that was the first or one single installment size. You are going to pay him 3 such installments. So you paid him how much? So luckily I had the value there on the CAFC. So in all you turn up paying 566,240. So that's like amount paid back. You paid back that. But how much did you borrow? Borrow amount was 4 lakh. The loan amount what you had taken was 4,38,200. The difference will be the interest charge. That's what you have borrowed, and that's what you are paying back. The difference is the interest charged. So minus 4,38,200. It's 128040, 128040, option C. Can I brief the last part? Installment tak to, that was very simple. A loan amount was given to you. How much installment will be the size so that you pay back the loan amount. So that's present value of annuity, because loan is something what we buy today. And then we done up paying annuities, which are actually installments what you are paying back. So finding installment size was quite easy for us. Once you found installment size, multiply by 3, because that's the 3 installments you are going to pay back to finish off your loan ka repayment.
You got the total amount you paid back, amount what you borrowed, subtract from that, and then you happen to see the difference, which is the interest which was not charged to you. So now moving to now, these are the sums which are not so common. I cannot see any single sum going this way in your module. So you need to take in such kind of sums back into your those books which you happen to revise from, so that you don't happen to miss this sum which you have found by such a wonderful such attending this kind of attempt ka discussions with us. So add the sum to your kitty. Now थोड़ा simple कुछ आया है 6p2r. okay, 6p2r is 12 6pr. The only problem what I see is, okay, when they happen to give me 6p3, I know I have to move 3 times. But when they say r over here, I don't know how many times I need to move. So it's like somebody has jammed me or somebody has locked me. I am reading this, I am so happy, एक simple sum आया है कुछ तो. But when I jump into solving, I got jammed. 6p2r is equal to 12 6pr. I don't know r, that's what they have asked me to find. So how I'm going to apply the formula, or else you apply the formula, which is again going to be a tedious job. R नहीं दिया ऐसा क्यों बोलना, इतना चार R तो दिया है हमको. Let's start putting the options. So let us take the first R as 1. So then this becomes 6p2. So I am checking option A. It's 12 into 6p1. This I can check. This is 6 5 30. This is 12 into 6. There is no match. LHS is not equal to RHS. Likewise, I go for B now, and I just keep praying to God by B पे answer आ जाए. Now that's my R, new R. So let's fix it over here. 6p4 हो गया. Let's fix it over here. 12 into 6p2. Will the two sides match? आने वाला समय दिखाएगा. 6 5 4 3 and सामने 12 into 6 5. I hope working of 6p2 you know it. Okay, 6 5 matches. 12 and 12 matches. No need to use CALC. It's done. The B R2 satisfies your LHS RHS. Else using formula I would avoid. I would rather like to check on the options giving me R. Now moving to next one. First read पे पता नहीं चला, but let me share with you, this is a sum from your module. So attempt में module के sums आते हैं, it really gives you a good boost. चलो कुछ तो जाना पहचाना sum आया. So you have to rush fast in that. Find the number of numbers between 74 and 2556. Count it. It's 25,556. Divisible by 5. So I started. The first number after 74 will be 75. Next will be 80. Next will be 85. And I have to go on and on and on in this series and reach up till 25555. That's my last number in the series, divisible by 5. Before 25556, I saw plus 5 plus 5. It's an AP. Now I read the question. How many terms are there? How many terms are there? So I just need to crack the term number of the last term. Let us say he is the 60th term. That means there are 60 terms in the sequence. So he is the Tn. So I started applying Tn ka formula. A plus n minus 1d. So 25555 is equal to 75 the first term plus n minus 1 and then 5. So on the CALC just check me doing that. I'll be doing what? This minus 75 divide by 5 and then plus 1. Can I repeat that? So on CALC you can actually go in one shot. There is no need to start working manually in that. So 25555 minus 75, so that's done. Now we come with divide by 5, okay, so that's done, and then we go for plus 1. So the n is 5097, so that means he was 5097 term in the sequence. That means there are 5097 terms in the sequence. 5097 is your answer. The term number of the last term,
are the number of terms in the sequence. Sounds very simple, sounds logical. The term number of the last term are the number of terms in the sequence. Now comes a fantastic sum. They are giving you some R defined on set A. I hope you understand relation. It's a set of ordered pairs. R is a set of such ordered pairs, x, y, where x is going to come from A and even y is going to come from A, because they said the R was defined on A. So R is a relation defined from A to A. Both first and second component, both x and y, will be coming from A, where A is equal to 1, 2, 3. Okay, I said fine. Now R already has got few ordered pairs. Okay. Now minimum ordered pairs which we need to add into R to make it equivalence relation. Now equivalence होने के लिए the relation has to be reflexive, it has to be symmetric, it has to be transitive. Now you have to redesign your R to take it to a status of equivalence. Right now I think so it's nothing. With the given two pairs it is nothing. To make it reflexive, what more ordered pairs you'll have to add? So reflexive में तो I can understand, everybody must be knowing it has to have 1, 1, 2, 2, 3, 3. So these are the ordered pairs which we need to fit into R to make it reflexive. I hope you understand the question. If I put these three ordered pairs in my R, the R will then become reflexive. Symmetric के लिए क्या करेंगे? To make the existing R symmetric, because it has 1, 2, it should have also 2, 1. I hope you know the symmetric definition. If the relation contains AB, it should also contain BA. Then we can say the relation is symmetric. So 1, 2 था तो 2, 1 होना चाहिए था, 2, 3 है तो फिर 3, 2 होना चाहिए. With incorporating these two ordered pairs into my R, I can make it symmetric. So symmetric is done as of now. Now coming to transitive. So let me just brief you. I have ordered pair A to B in my R, and then I have got an ordered pair B to C in R. Then I should also have A to C. I'll write it over here. If we have A to B and if we have B to C, and these two ordered pairs are already in R, then we have to by compulsion have A comma C to make it transitive. So ask yourself, you had 1 to 2 and then you had 2 to 3. To make it transitive, you have to put in 1 comma 3. You had A to B, then you had B to C, you have to have A to C to make it transitive. So 1 comma 3 has to be added to your R. So right now the answer seems to be 6 more ordered pairs need to be added over here to make all 3. Right. Transitive में this entry came after we fixed on symmetric. After finishing of symmetric, we have added one more pair, 1 comma 3. It is spoiling my symmetricity of R. Because if 1 comma 3 needs to be added in the R to make it transitive, then it is spoiling my symmetricity because I don't have 3 comma 1. So go back and add 3 comma 1 because this is your playing area. What all ordered pairs you need to add in R to make it equivalence. So this is something which a student may have lapsed in the exam. 1 comma 3 बोल दिया, answer 6 ordered pairs. Without that he would have gone 6 ordered pairs, he would have marked option C. 1 comma 3 after you had finished off symmetricity, आपने 1 comma 3 डाला. It's like, see, if you change money, if I'm talking to some girls out viewers over there, you changed your outfit, then you just forgot that you have to change so many other things. आपका झुमका, बंगड़ी, छंगड़ी जो भी है, you need to change that thing to rematch it. So after symmetricity, you had added one more pair, so you had to see कि is it spoiling the symmetricity? 1 comma 3 डाल दिया तो 3 comma 1 किधर है? नहीं है तो डालो ना, ऐसे भी इतना सब हम ordered pairs डाल देते. So we need to put in 3 comma 1. Now the things look perfect. It is now reflexive, symmetric, transitive by adding all these 7 pairs. Please count it. Answer 7. Because if it becomes reflexive, symmetric, transitive, that means the relation now has become equivalence. Now, wonderful sum. We don't have a sum of this type.
in our module. Add. Or just make quick notes, man. And then after you have gone through the entire paper, before you think it to evening I'll be solving this paper, full go mein. Before that, you found few sums, you have a list of few sums, new sums, open up your file and it just takes 10 minutes. But just imagine ke towards the end time you are also looking into this not so often asked questions. आगे इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन का सम है बिकॉज व्हेन आई सी फैक्टर्स वो मेरा लालच बढ़ जाता है. इट्स पार्शियल फ्रैक्शन. सो लेट मी गेट आउट 1 upon x minus 1 into x minus 2. I can write it as a upon x minus 1 plus b upon x minus 2. If I succeed doing that, it will be very easy for me to integrate. We'll see. So 1 is equal to cross multiply पे a into x minus 2 plus b into x minus 1. So we start putting some good values of x. Let me put x2. So 1 will stay 1. E is gone. And b, when you put 2, we have got 1 over here. So b finally turns out 1. Next x I put is 1. I hope you all know the partial fraction ka stuff. Because when you put x1, the b goes off and you happen to get a ka value. So let's check. 1 will stay 1, a into 1 minus 2, which says a into minus 1, which also says that a goes minus 1. So now I'll be integrating what? Minus 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2. Because this can now be replaced by this one. Check. Integrating 1 upon x was quite simple. Now I am going to treat that as 1 upon x only, both the terms. So that was minus log x, okay, and this is plus log x minus 2. If I just interchange the positions, no, it is minus a plus b. I would rather like b minus a. So I will be writing it as log of x minus 2 minus log of x minus 1, of course plus 1 some constancy. I saw log a minus log b, so I am going log of a upon b. X minus 2 upon x minus 1 plus c. I can see the first option matching with that. Now, easy question. Oh, this is good one. One of the YouTubers have made it very simple, but I think so it's a terrible mistake. He has reached to answer, but the entire solution, 2-line solution, seems to be quite wrong. Let us get into our solution. For a given curve, y minus 2x square, x is increasing at the rate. X is increasing at the rate. So I see the dx by dt is 3 units per second. Now you may be thinking, यार dy by dx से dx by dt पे कहाँ से आ गया? Rate at which your x is growing is the change in x over change in time. Let us say कि you want to find out the rate at which your height is growing. So what you will be doing? The change in height divided by change in time. Let us say 3 inch आपका height बढ़ा 3 साल में. So dh was 3 and the dt was no 3. So 3 by 3 1. So your height was growing at a rate of 1 inch a year. dh by dt. So rate at which the x was changing is of course dx by dt, the change in x over change in time. It was given to me as 3 units per second. The slope of the curve will change by what rate? Sir, will change by what rate? ऐसा नहीं पूछा है. Slope of the curve ही पूछा है. नहीं, but when you see the options, ना, they are reading in terms of increase, decrease. और वो भी per second, per second, per second है. So when you see the option, the question gets complete. The slope of the curve will be increasing or decreasing by what rate? So let me get into solution. The y is equal to 2 minus x square. I do agree the slope of curve, let us say we call it m, it's dy by dx by my theory, by our theory of slope of curve. Slope of tangents is a part of your curriculum, which tells you slope of curve or the gradient of curve is given by dy by dx, which is minus 2x. अब किसी ने x को उसमें 3 डाल के आंसर ले लिया, सो थोड़ा अजीब हो गया. One of the YouTubers had done that, but that's fine. चलो, a viewer is happy, fine.
but that was not the right thing. So now what to do? Slope of curve मिला है, but you are asked the rate at which the curve is going to change. The slope of curve is going to change. Sir, आप read करो question. Slope of curve will be what पूछा है. I explained you earlier. Slope of curve पूछा है, लेकिन when you see the options, the question now completes in this way. Slope of curve will change by what rate? So again dm by dt पूछा है. Change in slope over change in time, the rate at which the slope will change. And look at the answer, it is per second. Increase, the slope will increase or decrease by this many units per second. So it's the rate at which the slope is changing. It's not the slope. The rate at which the slope will change. So it's dm by dt. It's not m. Change in slope over change in time, rate of slope. Rate at which the slope is changing. Okay. So it's basically I need to derivate my minus 2x. Sir, कहाँ से आया? I just fit my m over here. So minus 2, as we all know, will go aside, and then we have to differentiate x with respect to t. I am just doing my derivatives. Minus 2 will come outside, and x will be then derivated with respect to t. Dx by dt was there with me, 3 units per second. The rate at which the x is, that though it's given to me, the rate at which the x is going. So minus 2 into 3, minus 6. So slope is changing by the rate of 6 units per second. It is decreasing. So decreasing, minus. So we have to go for option C. It's decreasing. The slope is decreasing at the rate of 6 units per second. So I would suggest if you have not digested whatever things I have said, rather me pulling the full solution once again, take a pause, have a glass of water, tea, come back and watch right from the start of 17 ka discussions. To brief you, before I move into the next one, x is increasing at the rate. So dx by dt. Change in x over change in time is the rate at which the x is changing. Can I put some similar word? Change in height over change in time, dh by dt. It's the rate at which your height was changing. So they gave me this. Initially I felt then the slope of the curve will be what? So they asked me what is the slope of the curve. So I thought dy by dx. Easy, na, dy by dx. When I saw the option, the question then started taking a new frame. Slope of the curve, if I just put in first line in that, slope of curve will increase by 6 units per second. That means slope of curve will change by 6 units per second. So it's the rate at which the slope is going to change. So it's not the slope what they are asking you. If you see the answers, they are asking you the rate at which the slope will change. So dm by dt. dm by dt was easy. Derivative of minus 2x. So minus 2 out, and then x ka derivative with respect to t hai. So nobody should go 1 in that. But dx by dt again was given to me. But still, if you are not comfortable, I would say take a small break of a minute and a half. Come back into 17 and once again go through that. Add to your kitty. So many sums. अभी तक तो I think so most of you must be saying, पहला तो शायद मुझे लगता है आप घर पे मम्मा डैडी जो भी होगा, मम्मा थैंक्स, एक साल बाद हुए हम लोग, एक साल पहले हो गए होते गलती से ही होते हैं, तो जून 23 में होते हम तो अटेम्प्ट दे रहे होते. Gosh, but think something positive. I'm getting so many good sums out of this. Now coming to the next sum. Okay, simple question है. Let me recall. AP में any term is a plus n minus 1d. How do I interpret? T7, I'm so sorry. T7, it's a plus 6d. I always go in that way. 1d less than the term number. So let us start. Let us start solving. This is just an example. Okay, 9 term is 35. So a plus 8d is 35. And the 19th term is 75. So a plus 18d is 75. Can I subtract in a reverse way? So 18d minus 8d is 10d. 75 minus 35 is 40. So d is equal to 4. You put back your d over there.
So a plus 32 is 35, the a turned out 3. So a is 3 and the d is 4. Now you are in a capacity of finding anything in AP. Once you know a and d, you are able to find anything. Find the 20th term, that's going to be a plus 19d. So make no mistakes. 3 plus 19 into 4. So that's going to be 19 into 4 plus 3, and that's equal to 79, option B. Now, मैं तो jump कर दिया solution. Oh my god, such a simple sum. Y is u upon v. I have to apply quotient rule, then I will be getting my dy by dx. Oh gosh, question is dx by dy. सर तो रेसिप्रोकेट कर लेंगे, हमने 12th में सीखा हुआ है, हम रेसिप्रोकेट करके वो कर लेंगे. Let me just warn you, will not work over here. I put it in simple way. When do you go for dy by dx? When do you go for that? When y is a function of x. Because if y is a function of x, then y will change when you change x. Then y will change when you change x. So on the same grounds of understanding, when would you have gone for dx by dy? Of course, when x is a function of y. Because now x is depending on y. So x is going to change when you change y. So it's going to be dx by dy. But the thing what I came out was what? For dx by dy, the x needs to be a function of y. Just like for dy by dx, the y had to be the function of x. So now they gave me y function of x. But the question says that you should be having x as a function of y. So can I just make some space for me? Okay. सर इधर क्यों, इधर जगह था ना आपके पास. नहीं नहीं नहीं, I have to first reshape my function. This is forcing me to reshape my function as x is a function of y. Only when x is function of y, I'll be going for dx by dy. So let me now start moving no terms. So it's going to be xy plus 5y equal to x. So trying to do what? Trying to reach here. Then I'll start my dx by dy. So I'll be taking x ka terms on one side. Did you hear me? I'll be taking, because sometimes people do get hooked at this line also. अभी सु करने का, अभी आगे सु करने का, सु नहीं करना है. Think what you want. X function of y. Collect all your x on one side. And that's equal to minus 5y. So x is equal to then minus 5y upon y minus 1. You can hide your minus in the denominator. So x is finally, can I write over here? X is finally 5y upon 1 minus y. I hope you understood minus goes into the denominator to make it 1 minus y. Now let's start derivative, dx by dy. But my viewers should make a note. I am differentiating with respect to y. Of course, it's a quotient rule which I have to apply. So it's going to be v square. I hope all the viewers basic quotient rule to malum hai. V square, and then in the numerator it's going to be v into derivative of u minus u into derivative of v minus. So 1 minus y into the derivative of 5y. No, v into derivative of u minus reverse 5y into the derivative of 1 minus y. Stop. Did you see it's happening with respect to y? Now proceeding 1 minus y, it's going to be 5, because when you differentiate y with respect to y, it's going to be 1. It's like when you were differentiating x with respect to x, you said 1. So minus 5y, 1 will go 0 and y will go 1. I am talking of that part of derivative. 1 becomes 0 and y become 1 upon 1 minus y the whole square. So it's going to be 5 minus 5y, opening the brackets, plus 5y. If you see that 5y and 5y is cut upon 1 minus y the whole square. So answer is 5 upon 1 minus y the whole square. 5 upon 1 minus y the whole square is your option A. What a wonderful talk. कहाँ है ये सब? अभी है ना सामने.
You have it in front of you. But such a wonderful thing, many miss out seeing this in this way. Mane, doing derivatives has been always a fun for many. But such kind of no simple logical concepts, somewhere हम मिस कर गए समझना, मिस कर गए सुनना. क्लास में यौन क्या, वो प्रोफेसर बोल दिया, खत्म हो गया, हमने तो सुना ही नहीं था ये. For dy by dx, I prefer y to be function of x because then y will change when you change x, dy by dx. For dx by dy, you apply your mind. For dx by dy, x has to be a function of y. Only then the x will change when you change y and produce dx by dy. But question was y is a function of x. When the demand was x is a function of y for solving. So shift the terms. Na baat kyun karna hai? Shift and then try to pull all the x on one side and you will see x function of y and then blast dx by dy. Simple quotient rule, simple derivatives tha. So coming to the next sum now. The age of a person is 4 times. A very similar sum is there. In fact, when you read the sum, you will see okay, it's the same sum, but I would say okay, the numbers are slightly changed from the module. The age of person is 4 times the sum of ages of his two sons put together. So I have father versus his two sons, S1 plus S2. Presently, it says that his age was 4 times the sum of ages of his two sons, which I call it as x. The two sons ka total sum of ages is x today. So father will be 4x of that. Now after 10 years, so 10 years down the line, father will be 4x plus 10. Now here is the catch, x plus 20. The two sons both will grow by 10 years. So the total will go up by 20. And at that time they say the father's age will be double the sum of their ages. So my 4x plus 10 is 2 times x plus 20. So finally when I open the bracket 2x plus 40. So when I subtract over here it's 2x. 10 when I subtract over there it's 30. The x has turned out 15. हाँ, don't mark 15. नसीब से 15 ऑप्शन में नहीं है. नहीं तो पब्लिक x 15 चलो मार्क कर लिया. Find his present age. Father's present age. 4 into 15 and that's equal to 60. So option number C is your answer. Moving to the next one. Simple sum of inequality. Experienced tailor can stitch 5 shirts and fresh tailor can stitch 3 shirts a day. Employer wants to maintain an output of at least 30 shirts. Oh, I can't tell my God to say कि I would love to have at least 30 wives. माने 30 या उससे ज़्यादा. Oh gosh. So I hope at least 30 you understand. Employer मालिक चाहता है कि कम से कम 30 shirts तो हो. 30 या उससे ज़्यादा. Okay, assuming के experienced tailors are X. There are X experienced tailors and Y fresh tailors. One tailor, experience wala, he stitches 5 shirts. So X tailors will be stitching 5X shirts. Similarly, one fresh tailor is stitching 3 shirts a day. So we have Y fresh tailors. So they will be stitching in all, I'm so sorry, 3 Y shirts. So total shirts manufactured daily will be 5X plus 3Y. Employer wants this output to be at least 30. Either 30 or more. Comma X and Y, these are very regular constraints. I hope I have used the right word, constraints. X and Y are number of tailors, so they can't be negative. So X has to be positive or 0, Y has to be positive or 0. So I can see option number C reading that. Okay, quite easy. Now log ka sum. They are giving me log X, they are giving me log Y to the base 10. Okay, not mentioned also, I would have taken to the base 10. Express this. So I start. Log to the base 10 of what? 100x upon y square. So we apply the rule. We push the log inside. So into है तो plus हो जाएगा, upon है तो minus. So it's going to be log 100 plus log x
and y square was upon me, so minus log y square, wherein the 2 is going to fall down. 100 I can write it as 10k, I'll put it in the next line, 10k square, all are happening to the base 10, rest as it is. The 2 again can be brought down, and log 10 to the base 10 is 1, plus log x, they give me m plus n minus 1, minus 2 into bracket log y, which is m minus n. So let's open the bracket, 2 plus m plus n minus 1 minus 2m minus plus 2n. I'm so sorry. So let's count the number. 2 minus 1 will be 1. M minus 2m will be minus n. Counting n, n plus 2n will be 3n. I can see my first option, 1 minus m plus 3n. Again a simple sum. Now, oh wow, inequality. Now, so that's what I learned something during when I am doing this video. Initial few sums were asking a bit from you. Few sums did seem to be on reading happening to you for the first time. I am talking with respect to the students who are attempting this paper for the first time in their year. But when you pass into the next pages, you happen to see quite small questions, and oftenly you have seen such sums. So do not demotivate yourself while attempting few sums which you haven't attempted earlier. Best, it's my suggestion, cannot be generalized or customized. I would have rather skipped few sums which I am seeing for the first time. I have a vague plan of solving the sum, but I rather experimenting, I would like to reach to 100 first. What is in store for me in the Picheka pages? That's how I've asked, I've spoken to many students, they say, okay, sir, if you want to click maximum sums, that's the approach you have to keep. And this all things you have to learn when you are at home attempting these papers, attempting MTPs, done with those 8-9 MTPs, coming to past papers, and it becomes your method of approach in the final battlefield. Win-win situation. Coming back over here, fertilizer company makes two grades of fertilizers. Each of them has to be processed in a chemical plant. Plant has only 180 hours available. Max availability 180. So I'll just circle that. Grade 1 takes 4 hours in plant 1. So I'll say grade 1, grade 2. Now looking at the options, I got it. Okay, I'll take grade 1 as x1 units and grade 2 as x2 units. I'll be manufacturing x1 units of grade 1 and x2 units of grade 2. Now he is taking 4 hours in the plant and he is taking 10 hours. I read it in the plant, and plant has maximum 180 hours available. That was I read earlier. So I got it 4x1 plus 10x2 is the total time consumed by the grade 1 and grade 2 x1 x2 units, and that cannot exceed 180, cannot exceed 180. So either max I use 180, that's the optimum usage of your plant hours, or it has to be kept below that. उससे ऊपर जाए नहीं सकता, plant doesn't support your time more than 180 hours. So I can see my answer going option D, 4x1 plus 10x2 less than equal to 180. Of course you would have thought of कि और भी हम दो लिख सकते थे, x1 positive and x2 should be greater than equal to 0. Fine, it's not there, so ignore it. We know it. So added that, I would have taken that option, but right now D is the best answer. Oh, a very standard question. Let me not talk much about it. I start with x equal to y raised to a. Then y was what? Check. Z raised to b. Club it with power a. As in k a raised to m hai, and then I have power n by the side of it. So ultimately it becomes a raised to mn. Now, going aage, what is z? Z is x raised to c. Club it with your existing power ba. And this is 1. So I can see the ABC
is equal to 1. Standard sum. Many would have marked the answer 1 also. Difference between SI and CI. So don't fall trap to that. SI minus CI. Oh gosh. Time value of money का student ऐसा बोला. Simple interest minus compound interest. Compound interest is always more than the simple interest. So it was in a layman's language. Difference between your and my age is 30 years. That doesn't mean that you minus me is 30. It's me minus you who is 30. So CI minus SI on a sum invested for 3 years at 6% is 110. So the difference in interest was 110.16. It's a sum from your module. Find the amount what was invested in. So let us say, let's put P into 1 plus I the whole raised to n minus 1. Now that gives you CI. SI के लिए the answer was P and I. See, SI is P and R upon 100, but now I think R upon 100 we understand it's I. So we happen to say Ni. Sir, P and I. P to bar है ना common. So Ni, and that's equal to 110.16. Now it's time to put the numbers. Rate was 6%, so 1.06. Years were 3 minus 1. Years were 3 and the rate was 0.06%. And that's equal to 110.16. Now on the calc, 1.06 into equal to that square equal to cube minus 1. So I am done up till here. Minus that you'll have to do orally 0.18. You can't do on the calc minus 3 into 0.06 because when you go minus 3 and then you press into, it's going to finish off that much calculation of yours. Terrible mistake. So this part of the calculation, either you keep it ready earlier 0.18 bana ke on the calc. So you finish off in one stretch. Now that was 0.00 0.016. So we have finished off the bracket. Can I just come in 1 second because explanation maybe I have just spoiled my step ka looks. Sir, looks? Huh? If you do happen to see every step properly. So putting in numbers 1.06, the rate was 6%, 3 years minus 1, 6, sorry. It's 3 years into the rate was 0.06 and that is equal to this. So on the calc, remember this 0.18 calculation you keep it ready. You can't do it in a continuous format in your calc. It's going to go wrong. So once again let's start 1.06 into equal to that's your square cube minus 1 minus 0.18. You have finished off this bracket. Check. Now that you need to pull it down and सामने multiply हो जाएगा. So if I pull this in the denominator, which I can by pressing the 1 by x ka button, which you can do it by what? You need to press what? Divide equal to. If you want to bring in any value in the denominator, you have to press divide equal to. I have got a ready button over here. आप पूछ रहे हो why there is a need? If you get it in the denominator, straight it will go into 110. It will go into 11. So I have to just go into 110.16. 10,000 is the principal amount which was invested. I think you all got it. Depreciation ka sum. Let me finish off first writing v is equal to p 1 minus I. आप बोल रहे हैं क्या कर दिया 1 plus I का depreciation है. So when money is depreciating, you don't say 1 plus I. It is 1 minus I. V is the value of machine after n years. Let us say we are talking in terms of years. P is the purchase price of the machine or the initial cost of the machine, whatever you want to take it. Value of machine after n years can also be taken as a scrap value. Let us say आपका 100 का मशीन 5 साल बाद 42 रुपीस का हो गया. So if you sell it at that point you get 42. So the V was 42, but that can also be taken as the scrap value because you were selling at that point. You'll be selling at no V. So it is also called as, the depreciated value is also called as a scrap value also. Now all terms and terminologies you must be knowing. I just briefed you. Depreciates at 10%, okay.
मेरे को I मिल गया 0.1. The cost and the scrap value are these two respectively. तो फिर पूछा क्या है? In how many years the machine was put, for how many years the machine was into use, n पूछा है. Okay. Final value of the machine after n years was 9,000. हाँ, be careful. नहीं तो डाल दिया बड़ा वैल्यू, इनिशियल कॉस्ट. नो, इनिशियल कॉस्ट तो इधर आएगा 23,240. Then 0.9, if you understand, 1 minus 0.1 raised to n. So let me divide that. So 9,000 divided by 23,240 and I get 0.38726. No help is given to me in the sum. ऐसा एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू दिया नहीं है यहाँ पे. But I was comfortable. I have to find out 0.9 raised to how many times will make me reach to this value. So I started 0.9 into equal to, that is square, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I reached 0.3874. No, 0.387 तक तो आ गया था. But I forgot the number. You'll never because you have that screen का thing over here. So even if you are not narrating to yourself how many times you have pressed equal to, you always know the screen is going one more than your power. So you have to stop at this because one more equal to is going to drift my value far away from that. So we take it point ke baad 3 places 0.387 I reached it. So I'll have to again work it out because I lost my count. 0.9 into equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. My n is 9. So in 9 years, the value of machine is going to become 9,000. And if you sell at that point, the scrap value was 9,000. So that's how we do understand. So machine was put to use for 9 years. Okay. Oh, wow. Question from your module. Population increases by 2% every year. 2% of what? Of the population at the start of that year. And it will grow by 2% in that year. So this is compounding ka funda. Every next year the principal will be at the start of that year. What is the principal? That will be the input. So third year में the second year का जो final amount बना, that becomes the principal for the third year. This is compounding concept. So apply compounding का formula, but let us finish up reading the question. I just I just gave a few looks to few words and I found it was there from the module. Increases by 2%. Population beginning of that year. I explained every time it will grow 2% of what? Of the population at the start of that year, not start of the first years. And this is like compounding. The number of years, the total will increase by 40%. Okay, let me write compounding a formula. A is P1 plus I the whole raised to n. Let us say initial population was 100. You want the population to become 140. In how many years? That is something what they've asked me. Rate of growth is 2%, so 0.02. So 1.02. In how many years? That's the question mark. So 1.4, once I take my 100 down in the denominator, it's 1.02. I can see a help given to me. 1.4 is also 1.02 raised to 17. I got my answer. So no need of using calci. You would have got your answer by calci also, but why there's a need to use when they are supporting you with such fantastic values over here? Your n is equal to 17. So in 17 years, your population is going to grow by 40%. Oh, wonderful sum. पहले पढ़ लेते हैं. New sum. Govinda's mother decides to gift him 50,000 every year starting from today. Annuity का sum. वो भी annuity immediate का sum. Govinda's mama is gifting Govinda 50,000 at the start of every year and she does it for 5 years. 5 बार 50,000 रुपया दिया है. गोविंदा अच्छा बच्चा है. He deposits the amount in the bank the same very date. But even he is following the annuity immediate का thing. आज आया आज ही डाल दो, deposit कर दो. He is investing. The money will grow at 10%. What is the present value of this annuity? Okay. So I can see something like this. 50k, 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 50k. That's the end. That was the start of every year. So Govinda's mummy giving him 50,000 and 50,000 was deposited by Govinda at the bank every year.
at the start of every year. Okay. Present value ढूंढना है. Present value of annuity. I can see annuity very easily. So it's going to be a into 1 minus 1 plus I the whole raised to minus n upon I into 1 plus I. Here comes a small talks. सर आप ऐसे भी हर समय में बहुत बात करते. This sum is something new. Check. We all know कि this entire bracket, mind you, not 1 plus I. 1 plus I is because of the annuity immediate का formula. It's termed as PNI, present value interest factor. As per my given data, it should be P5, 0.10, but they are giving me P4, 10. Let me share with you the annuity tables given to you on the last page of your module. They all are for ordinary annuities. See, if I take P5, 0.10, it has to be 5 installments at this end. Ordinary annuity. But that's not the case. So what you can do is, you just ignore your first 50k. Sir, ऐसा कैसा? गोविंदा डाला ना 50,000. Wait. So wait. I'll repeat. The circle thing what you are seeing right now, this circle, is your PNI. How many installments were paid in? By mummy to Govinda and Govinda to the bank? 5 times. So n was 5. Rate was 0.1. That's not what we are arguing for. But इधर तो 4 दिया है. Formula always deals with ordinary annuities. So this PNI, your present value interest factors, are for the ordinary annuities. So you can treat it as ordinary annuity where no every installment was coming at the end of the period. For that you'll have to ignore the first 50,000. Timing के लिए. Do not try to hurt yourself. ऐसा कैसा बापू का राज है उसका? पहला 50,000 उड़ा दिया. नहीं उड़ा नहीं दिया है, हम उससे अभी हटाते. At least for this 50k 4 times, I can see when I talk of present value, I am treating this as ordinary annuity ka sum where 50k's are coming at the end of the respective periods. So now I am very comfortable applying this formula. So 50,000 into that value, because now it is 4. Now I am dealing with P 4, 0.10 because I am talking of only 4 installments. But now when I look at the timeline, the 4 installments gives me a true feeling of ordinary annuity, where all the 50k's with respect to this start is coming at the end of every period. So I am applying PNI over here, and as per the rule it has to be now 4 if I ignore the first one. I have to ignore first one because I have to treat it as ordinary annuity. सर तो पहले वाले का क्या होगा देखते हैं ना, into 3.16987. So 50,000, I'm so sorry, into 3.16987. That gives me 1,58,493.5. But mind you, this is the present value of this 450k's. What about my first 50k? Add it. सर ऐसा कैसा? उसको जैसा है वैसे ही ऐड करेगी. हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ढूंढ रहे हैं ना. दिस 50,000 you are paying today only, और ये सब 50k को you are bringing it over here, which collectively became this amount. But today का 50,000 today will be only 50,000 ना. So we have to include that as 50,000 in the final amount. So we found the present value of this 4 annuities, which turned out to be 1,58,493. Plus today ka 50,000 will be included as 50,000 because today ka 50,000 is today 50,000. Today ka 50,000 today it's 50,000 only. So answer will be 258,493.5. A viewer out there who is solving alongside with me, he may be right now saying, अरे कितना हंगामा कर दिया, सीधा ये फॉर्मूला में डालता और ये इग्नोर कर देता तो भी आंसर आता है. यस,
If you are willing to see that, I would again suggest add this sum nahi, add this concept if you have missed out. Your PNI is coming from the annuity table, and annuity tables are designed for ordinary annuities, where the first annuity happens at the end of every period or end of the first period, and all other come at the end of the successive periods. Now problem with my sum was the very first 50k is coming at today, and rest another 450k are coming पीछे बाद में धीरे धीरे एक एक करके आ रहा है. I cannot use PNI over here because PNI में if I say P5 comma माने if you say के they would have given me P5 comma 0.10, they should have given me that. Even that's not applicable over here because for that the first installment had to come at the end of first period, which is not the case. So they have smartly done what? Okay, they gave you this. They are by that way telling you okay, you talk only of the 450 case piche ka, which gives you a feel of annuity ordinary, because now when you see the first 50k, it's coming at the end of first period. So ordinary annuity. But now when you find present value of annuity of this 450 case, the thing what hurts me is, what about my first 50k? I can add it towards the end in the end answer. ये 450k का मुझे present value ये मिल गया ना. Now today का 50,000 I have to include in that, will be included as 50,000 because today का 50,000 is 50,000 only. So that can be easily handled. Or what the viewer out there is laughing on me. એ શું બોલે છે આ બધું, આટલું બધું કેમ કટકટ કરે છે? એ કટકટ નથી કરે છે. This is diversifying. મને my new one, I am sitting in my home. I have a leisure of time. What he is saying, let me listen to that. Oh, this is something new, wonderful, nice. Adding it to the queue, no, to our kitty. It's adding new weapons to your armory. तो सब औजार बैटलफील्ड में लेके आते लेकिन सब तो यूज नहीं होता है ना. So you have to carry maximum. I don't know which sum needs which kind of weapon from your end. Something अच्छा नया सीखा. Okay. My PNI supports only ordinary annuity, but sum is of no annuity immediate. So what should I do now? पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसका मैं क्या करूं? उसको हटा दूंगा तो ऑर्डिनरी एन्युटी दिखता है मुझे, एंड देन देयर पीएनआई इज एप्लीकेबल. तो हटा देना, उसको बाद में ऐड कर देंगे आंसर में एज इट इज, बिकॉज टुडे का 50,000 इज 50,000. बट ऑल सेड एंड डन, you can apply this formula. You will not use this and get to your answer. You will get the same answer. The working you know very well. So let me not waste your time. I wanted to show you this solution. Why did they happen? माने मेरे क्लासरूम में अगर मैं सॉल्व करता हूँ, there may be a section of students who may argue with me. सर जी 5 बार भर रहा है गोविंदा का मम्मी गोविंदा, और गोविंदा भी एक रिलीजियस बच्चा होकर 5 बार डिपॉजिट कर रहा है, और ये पांडु लोग मेरे को N4 दे रहे हैं सर PNI में. There is some printing error. I had to explain them. No printing errors, please. So they got it. Question was, does my viewer know all these things? If you know it, wow. I wasted a bit of more of your time. Now, coming back. Sum number 61. Fine. Let's start. Compound interest on this amount for 9 months. 16%. Compounded quarterly. Compounded quarterly means the rate has to be adjusted. This is per year ka rate. We have to come to per quarter ka rate. So divide by 4. 4%, and therefore the I is going to go 0.04. Ready rakh diya. I have to find CI. So P 1 plus I the whole raised to n minus 1. Amount invested was 15,625. If you are reading it correctly, 1.04 raised to how many quarters? It was, money was there in the system for 9 months. Each quarter 3 months. So 333. So 3 times the money must have compounded. Minus 1. So let's get on the business. 1.03, sorry, 1.04. 1.04 into equal to that square cube minus 1 into
15625 is 1951. Do we have that option 1951? Option number C. Now 60 seconds sum. I am very sorry कि I cannot talk at length of perpetuity because perpetuity का theory will absorb too many things and it demands also too many things. If anybody of you have gone through perpetuity का theory as to that asking questions minds आऊ केवी थी. So they must have found that the related stuff is with the GP infinity series. From there we happen to come out with all this formula. So I will not go that deep. थोड़ा basic ground कर सकते, but if the basic ground demands too many in-depth talks, it just takes away the charm of the sum. So assuming के you know growing perpetuity का formula, present value of annuity infinity, it's always that way only. तो आज पैसा भरने का and then life through आपको वो monthly, half yearly, quarterly as what you have decided, they'll keep paying you so that your life goes on and on in harmony. नहीं तो रोज बीवी और तेरा झगड़ा, life short हो गई. So it will be the receipts what you need, the payments what you'll get successively in the months or no years through life and maybe after life because it's up till infinity. Will be R by I. Let me correct it. This is for fixed perpetuity. Now that's called as perpetuity. The amount what you happen to receive in the successive periods. So what is that then? That's the amount what you have to deposit, a big lump sum amount depending on what's your requirement of R. So आप 50 लाख भरो, आपको फिर कमिंग मंथ से हम आपको 50,000 देते जाएंगे. रफ ऐसा एग्जांपल दिया. थ्रू लाइफ आप जियो, आपके बाद भी जो भी नॉमिनी है और यू हैव अपॉइंटेड समबडी will keep paying them. So that's no present value of annuity infinity which we call as perpetuity. But this is fixed perpetuity. You happen to get 50,000 every time. What about inflation? Inflation grows. आपका लाइफ ग्रो रहा है तो इन्फ्लेशन भी ग्रो होता है ना. जो आज 100 रुपए में हुआ वो अगले महीने 105 मांगेगा. So then you have to design growing perpetuity. In growing perpetuity, your formula takes this shape. R, the amount what you want every month or every half year, divide by I minus G. I is the discounting rate and G is the growing rate. So I think we are seeing both in the sum right now. Discount rate was 10% and you want to receive 2500. So 2500 is the receipt amount. Growing at 8%. So 0.1 is your I. 10% divide by 100, 0.1. 8% divide by, this is your discounted, this is your growing rate. That's 0.08. So minus 0.08. So that's going to be 2500 divided by 0.02. You can use your calci. 2500 divided by 0.02. It's 1,25,000. You have to pay that over here. So माने आप 1,25,000 जमा करो. We'll keep paying you 2500 growing at 8% through life year to year, year to year. माने every year end पे you will start getting 2500 first year end पे. Next year 2500 plus 8% on that. उसके next year 25% plus 8% plus 8%. It's growing at 8%. So first year you get 2500, next year you get, माने 100 रुपए पे बोलूँ 5% के हिसाब से, 10% के हिसाब से. So first you'll get 100 rupees, then you'll get 110, then you'll get 121, growing at 10%. So यहाँ से यहाँ 11 रुपया बढ़ेगा. That will take care of inflation also. Because आज जो 100 में हो रहा है वो उस समय 100 में नहीं होगा. You may need 110. So you ask for growing perpetuity. So in growing perpetuity then the formula happens to go this way. Now how I have to discuss that in the lecture over here, it takes away too many things. Then I would have surely shown you how. Now coming back, Mr. Sharad got his retirement benefits amounting to 50. Okay, Sharad retire हुआ, 50 लाख आया, gratuity, bonus, ESOPs.
सो ऐसा करके उसको 50 लाख उस टाइम उस दिन आया. Now he is retiring, so his salary will stop. So he wants to receive a fixed monthly sum for the rest of his life. Oh, monthly rest of his life. 1 month after he starts. So that's, if you see the theory, your perpetuity always starts at the end of first period. He expects to earn an interest of 9%. Money discounting will be done by 9%. Determine how much the perpetuity amount he'll receive every month. The R. So present value of annuity infinity is R upon I. We know how much amount he has deposited. One lump sum big amount, 50 lakh. How much he is going to receive? That's what we have to find. And the rate he is expecting is 9%. Oh, 9% compounded annually. But he wants it monthly. No, check monthly. So 9% I have to divide into 12 parts because the rate has to be adjusted to month now, as like in our previous sums. I will make it 9 by 1200 because 100 भी तो डालना था ना rate में. So 9 by 1200. On flipping, that goes 1200 in the numerator. So finally in the calculation is going to be 50 lakhs into 9, as you can see, and then divide by 1200. So I think I made some mistake. Answer आ गया लेकिन एक zero ज़्यादा आ गया. 50 lakhs. Okay, 50 lakhs into 9 divided by 1200. That's, he is bound to receive now 37,500 every month, but fixed perpetuity. That's called perpetuity, installment size. Every month to month he will get 37,500, not more than that, because he has not taken care of growing perpetuity, which you could have gone by I minus g. फिर वो हिसाब से amount डालने का. But that's not taken care over here in the sum, neither by Mr. Sharad also. He'll keep getting fixed regular income of 37,500 every month. So option number C is your answer. We move ahead now. Johnny wants to have 2 lakhs in his account after 3 years. The rate of interest blah 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 compounded annually. How much should he invest today? So this is not an annuity ka sum. It is simple, you invest today and then at the end of 3 years you expect the amount to become 2 lakhs. Compounding annually. So let me put the compound ka formula. A is equal to P1 plus I the whole raised to n. He wants 2 lakh at the end of 3 years. So no final value, or you can say maturity value or future value, we know it. How much I need to invest, or Johnny needs to invest today? At the rate of 8%, so 1.08, and in 3 years time. So once again, thoda sa calculation, 1.08 into equal to cube. Then I'll go for reciprocal because I need to bring it in the denominator. Then I'll take it over there into 2 lakhs. For you, it will be divide equal to into 2 lakhs. And that says the value what Johnny has to deposit today is 1,58,766 point something 44, and that seems to be my option number B. So option B is the answer. Moving to next sum, I think that ends the era. So long stretch of sums on time value of money, I call it एक era आ गया. Now 65th sum, it talks about sets, Venn diagram. 74% of Indians like grapes. So let me call grapes as A, means people liking grapes. We call that set as A. And B को banana को B's बोल देते हैं. So as per the data, if it is percentage, then I normally teach my batch को कि you take the set as 100 population. Sample size is 100. So as per that, the NA goes 74. The NB happens to go 68. Now, what percent will like both? If everybody likes either of the two. The last 4 words, if everybody likes either of the two.
Means normally the photo of a Venn diagram of two sets happens to go in this way. Now this is my sample set and that's my set A, set B. If my population is 100, then as per the given last four words, everybody likes either of the two. So all 100 are over here only. They are in. So I say N of A union B. That means the area what I have shaded right now. It's full of 100 people. There is nobody outside. So now simple formula, N of A union B, it's equal to what? N of A plus N of B minus N of A intersection B, or I would prefer to call N of A and B. These are the people who enjoy both the fruits, grapes and bananas, what we are asked to find in the sum. So 100 is equal to now 74 plus 68 minus N of A and B. So 100 is equal to then no 74 plus 68, 142 minus N of A intersection B. So N of A intersection B finally happens to go what? 142 minus 100, which is 42. So I can see my 42%, because we have taken the population as 100. So 42 is the answer. 42% of the Indians happen to enjoy both grapes and bananas. Once again I repeat, entire sum fine, easy to predict who is what. But I think you should have come across this kind of similar sums in your no question bank while you are doing your no chapter. We have sums of similar type in the module also, where they clearly state that assuming that all are inside, nobody is outside. So over here also everybody likes either of the fruit, means all the 100 people what we had taken the sample space goes in the A union B sector. Now that was sets. Immediately they are jumping to now permutation. Check it out. The word is software. We have to use all the letters of the word software. Vowels need to come together. So standard sum. Software, it's a 8-letter word. So I'll say it's a 8-letter word. I can see OAE. OAE as 3 vowels. So remaining 5 will be consonants. I want vowels to always stay together. So let me consider that as one set. So one set of vowels and 5 consonants, they will arrange, I'm so sorry, they'll arrange amongst themselves in 6 factorial. One set of vowels, which you are taking as only one, and the 5 consonants, they will arrange in 6 factorials. Having done that, the vowels which were no taken together, they can be asked to arrange amongst themselves in 3 factorial ways. Finally, the answer is 720 into 6. I think permutation के time at least up till 6 factorial everybody remembers the value. So 720 into 3 factorial is 6, that's 4320. So option number D is your answer. Standard sum tha, not to talk much about that. Oh, derivatives. They're asking me y square plus dy by dx is what? That means I will have to search for dy by dx. The whole plan is simple. I'll get my dy by dx, then I'll start with my left hand side. But for dy by dx, I would always prefer the y to be a function of x. Sir, हमें तो xy equal to 1 दिया है. So how did you just go for y? First of all, that's very easy. I'm pushing my x on the other side. But why there was a need to do that? I again repeat, when it is dy by dx, I prefer my y to be a function of x. So let's get it. The dy by dx, many to remember 1 upon x ka derivative, it's minus 1 upon x square. A few then happen to write this as x raised to minus 1 and then they play nx raised to n minus 1, which happens to be the same thing. Now I have my y and I have my dy by dx ready. So why not start the left hand side y square plus dy by dx. Let's fit in the values. Y square as per that will be 1 upon x square. And dy by dx is minus 1 upon x square. The answer turns up 0, the option number B. I think that was pretty simple. Few make mistakes in what way? Mistakes to even they happen to get the answer. They go for
xy equal to 1, they start differentiating, which is actually the normal course student happens to do that way only. But I only thought the other way around. Look at the left hand side. It's asking me two things, y and dy by dx. If you see that, I need to feed in y and dy by dx. Then better that we keep y as 1 upon x. So y square may be quick, I'll be fixing the value, and y is a function of x, so dy by dx also will be very simple for me then. Now, पहले ही बोल देता हूँ. It's a sum of a complete different kind with basic sense. But looking at the length of the sum, the number of words used in constructing the sum, anybody एक अच्छा खासा student भी हिल जाएगा. Second reason, never seen before a sum. So मैं तो फट से बोलेगा, where is your page by the side? Just quickly, or maybe you can click for ना नाव का जनरेशन वही माने वेरी क्विक. क्या लिखते बैठने का, फोटो लेगा बाद में फाइल में एंट्री करेगा. मैं फाइल में तो फोटो एंट्री नहीं होगी ना. You can't keep but touching your mobile on that. So there you'll have to write it. But that should happen immediately after the lecture of this. No set is over. Your 100 sums are over. In the next World Cup, there were 12 teams. There will be 12 teams. Okay. Equally divided into two groups. Equally. So group 1, 6 teams. Group 2, 6 teams. Fine. Team of each group will play a match against other team of the same group. Mane, if I talk about group 1, each team will play a match with the other team. So how many matches they will be playing? You have got 6 teams. 2 teams play a match. So start selecting 2 teams. That happens in 62 ways. I hope. Let us say if I set an example 1, 2, 3, 4. A group has got 1, 2, 3, 4 teams. Every team had to play with the other team in this group. So 1 will play with 2, 1 will play with 3, 1 will play with 4. Same 2, 3, 2, 4, same 3, 4, 6. Even the 4C2 would have got the answer 6 only. 4, 3 upon 2, 1. The answer would have been 6. So technically I was correct. We need 2 teams to play a match. You have a set of 6 teams. Start selecting 2 teams to play a match. As many selections, that many matches they are going to play. So now let me just erase that part. Coming back. So let's start figuring out the matches they are going to play. 6 teams amongst themselves, they are going to play 62, 15 matches. Similarly, group 2 may every team is going to play with the other team in that group. So 62, I think that configuration of a World Cup everybody understands. 15 matches. Now we'll have to read again. From each group, 3 top teams will qualify. So let us say qualifying round. From group 1, we'll have 3 teams over here. And from group 2 also 3 teams. So again 6 teams over here. Qualifying round. Now in this round, each team will be playing against the other team. So once again the same. Every team in this will play with the other team. So how many matches are going to be played? So start selecting 2 teams for conducting a match, which will happen in 62 ways. So again 15 matches will be played over here. 4 top teams of this round will qualify for the semi-final. So semis, let me call semis. Semi-final mein top 4 teams will come in. 4 teams. Now in that, they'll play against each other. So if you read from here to here, 4 top teams will qualify for semi-round and they'll play against each other. So every team will play with the other team. So again you have to go for 4C2 matches. I once again recall, for a match we need 2 teams. So what we are thinking for? Let's start selecting 2 teams out of 4. 4C2 selections, every selection of 2 teams will be a match. So that will be 6 matches. 4C2 calculation. I think easy. 4, 3, 2, 1 and you can see 6 matches. Now coming to the final round. Top 2 teams will go for the finals. And they were going to play the best of 3. They were going to play the best of 3 का गेम. होता है ना बहुत सारे वर्ल्ड कप फाइनल्स में ऐसा ही होता है. वर्ल्ड कप नहीं तो एटलीस्ट the other trophy matches they always have that best of 3 in the final. World Cup has only one. But this sum says World Cup also will be conducting
in the finals, the best of 3 amongst the top 2 teams. So in all, I can see 45 plus 6, 51, 54 matches. Hold, hold, hold. Before you strike your option A, thoda sa gadbad. The minimum number of matches which need to be held. 54 was accounted for. So all the arrangements were done for 54 matches. But ask yourself, in the final round, the last 2 teams playing, they started playing. A particular team happens to win the first 2 games. Then there is no need for the third game. So minimum number of games played that can be played over there will be 53. So maybe it can get over in 53 matches if one of the particular team in the last 3 games happens to win the first 2 games. So it will then be only 53 matches. Answer is 53. When I was discussing in the class this particular sum, I said that this was bit rude from the question setter's point of view. A student picking up this sum, reaching to 54 matches. So he must have done his homework good. No such close looking question was ever there in the books. Easily manageable, but in the clock time thinking all these things. Now he marked 54 and even he is penalized with that negative marking. Along with the students who never thought of even reading the question. Even they were, in fact, he was penalized with minus 0.25 and the rest were not even penalized for that, those who didn't attempt the sum. We can't say it's a smart move. Bravery sometimes happens to come at a cost. But that doesn't mean that we are going to stop ourselves. We are true warriors. Let's fight out. मैं खुद को ये बोला और मैं बोला चलो आगे. Even then the class students also then happened to rise to the occasion. चल wrong तो wrong. Attempt तो किया 54 तक तो पहुंचा. ढोकला तो नहीं लगा ना मैं. At least I was so good than the rest. Now, before I solve this sum, what more you know about GP? Apart from T5 is AR raised to 4, 1 hour less. T7 is AR raised to 6. And SN ka formula, that's all. Something more what you know is the geometric mean. For example, if ABC are in GP, then we know that B square is equal to AC. So this is a famous line which happens to be coming in many sums of geometric progression. So the B is called as the geometric mean of A and C because he stands in the center. And the relation is B square equal to AC. So if I just put an example over here, 2, 4, 8, they are in GP. So ABC. Is my B square equal to AC? Very well, of course. B square 16, AC also 16. I want to add something more. And I hope you all also know this thing. We normally happen to say the B is the geometric mean of A and C. Of course, that's correct, but that's not only that much. And now I put one term here and one term over here, maintaining the GP sequence into 2 into 2. Now I shift my A and C to this 2. Even that time my 4 stands mean for 1 and 16. See, B square equal to AC. B square coming 16, even AC coming 16. So 4 is not only the mean of 2 and 8, it is also the mean of 1 and 16. I would conclude in this way. Any term in the geometric sequence except the first and the last term, they all are geometric means. But they are geometric mean of not only the preceding and the succeeding term, it's a geometric mean of 2 terms on either side standing at same distance. The 2 and 8 was standing at same distance from 4 and 1 and 16 also was standing at same distance from 4. So even then 4 is the mean of not only 2 and 8 but also the mean geometric mean of 1 and 16 also. Same way if I have gone for here and here, the 4 would have again gone as a mean, geometric mean of these 2 terms. I hope I made it clear. I want to make this sum very simple. If a student knows this theory,
theory in the sense that he knows that ABC in GP and B square is AC, B is the geometric mean of A and C. But A and C should not be immediate left and right. It can be any term to the left and any term to the right ka mean as far as the two terms are at equidistant from the geometric mean. I made it clear. Now T4, T7, T10, they are terms of GP, which they are giving me as PQR. Which of the relationship is correct? I would not do anything over here after explaining all this. The seventh term happens to be the perfect center of 4 and 10. Sir, kaise pata challa? 3 terms here, 3 terms there. So then the Q square is equal to PR. The B square is equal to AC. That has to be the true relation. I can see option number C. There is one more way of solving. The P is equal to AR raised to 3 and the Q is equal to AR raised to 6 and the R is equal to being the 10th term AR raised to 9, and then you apply indices to come to that result. Oh gosh. That means you didn't even knew that much part of GP which says that any term in between of a geometric sequence is a mean of two terms, but not the immediate आगे का and immediate पीछे का. Any two terms whose center was he himself. He can then be the geometric mean of those two terms. Like 4, just the last shot. 4 is not only the mean of 2 and 8, but also the mean of 1 and 16. Also the mean of this and this term. Over and out. Let's move to next. Relation. Relation आता है तो मुँह थोड़ा सा ऐसा ये और वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ऑप्शन भी वही सब दिख रहा है. इस बार रिलेशन दिया भी ऐसा अजीब है ना कि you have to think who all are there in R. So X is related to Y. That's what I read. In such a way that X minus Y should be divisible by 5. So I would just try, I would not draw the relation because I don't know the set. X and Y are coming from natural numbers, that's an infinite set. So whatever ordered pairs the R will have, X comma Y let us say, only those X comma Y will be eligible to come in R which is going to satisfy that condition. For example 1 6, 1 comma 6, okay, he can come in because 1 minus 6 minus 5 is divisible by 5. 6 comma 11, yeah, he can come in. He can be the next ordered pair over here. 2 comma 7, he can be the next ordered pair in this. So I hope you got the example as to R will contain what all things. Only those ordered pairs X comma Y where X minus Y satisfies the condition divisible by 5 है क्या. For that matter even 1 comma 1. Sir 1 comma 1 कैसे इसमें आएगा. 1 minus 1 0. 0 is divisible by 5. 0 you can always divide by 5. Yes, the answer is 0. So 1 comma 1, 2 comma 2 even they are all welcomed in this R because they are satisfying the condition of R. Now such a relation is of what type? So rather looking at options, let's figure out ना reflexive है क्या, symmetric है क्या, transitive है क्या. अगर तीनों हो गया तो option A equivalence होगा. Let's check. Now will the R contain A comma A? Yes. For the simple reason because A minus A 0 is divisible by 5. So that's a pair which will be always there in R. So I can see reflexive થઈ ગયું. I mean to say reflexive है. Now symmetric. Let us say if A comma B is there in R. Sir ये क्या बना है? Belongs to R. So normally I happen to say it's there in R. A comma B. If A comma B is in R, that means the A minus B was divisible by 5. Only then is eligible to go into R. 1 comma 5 थोड़ी R में रह सकता है. 1 comma 6 ही होना चाहिए. Because 1 comma 6 means 1 minus 6 minus 5, yes, it's divisible by 5. So if A comma B is there in R, that means A minus B was divisible by 5.
So that means then b minus a also will be divisible by 5. सर वो कौन से ग्राउंड पे बोला, क्या बात करता है तू, 1 - 6 अगर डिविजिबल बाय 5 है तो 6 - 1 also divisible by 5 because even that's a gap of 5. In fact first was -5, this is 5, divide by 5, answer is 1. I hope I am putting an example for you to understand very well. So I, with 100% surety, I can say that if a comma b was divisible by 5, then even b comma a had to be there in the relation. अगर 1, 6 है तो फिर 6, 1 भी होगा ही, because even 6, 1 satisfies the condition 6 - 1 divisible by s. So if AB is there, BA also has to be there in R. Now that satisfies my symmetricity of relation. If AB is there and BA is also there in the relation, then the relation is symmetric, which is the case over here. 6, 11 अगर है 6, 11 is a pair in this R because 6 - 11 - 5 is divisible by 5. So 11, 6 also will be there because even that's 5 divisible by 5. Now come to transitive. Now I've been talking of 1, 6, 6, 11. So let's assume कि हम लोग natural number में फिलहाल 1, 6, 11 ही रखते हैं, a finite set. Now ask yourself, what is transitive? Transitive simple words में ऐसे बोलते हैं, if AB and BC are there in R, then AC also has to be in R. Let me write it. A comma B, B comma C, if they belong to R or if they are in R, then AC also needs to be in R for the relation to become transitive. Ask yourself now, 1, 6 and 6, 11, are they in R? Yes. Gap of 5, gap of 5. So it will be in R. So क्या 1, 11 will be in R? Yes. 1, 11 also will be in R because gap of 5, gap of 5. Now when you go for 1 to 11, the gap becomes 10. Divisible by 5. Sir, gap, difference, x minus y. So I am very sure if A comma B is in R and B comma C is also in R, then 100% A comma C will be in R. Because A minus B will be divisible by 5 and B minus C also will be divisible by 5. Then A minus C का gap will be a multiple of 5. See, AC बात करते तो confusion होता है. 1, 6 was there, 6, 11 was there in R. तो क्या 1, 11 होगा? Of course, by default होना ही पड़ेगा. Because gap of 5, gap of 5. Now it's a gap of 10. Will be divisible by 5. So, I can see transitive भी तय गयू, reflexive भी है, transitive भी है, symmetric भी है. The answer is equivalence. Check it out. Now, such kind of sums really add more power to your understanding. See, it's a sum not coming from your module. So you can, but reflexive, symmetric, I can suggest you, okay, whenever you see a sum, I would now make it, okay, by now many must have understood, okay, when he deals with MTPs and papers, we do happen to see few sums not out of the curriculum, but to be seen for the first time. So why not keep a page? And then after the thing is over, we just put the topic ka sum in the topic ka material. So that when I am going back to revise the topic, I'll be surely looking into those sums. वो बोलते हैं जाने से पहले तलवार को धार लगा के जाते. तलवार तो घर पे रोज ही था ना, रोज थोड़ी धार लगा रहा था. Now, you are looking at the easy sum. We have to go for A minus B cross B intersection C. So let's make the set. A minus B का मतलब क्या है? From the set of A, remove B वाला elements. I hope you understand if I do it in this way. That is my A minus B. From A, you remove B वाला elements. So when I make a set over here, from A, B, C, remove B ka elements. B has got B, C. Okay, remove that. So my set is only containing one element A. To be crossed with B intersection. Now that is simple. B intersection C.
So who all are common between the two sets B and C? So I can see, D and C. Okay. The C is there in both, the D is also there in both. So C and D. Now this set to be crossed with that set. So A will be mapped to C and A will be mapped to D. It's a mapping again when we take a cross product between two sets. So the set finally will be A comma C, will be containing pairs A comma C, A comma D. Okay, I can see that A comma C, A comma D. Option B is your answer. Check it please. Wonderful simple sum, anybody would have done it easily. Inverse. It happens to be the last part of function, so I just hope everybody happens to reach to that part. F inverse x means inverse function. Can I brief you? So this is x and this is y. When I say the function given to me is 4x plus 3, so I do understand everybody knows that the y is 4x plus 3. So function takes us to y. The function 4x plus 3, very common simple sense. Now you put your x and you'll reach to y. So who will take you from x to y? 4x plus 3. I want to find inverse function. That's your inverse. Going back to x. So for what are we waiting for? The x is equal to y minus 3 upon. So धड़ाक से लिख दिया. नहीं. F takes you from x to y function. आप x डाल लो and you'll reach to y. As in के मैं 1 डाला, I'll reach to 7. I want to go back home. मुझे x पे वापस जाना है. सर तो वही यूज कर लेते. हाँ तो डालो 7, you'll not reach. You'll reach to somebody else. So who will take us back to x? We call it as f inverse. I want to go back to x, so x is equal to y minus 3 upon 4. So I have found my inverse function, but there is a pratha. There is a pratha. Okay, when you are going back, the y will be x and the x will be y. So when you are going back, the y will then be called as x. Functions make simple rule. Start point is x and the destination is your y. So inverse में the y was the start point. So he will now be called as x pratha के हिसाब से. So that's my inverse function. You have an element of doubt? Let me write over here. Will I be able to reach home? नहीं मैं मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ. Will 7 be able to reach to 1 by going over here? Check it out. Yes. 7 minus 3, 4, 4 by 4 and that's 1. You are back no over here. So inverse is taking you back to x. F takes you to y, inverse takes you back to x. अगर इतना बात पता है ना तो फट से स्टूडेंट ज़्यादा सोचता नहीं है. Let's come to x. तो सीधा वो x is equal to y minus 3 upon 4 कर लेता है. प्रथा के हिसाब से रिटर्न में y is now acting as x. He is the start. So he gets his inverse function very quickly. I hope you all must have enjoyed this set of 40 sums. Do not go anywhere. और 60 sum बाकी है LR and stats. My colleague is waiting for you all. This time I don't know, he is quite silent. No, एक बार भी knock भी नहीं की है. So he is just hoping I am finishing off in time. Bye everybody. See you in some other paper or some MTP and I hope this is not your last one. Just ask for dil mange more. This is the time when you have to check in all the possible MTPs available. So we are trying our best to put in all maximum, all तो नहीं जा सकते, but maximum which gives you a boost of confidence. As if के one particular juncture पे you will say यार कल सवेरे एग्जाम होता तो कितना मजा आ जाता यार, फाड़ के आ जाता मैं. That's all what we expect from you all and we wish for you all. See you in the next paper, maybe paper or MTP, whatever you are going to pick it up. Till then everybody, I would not say goodbye. Hold on, my colleague is joining you. Hello friends, this is your Professor Vaibhav Karia from JK Shah classes. So as सर ने आपके साथ मैथ्स का पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम करेंगे डिस्कस अभी स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग ऑफ जून 2023 एग्जामिनेशंस, राइट. सो टॉकिंग अबाउट द पेपर आपका ये जो जून 2023 का था वो इजी था कंपैरेटिवली. एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक भी था
सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं जहां से जो क्वेश्चन मिले। लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स साथ साथ में चालू रहेगा जैसे हम लोग को क्वेश्चन मिलते हैं। आई गेस द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का था। यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट चालू रहे तो पहले लॉजिकल रीजनिंग में मोड रहते हैं, फिर बीच में स्टैटिस्टिक्स आएगा तो वापस उसके मोड में चले जाएगा, राइट। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20। द नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इज व्हाट? 7, 26, 63, 124, 215, क्वेश्चन मार्क 511 इज क्या? सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही भी बता चुका है, अभी मैं बता रहा हूँ, क्या नंबर अचानक इंक्रीज हो रहा है? हाँ, 7 से लेके जा रहा है 511 तक। तो हम लोग ये बात समझते हैं कि अगर नंबर अचानक बड़ा हो रहा है, मैं वापस मेरी चेकलिस्ट रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये चैप्टर पूरा ऑब्जर्वेशन पे ही खेल है इसका, ठीक है। और ये सिंपल सा बच्चे जैसा क्वेश्चन था, मेरे बच्चे इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आए थे। आई होप आपको भी ये ट्रिक अब समझ में आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। तो अगर नंबर अचानक बढ़ रहा है ना बेटा, तो प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन का गेम रहता है, एक पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। पैटर्न हमेशा देखने और सुनने में अच्छा लगेगा। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे वो लोग ने दिया था ना बेटा, क्यूब -1 का पैटर्न दिया था। जैसे कि 7, आई कैन राइट 7 एज 2 क्यूब -1, राइट। देन 26 विल बी नथिंग बट 3 क्यूब -1, 64 -1 यानी कि 4 क्यूब -1, 63, 5 क्यूब -1, 124, 6 क्यूब -1, क्वेश्चन मार्क, एंड देन वी हैव 8 क्यूब -1। तो ये देखो यहाँ पे पैटर्न बन रही है, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1। तो आगे हो जाएगा 7 क्यूब -1, that is 343 -1, that is nothing but 342। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे पैटर्न कुछ भी बन सकता है, वो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस भी यूज कर सकता है। ऐसी पैटर्न मैंने देखी है, मतलब एक बार वो -1 करेगा ना तो दूसरी बार +1 करेगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। 2 क्यूब -1, 3 क्यूब +1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब +1, 6 क्यूब -1, 7 क्यूब +1, समझा। तो पैटर्न आपको एकदम अच्छे से देखने, और याद रखना पैटर्न हमेशा देखने और सुनने में अच्छा लगना चाहिए, एकदम सिंक में जाएगा, रिदम में जाएगा और सारा पैटर्न आएगा। ये क्यूब का पैटर्न था, वो लोग स्क्वायर का भी पैटर्न दे सकते हैं और दोनों का मिक्सचर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब नंबर अचानक बढ़ता दिखे ना तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। और एक और बात ध्यान रखना, अगर मेरी मानो ना तो 1 से लेके 10 तक के क्यूब और 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स रट्टा मार लेना, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 21। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, एकदम ही इजी क्वेश्चन था। लेट्स सी, मेंशन इज रिटन एज LNEICNO, तो प्रेजेंट विल बी रिटन एज क्या? सो यहां पे अगर मैं बात करूं तो M से L कहने से वो पीछे की तरफ गया, और कितना पीछे गया? 0 लेटर्स पीछे गया। LM 0 लेटर्स पीछे, राइट, 0 पीछे। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, अब आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है, लेटर्स आगे भी नहीं बढ़ रहे, पीछे भी नहीं बढ़ रहे, इंटरचेंज हो रहे। ध्यान से देखोगे, EN रिवर्स किया, बन गया NE, TI बन गया IT, ON बन गया NO। तो यहां की पैटर्न क्या बनी, उसने जो फर्स्ट लेटर है उसको 0 पीछे लिया, तो P से एक लेटर पहले क्या आता है? JKLMNOP, है ना, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे O, बराबर है। फिर उसने दो लेटर्स को पकड़ा है और रिवर्स किया, तो RE बन जाएगा ER, SE बन जाएगा ES, एंड NT बन जाएगा TN। एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन था। OER है, डी ऑप्शन है, खत्म, गेम ओवर, इजी। तो ये था बच्चे जैसा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, फ्री का 1 मार्क था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, वापस ऑड मैन आउट लिखा है, पर मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं आपको वापस बोलूंगा, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन रॉन्ग टर्म एंड ऑड मैन आउट। सो लेट्स सी, ये रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है कि ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। बोला था ऑड मैन आउट मतलब नंबर अलग होता है, और रॉन्ग टर्म मतलब नंबर गलत होता है, ठीक है। अगर नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है और एक पैटर्न बन रही है तो रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, वरना वो सारे ऑड मैन आउट के क्वेश्चन हैं। तो ये देखते हैं, देख 41 से चालू किया है, 95 पे खत्म हो रहा है, 41, 43, 47, 53, तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, मतलब श्योरली ये रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट का नहीं है। अब खाली पक्का पता करना है कि पैटर्न बन रहा है क्या। तो लेट्स सी, सो 41 से 43 कहना इसे +2 हुआ, 43 से 47 +4 हुआ, 47 से 53 +6 हुआ, 53 से 61 +8 हुआ,
61 से 71 प्लस 10 हुआ। देखो पैटर्न दिख रही है आपको, क्या आपको पैटर्न दिख रही है? +2 +4 +6 +8 +10, देखने और सुनने में अच्छा लग रहा है। तो अब आगे खुद से ही करो, +12 83। हाँ सर देखो 83 है। अब +12 के बाद कितना होना चाहिए? +14। तो 83 प्लस 14 इज नथिंग बट 97, बट आपको दिया कितना है? 95। सो 95 इज योर रॉन्ग टर्म। ये लोग की भाषा में ऑड मैन आउट। यहाँ पे 97 होना चाहिए था पर दिया 95, तो ये एक्चुअली रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। पर आपकी इंस्टीट्यूट देखो, देखो इंस्टीट्यूट देखो, ये रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। देखना अभी अब थोड़े लोग जो मुझे देख रहे हैं मेरे को ऐसा बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूट को बोलता है कि इंस्टीट्यूट गलत है। ऑब्वियसली है, मैं तुझे हिंदी में वापस समझा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ तू गलत है तो तेरा ईगो हट हो जाएगा, ये सर ने मेरे को गलत कैसे बोल दिया यार। पर अगर मैं तुझे ये बोलूं तू अलग है, तू क्या बोलेगा? हाँ यार, हाँ यार बात तो बराबर है सर की, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, है ना। तो मैंने जब तुझे अलग बोला तो तुझे फर्क नहीं गिरा, पर मैंने तुझे गलत बोला तो तू डिफेंसिव हो गया। तो यहां पे भी गलत अलग है और अलग अलग है। रॉन्ग टर्म का मतलब अलग है एंड ऑड मैन आउट का मतलब भी अलग है। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना रॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस में और ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जो कि अपना डायरेक्शन टेस्ट का है। देखते हैं क्या बोलता है। दीपिका स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट। तो चलो दीपिका को यहाँ पे पन प्लस बना के चला लेते हैं। दीपिका को चलना है तो चला लेते हैं। तो चल रही है ईस्ट की तरफ। ओके, कितना चली? 65 मीटर्स। तो यहाँ से दीपिका को मैं, ये अपना नॉर्थ है ऑब्वियसली, ये अपना ईस्ट है, तो यहाँ से वो ईस्ट की तरफ चलती है 65 मीटर्स। शी टर्न्स लेफ्ट। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, अभी भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा उसको ईस्ट से लेफ्ट लेना है, ईस्ट से। तो मैंने पहले भी बोला था क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ईस्ट का लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट के लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन आएगा? नॉर्थ। तो नॉर्थ में कितना चली? वो 25 मीटर चली, तो उसको यहां से अपन 25 मीटर चला लेते। ओके, फिर अब वो नॉर्थ में जा रही है और वो क्या कर रही है? देन शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। और वहां से नॉर्थ से उसने वापस लेफ्ट लिया, तो नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन आएगा? वेस्ट। तो वो यहां से चलेगी कितना? 40 मीटर्स वेस्ट में। तो ये उसने चल लिया 40 मीटर्स वेस्ट। यहाँ उसका स्टार्ट पॉइंट था, ये उसका एंड पॉइंट है। तो वो लोग ने अपने से वही पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते। तुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेटा। सो दिस इज नथिंग बट अ स्लोप, एंड स्लोप आया तो साथ में हाइपोटेनियस थियरम, तुझे पाइथागोरस थियरम यूज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं अपन, यहां से है ना इसको ये रेक्टेंगल शेप में कंप्लीट कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये मेरा शेप है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 25 मीटर रेक्टेंगल बन गया, ये 25, तो ये वाली साइड भी 25 रहेगी, तो एक साइड तो मेरे को मिल गई। अब बात करते हैं अपन सेकंड साइड की। ये पूरा 65 था, तो ये भी पूरा 65 का ही होगा, उसमें से उसने 40 कवर किया है, तो ये कितने का रहेगा बेटा? 25 मीटर्स का, बराबर है। तो ये भी आपका हो गया 25 मीटर, राइट। नाउ आपको क्या करना है? आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये वाला साइड कितने का रहेगा? आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, तो यानी कि 625 प्लस 625 का स्क्वायर रूट। सो 1250 का स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो ये आता है आपका 35.35। तो या तो ए ऑप्शन है या तो बी ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है अपने से? एंड इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में अभी खड़ी है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से मैं देखूंगा तो वो खड़ी है नॉर्थ ईस्ट में। सो 35.35 मीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन ए, राइट। इजी, ठीक है। चलो आ जाओ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखते हैं। 7 फ्रेंड्स A to G are watching a movie sitting in a row. E is sitting at one of the extremes, C is sitting second to E. अब देखो यहाँ पे
चीज पढ़ने जैसी है, उन लोगों ने किधर भी लेफ्ट राइट मेंशन नहीं किया है, तो सी सेकंड लेफ्ट में भी हो सकता है, सेकंड राइट में भी हो सकता है, ये आपके लिए एक और अरेंजमेंट बन जाएगा। बी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, जी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स एंड ए इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। ओके, तो जी और ए एक्सट्रीम्स पे नहीं बैठा है, ये आपको बोला है, मतलब एंड्स पे नहीं बैठे। डी सिटिंग इमीडिएट टू एफ, वापस लेफ्ट राइट नहीं बोला है, तो डी के ये बाजू भी एफ हो सकता है, डी के ये बाजू भी एफ हो सकता है। हु इज सिटिंग इन द मिडल, बीच में कौन बैठा है? तो सबसे पहले कुछ नहीं बोला है तो लोग नॉर्थ फेसिंग रहेंगे और हम लोग 7 प्लेसेस बना देते हैं, 4 5 6 7, और नॉर्थ फेसिंग है तो ये बाजू रहेगा बेटा लेफ्ट हैंड और वो बाजू रहेगा राइट हैंड, और बंदों का लेफ्ट राइट भी आप उसी हिसाब से देखोगे, राइट। अब आपको सबसे पहले बोला था ई सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो ई यहां पे भी बैठा हो सकता है, ई यहां पे भी बैठा हो सकता है, ठीक है। मैं साथ साथ में पॉसिबिलिटीज भी खत्म कर रहा हूं। मैं आगे क्या बोलता है वो, सी इज सिटिंग सेकेंड टू ई, ठीक है। तो सी किधर है? ई से दूसरी प्लेस पे है, तो सपोज अगर ई यहां पे है, फर्स्ट अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो सी यहां पे होगा दूसरी प्लेस पे, और अगर ई राइट एंड पे है तो सी ये वाली प्लेस पे होगा। साथ साथ में खत्म करने का, देखना मैं दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ने की मेहनत भी नहीं करूंगा। आ जाओ आगे। बी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, बी किधर है? ए सी के बीच में, तो अब ऑब्वियसली बी ए सी के बीच में है तो बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, बी उधर नहीं बैठ सकता है, बराबर है, क्योंकि फिर वो ई सी के बीच में हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? एंड बी इज बिटवीन ए एंड सी, तो वापस बी सी के राइट साइड में यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा और ए आ जाएगा यहाँ पे। आई होप आप लोग को ये चीज समझी, सबको समझा ये चीज, बराबर है। ओके, अब आगे क्या बोलता है देखते हैं। जी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, तो मतलब जी कहने से जी ये इधर नहीं बैठा है, तो अब जी के पास या तो ये एक प्लेस बची या तो एक प्लेस बची, एंड सिमिलरली जी यहाँ पे भी नहीं बैठा, या तो यहाँ पे बचे बैठेगा या तो वो यहाँ पे बैठेगा। आगे क्या बोलता है? ए इज नॉट एट द एक्सट्रीम, देखो वो तो प्रूव हो ही गया, राइट, ए एक्सट्रीम से बैठा नहीं है। डी इज सिटिंग इमीडिएट टू एफ, जिधर भी एफ बैठा है ना, डी उसके इमीडिएटली बाजू में बैठा है, मतलब कहने से वो दो लोग साथ में बैठे, आया ना? तो अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पे, तो मुझे इतना पता चल गया कि डी और एफ साथ में बैठे हैं। तो ये देखो, डी इधर एफ इधर, डी इधर एफ इधर। अब सर क्या यहाँ पे एफ डी भी पॉसिबल है? हाँ जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वो लोग एफ डी भी तो बैठ सकते हैं, और उन लोग ने बोला था जी किधर भी एक्सट्रीम में नहीं बैठा, तो लास्ट बची जगह जी की, तो जी आ गया इधर। तो अब बेटा मेरे को बोलो, आपके पास एक अरेंजमेंट है, 2 अरेंजमेंट है, 3 है कि 4 है? 4 अरेंजमेंट है, 4 पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये जहाँ पे लास्ट में डी एफ रहेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये जहाँ पे ई जी सी बी ए एफ डी रहेगा। मैं लिख ही देता हूँ तो आपको एक बार और अच्छे से समझ जाएगा। तीसरी ये, चौथी ये, ए बी सी जी, और उसने अपने से क्या बोला था कि मिडल में कौन बैठा है, तो मिडल में कोई भी अरेंजमेंट देख लो, आपका बी ही बैठा है, खत्म, दैट्स द। चलो तो नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोलता है क्वेश्चन 25? मिस्टर कार्तिक पुट्स हिज टाइम पीस ऑन द टेबल सच दैट वे 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो बेटा ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्लॉक और डायरेक्शन के मिक्स क्वेश्चन है। नॉर्मली 12 किधर बचते हैं? नॉर्थ में बचते हैं, राइट। 3 ईस्ट, 6 साउथ, 9 वेस्ट। तो आपको नॉर्मल घड़ी भी पता होनी चाहिए, और फिर वो लोग क्या करते हैं, जो आवर हैंड और मिनट हैंड है ना, उसमें से एक हाथ दे देते हैं कोई भी डायरेक्शन में, तो आपको वापस घड़ी बनाने की, और फिर वो लोग जो टाइम बोलेंगे उस हिसाब से टाइम प्लेस करने का और आंसर देने का। चलो देखते हैं, इजी एकदम। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि घड़ी में 6 ऐसे बजे कि आवर हैंड नॉर्थ पे गया। तो नॉर्मली अगर मैं 6 बजे की बात करूं तो ये आपका आवर हैंड और ये आपका मिनट हैंड, और उन्होंने क्या बोला आवर हैंड नॉर्थ में है, तो ये आपकी घड़ी और आवर हैंड नॉर्थ में है, मतलब 6 बजे की घड़ी याद करो तो 6 इधर नॉर्थ में बज रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो ऑब्वियसली 12 का कांटा यहाँ पे साउथ में रहेगा, मतलब ये आपकी उल्टी घड़ी है, राइट। 3 आपका चला जाएगा यहाँ पे वेस्ट में, और 9 आ जाएगा ईस्ट में। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 9:15।
तो 9:15 बजे मिनट हैंड किधर रहेगा, तो 9:15 की घड़ी याद करते हैं तो 9 इधर है और 3 इधर है ना, एज पर दिस क्लॉक, है ना। तो 9:15 की घड़ी याद करते हैं, आपका आवर हैंड रहेगा 9 पे और मिनट हैंड रहेगा 15 पे, ऐसा। तो 9:15 बजे आपका मिनट हैंड है वेस्ट में एंड आवर हैंड है ईस्ट में, पर अपने से तो खाली उन्होंने मिनट हैंड पूछा था, दैट इज नथिंग बट वेस्ट, ऑप्शन सी। इजी इजी, किसी को कोई डाउट? ओके चलो आ जाओ। 26, श्रीकांत इज फेसिंग ईस्ट एंड देन टर्न्स 120 डिग्री। हे देखो आया, ये क्वेश्चन हम लोग ने सेम मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर में भी डिस्कस किया था, राइट। मैंने आपको सिखाया था क्या करने का, कैलसी पे क्लॉक ऐड करने का, आंटी क्लॉक को माइनस करने का, देखने का क्लॉक भारी है कि आंटी भारी है, आंसर आ गया। तो अभी वो फेस किधर कर रहा है, ईस्ट में, 120 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वापस आंटी भारी है। आंटी कितने से भारी है, 60 डिग्री से आंटी भारी है। तो ईस्ट का ये आपका ईस्ट रहता है, ईस्ट से ये नॉर्थ का 90 डिग्री का सफर रहता है। तो ईस्ट से आपको 60 डिग्री आंटी जाना है, मतलब आपका कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ ईस्ट। इजी, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का, और योर गेम इज डन। ठीक है चलो आ जाओ। थोड़े ये सब क्वेश्चंस में ना टाइम बचाने का, लॉजिकल रीजनिंग आप अच्छे से सॉल्व करते हो ना, आप देख लेना, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लॉजिकल रीजनिंग 25 से 30 मिनट में एक्सप्लेनेशन के साथ में दे सकता हूं, राइट। सो आप सॉल्व उससे भी फास्ट कर सकते हो। मेरे बच्चों ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में 5-5 मिनट में लॉजिकल रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। चलो आप 10 भी ले लो तो भाई 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, 20 मार्क फ्री के। तो यहां पे टाइम बचाओगे ना तो आप मैथ्स में यूज कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में यूज कर सकते हो जब बड़े बड़े क्वेश्चन आए तब, राइट। चलो आ जाओ। 27, दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस एंड ये आपके इंस्टीट्यूट के बुक में भी एग्जिस्ट करता है और ये इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गया ना, और फाइनली यहाँ पे भी आ ही गया, राइट। तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ये प्योर, अगर आप मुझे पूछो ना तो ये ब्लड रिलेशंस बेस्ड ऑन पजल का ये प्योर क्वेश्चन है। ठीक है आ जाओ देखते हैं। इंस्टीट्यूट की जो बुक में ये क्वेश्चन है ना, वहां पे वो लोग ने एक ही, मतलब वो लोग ने क्या पूछा था, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्रैंड डॉटर, और आपके एग्जाम पेपर में वो लोग ने ग्रैंड सन कर दिया। ठीक है, बट बाकी की सारी चीजें सेम रखी, उन लोग ने एक भी चेंज नहीं किया। लेट्स सी द क्वेश्चन। P, Q, R, S, T and U are 6 members of the family in which there are 2 married couples। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यही है कि 2 कपल्स है। आगे, T a teacher married to a doctor। इसको हिंदी में कन्वर्ट करते जा और सॉल्व करते जा। T कौन है, एक टीचर है। ओके सो मुझे ये सर समझ में आ गया कि T टीचर है एंड इज मैरिड टू अ डॉक्टर। तो मैरिज के लिए 2 ऑपोजिट सिंबल्स एंड उसकी शादी कोई तो डॉक्टर से हुए जिसका मुझे अल्फाबेट नहीं पता है। डॉक्टर हु इज अ मदर, हु का मतलब याद रखने का जो, हिंदी में क्या बोलेंगे, जो। डॉक्टर है जो माँ है, तो अगर डॉक्टर माँ है तो टीचर बाप है, पप्पा। तो आपको एक कपल मिल गया। फर्स्ट कपल टी है जो टीचर है, उसकी शादी किसी डॉक्टर से हुई है जिसका अल्फाबेट मुझे पता नहीं। अब आगे क्या लिखा उसने, डॉक्टर हु इज अ मदर, वो माँ है तो फीमेल हो गई। किसकी माँ है, ऑफ आर एंड यू। तो किसकी माँ है, आर की भी माँ है और यू की माँ है। तो आर एंड यू है आपस में सिबलिंग्स, राइट। आ जाओ आगे क्या बोलता है देखते हैं। आगे जैसे क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, तो आपको दूसरा कपल भी मिल गया। क्यू कौन है, लॉयर है और उसकी शादी किससे हुई बेटा, पी से हुई है। अब देख यहां से मुझे मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मिला, मतलब एक टुकड़ा यहां से मुझे मिल गया, वो क्या मिला पजल का, ध्यान से देखते हैं अपन, ध्यान से समझते हैं। देखो मेंबर्स कितने थे, पी क्यू आर एस टी यू, 6 मेंबर्स थे। अब आप ही मुझे बताओ, पी का नाम आया, क्यू का नाम आया, टी का नाम आया, आर का नाम आया, यू का नाम आया, बच कौन गया, एस। तो डॉक्टर कौन होगा, एस। ये पहला मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख क्यू लॉयर है एंड पी के साथ उसकी शादी हुई, तो ये क्यू पी फैमिली में किधर तो बैठेगी ना, आर यू के साथ भी बैठ सकते हैं, टी और एस के साथ भी बैठ सकते हैं, और उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, और आर यू के नीचे भी बैठ सकते हैं। फैमिली में किधर भी रह सकते हैं वो लोग।
तो अब किधर है फैमिली में, उसके लिए ये लाइन दिया है। क्या दिया है, पढ़ ध्यान से। P हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन। P हैज वन सन, थोड़ा ओवर एक्टिंग करो अनन्या पांडे के जैसे। P हैज वन सन, P को नीचे एक बेटा है। अब तेरे बेटे और बेटी नीचे रहेगा ना, सब नीचे वाली जनरेशन ना। P हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन। तो सपोज तू इधर है, तो तेरे नीचे एक बेटा है और एक पोता है। तो तू ही मेरे को बता कि पी का बेटा कौन हो सकता है, कौन दिख रहा है तुझे पी का बेटा, गेस कर, गेस कर सकता है? बिल्कुल सही है। तो वो और कोई नहीं, टीचर ही उसका बेटा है। देखना, वो टीचर उसका बेटा और आर और यू उसमें से कोई एक ग्रैंडसन है। तो आर और यू में से अगर एक ग्रैंड सन है, अगर वो दोनों में से एक ही पोता है, तो कहने से दूसरी पोती होगी। अगर एक ग्रैंड सन तो दूसरा ग्रैंड डॉटर, दूसरी ग्रैंड डॉटर। ये तो तुम्हें सब क्रैक करना है। अब आगे क्या बोलता है देख। अब तुझे ये पता है पी की शादी किससे हुई है, क्यू से, और क्यू कौन है, लॉयर। अब इन दोनों में से लड़का कौन लड़की कौन ना, उसके लिए लाइन दिया है। एक एक लाइन से एक एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है और डायग्राम कंप्लीट हो रहा है। क्या बोलते हैं वो लोग, ध्यान से देखना। ऑफ द टू मैरिड लेडीज देयर इज वन हाउस वाइफ। दो शादीशुदा कपल्स में से एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है। अब देख, अगर वो हाउस वाइफ है तो क्या प्रोफेशन परस्यू कर सकती है? नहीं। देख, टी टीचर प्रोफेशन, एज डॉक्टर प्रोफेशन, और उसमें से तो तेरे को पता भी है लड़की कौन है, क्यू लॉयर प्रोफेशन, पर एक का ही प्रोफेशन नहीं दिया है। सो वी इंप्लाई दैट पी विल बी द हाउस वाइफ, ये फीमेल होगी और ये उसका पति होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। आर और यू भी तो, वो पोता और पोती भी तो कुछ करते रहेंगे, तेरी तरह वेले नहीं रहेंगे। तो वो लोग क्या कर रहे, ध्यान से देख। ऑल्सो देर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर। मेल इंजीनियर, मेल इंजीनियर, मेल इंजीनियर। तो एक पोता था, एक पोती थी, तो पोता मेल होगा कि पोती मेल होगी? सोचता क्या है यार, कितना सिंपल है। ऑब्वियसली ग्रैंडसन होगा, वो मेल इंजीनियर होगा, और पोती होगी वो स्टूडेंट होगी। तो who is the, what is true regarding the grandson? He is an engineer। खत्म, ये समझा कि नहीं समझा? दिस इज द सिंपलेस्ट वे जो मैंने तुझे एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर तुझे एक बार ऐसा रिपीट करने का मन हो रहा है तो वापस थोड़ा सा पीछे जा और वापस देख ले, ठीक है? चलो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वापस ब्लड रिलेशन का है। नीलम हु इज दीपक्स द डॉटर। ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। नीलम कौन है, हु इज दीपक्स द डॉटर। तो सबसे पहले देख, वापस ये कन्वर्सेशन का क्वेश्चन है, तो इसको अगर अच्छे से सॉल्व करना है ना, तो सारी चीजों को धीरे 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 डायग्राम बना, हिंदी में कन्वर्ट कर, डायग्राम बना, हिंदी में कन्वर्ट कर, तो स्लोली एंड स्टडीली अपन जाते हैं। नीलम कौन है, दीपक की डॉटर है। तो सबसे पहले मैं नीलम बनाता हूं, और वो कौन है, दीपक की डॉटर है, तो दीपक उसका पप्पा हो जाएगा। सेस टू दीपिका, वो दीपिका से कुछ तो बोल रही है। कौन, ये नीलम, नीलम बोली, ये है ना, ये कुछ तो बोली। किसको बोली, दीपिका को। ठीक है, मैं पिक्चर को दीपिका, पिक्चर में मैं दीपिका को बता देता हूं। सपोज ये है दीपिका, वो दीपिका को देख के क्या बोली, योर मदर इन लॉ रेखा। योर मदर इन लॉ, हे हिंदी में इसको कन्वर्ट कर, तेरी सासू माँ। किसकी सासू माँ, दीपिका की सासू माँ। तो सबसे पहले दीपिका की सासू माँ है, तो दीपिका का सबसे पहले पति तो होगा ना कोई तो, और उसकी मम्मी का नाम सासू माँ होगा, यानी कि रेखा होगा। वापस वापस वापस, नीलिमा दीपिका को क्या बोलती है, दीपिका तेरी सासू माँ, मतलब तेरे पति की माँ, जो कौन है, रेखा, इज द यंगर डॉटर, ये बेटी है। किसकी बेटी है, ऑफ रामलाल, ये रामलाल की बेटी है। बराबर है, ये रेड कलर से डायग्राम क्लियर हुआ। तेरी सासू माँ रेखा, रेखा इज द यंगर डॉटर, वो रामलाल की बेटी है। अब आगे वो क्या बोलती है, हु इज, रामलाल कौन है, रामलाल अभी बोला था, हु का मतलब जो, रामलाल है जो मेरा ग्रैंड फादर है। मतलब ग्रैंड फादर मतलब या तो दादा हो सकते हैं या तो नाना हो सकते हैं। अब देख, नीलम का पप्पा, नीलम ही बोल रही थी ना, नीलम का पप्पा है
और उसका भी ये पप्पा हो सकता है ना, मतलब नीलम का दादा रामलाल, उसकी बेटी रेखा, मतलब ये हो गई नीलम की बुआ। दीपक और रेखा भाई बहन। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? और वो कौन है? दीपिका की सासू मां। तो हाउ इज नीलम रिलेटेड टू दीपिका? नीलम रिलेटेड टू दीपिका मतलब दीपिका के पॉइंट ऑफ व्यू से नीलम उसकी कौन लगती है? अब देख, नीलम और दीपिका के पति में सगा रिलेशन नहीं है, सगा रिलेशन नहीं है, मतलब वो लोग कजिन्स है, पर फिर भी आखिर में वो इसके दीपिका के पति की बहन तो हुई ना, कजिन है तो क्या हुई? तो योर करेक्ट आंसर इज सिस्टर इन लॉ। अब ये क्वेश्चन मैं वापस एक बार आपसे डिस्कस करने जाऊंगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पसंद आया ये, मैं उसको 2 स्टार दे देता हूं। ध्यान से देखना, नीलम दीपिका को क्या बोली? ए तेरी सासू मां रेखा, रेखा वो बेटी है, किसकी बेटी है? रामलाल की बेटी है। और रामलाल कौन है? मेरा ग्रैंडफादर है, मेरा दादा है। तो मेरा पप्पा दीपक, उसका बाप। तो मतलब रामलाल को 2 बच्चे, दीपक एंड रेखा। समझा कि नहीं समझा? अब दीपिका नीलम को क्या बुलाएगी? तो मेरा पति और उसकी बहन, है ना, भाभी ननंद का रिश्ता हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अब ये इजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं है, देखते आ जाओ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज। तो एक फोटोग्राफ को देख के वुमेन कुछ तो बोली, तो मैं वुमेन को बना देता हूं यहाँ पे। वुमेन क्या बोली? वो फोटोग्राफ को देख के, मेरे हाथ में कोई तो फोटोग्राफ है, मैं उसको फोटोग्राफ को यहाँ पे लिख देते हैं फोटो। क्या बोलता है? दिस मैन्स सन्स सिस्टर। ओके, मुझे जगह चाहिए रहेगा क्योंकि उसका बेटा है और उसकी बहन है, तो मैं फोटोग्राफ को थोड़ा ऊपर बनाता हूं। मैं फोटोग्राफ को देख के वुमेन क्या बोली? दिस मैन्स सन। ये मैन का मतलब देख, फोटो लड़के का है, चलो ठीक है, ये पता चल गया ये मैन है कोई तो। दिस मैन्स सन, इसका बेटा, दिस मैन्स सन्स सिस्टर, और ये बेटे की बहन, ये बेटे की बहन इज माई, मेरी सासू मां। तो ये जो फोटो था ना, उसका बेटा, उसकी बहन, ये कौन है? उसकी बहन कौन है? मेरी सासू मां है। तो मतलब यही सासू मां है, मदर इन लॉ है। किसकी मदर इन लॉ है? वो वुमेन की। तो वुमेन का सबसे पहले कोई पति रहेगा और ये उसकी मां रहेगी। अब वापस एक बार अपन देख लेते हैं, वो वुमेन वो फोटोग्राफ को देख के बोल रही है इसका लड़का की बहन कौन है? वो मेरी सासू मां है, मेरे पति की वो मां। ठीक है, तो अपना डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। देखो हिंदी में सॉल्व कर रहे हो तो कितना इजी हो रहा है, हर एक वर्ड को कन्वर्ट करो और सॉल्व कर। अब क्या पूछा है? हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन। तो आपको 1000 बार बोला है पीछे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले को देखने का, तो मैन के हिसाब से वुमेन का पति कौन होगा? तो मैन के हिसाब से ये वुमेन का पति कौन है, ठीक है, वो अपने को जानना है। तो ये देख, ये मैन इसको क्या बोलेगा? बेटा, और इसको क्या बोलेगी? बेटी, और बेटी का ये कौन है? बेटा। तो मेरी बेटी का बेटा मेरा कौन हुआ? नाता, ग्रैंड सन। हिंदी नाता बोलता है, नाता। बेटे का बेटा पोता, बेटी का बेटा नाता। इंग्लिश में दोनों को बोलते हैं ग्रैंड सन। क्लियर? चल 30th। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये तो एकदम बच्चे जैसा है, आ जाओ। ए कौन है? ब्रदर है, किसका ब्रदर है? बी का। तो ए डिब्बा और बाजू में आ जाएगा बी। आगे क्या बोलता है? बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी कौन है? बेटी है, किसकी बेटी है? सी की। आगे क्या बोलता है? डी इज द फादर ऑफ ए, डी कौन है? पप्पा है, किसका पप्पा है? ए का। मतलब वो बी का भी पप्पा हो गया, और बी कौन थी? बेटी थी सी की, तो ऑब्वियसली आपस में दोनों बन गए कपल्स, हो गई माँ। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, डी के हिसाब से सी उसकी कौन लगती है? वाइफ। देख गलती से हस्बैंड मार्क मत, तेरे लिए ही दिया है कि तू गलती करे, याद रखना हमेशा पीछे वाले के पॉइंट ऑफ से आगे वाले को देखना है, ठीक है।
चल आ जाओ। हाँ हाँ खत्म। देख हम लोग ने 20th से चालू किया, 30th पे आके रुक गए, मतलब आपके 10 क्वेश्चन हो गए लॉजिकल रीजनिंग के। अब स्टैटिस्टिक्स थोड़ा चालू, सांस ले लो, अब स्टैटिस्टिक्स में डूब जाते हैं। कौन सा कंसेप्ट है और फिर हम लोग को क्या करना है आप लोग को ऑलरेडी सिखाया भी है, आ जाओ देखते हैं। If x and y are related as 4x plus 3y plus 11 equals to 0 and mean deviation of y is 7.2, then what is the mean deviation of x? ये कुछ नहीं, आपका शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन है। 1000 बार बोला है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ओरिजिन की इज्जत नहीं, स्केल की इज्जत होती है, पर कैसी? पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ओनली, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ओनली। तो सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 4 मीन डिविएशन of x plus 3 mean deviation of y plus 11 equals to 0। तो ये प्लस 11 की तो कोई भी इज्जत नहीं है। मीन डिविएशन ऑफ y दिया है तो 4 मीन डिविएशन ऑफ x प्लस 3 7.2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें बेटा तो 4 मीन डिविएशन ऑफ x, उसको मैं अगर वो बाजू मल्टीप्लाई करके वो बाजू लेके जाता हूँ 7.2 इंटू 3 आता है -21.6 बराबर है। पर वापस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू की इज्जत रहेगी नहीं। अरे हाँ ना, ये स्केल हुआ ना, स्केल हुआ ना, स्केल स्केल स्केल। चलो एक स्टेप में ना आपको मैं पीछे लेके जाता हूँ, वरना आप गड़बड़ करोगे और मुझे वो नहीं चाहिए। चलेगा, एक स्टेप अपन ज़्यादा लिखेंगे चलेगा, पर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। 3 मीन डिविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 0 हो गया। अब 4 मीन डिविएशन ऑफ x इक्वल्स टू -3 मीन डिविएशन ऑफ y बराबर है। अब बोलो यहाँ पे ये स्केल हुआ, स्केल स्केल, तो स्केल की इज्जत है, मल्टीप्लायर का इफेक्ट रहेगा, पर ये नेगेटिव का इम्पैक्ट रहेगा नहीं। मीन डिविएशन ऑफ x इक्वल्स टू 3/4 इंटू, अब ये कौन सी वैल्यू थी 7.2, 4 उधर सा नीचे आ गया बराबर है। चलो आ जाओ अब सॉल्व कर लो, सब एक का एक ही है, आंसर आया 5.4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना ओरिजिन इम्पैक्ट नहीं, इज्जत नहीं, स्केल इज्जत है पर कैसा? पॉजिटिव ओनली। द शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को दिया है प्रोमोटर, एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। What is the difference between the central angle for shares held by the promoter and publics in the pie chart? तो आप लोग को पता है कि पाई चार्ट यानी कि 360 डिग्री। अब हम लोग को क्या करना है? सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। किसका किसका फाइंड आउट करना है? प्रोमोटर्स एंड पब्लिक। तो प्रोमोटर्स 120, पब्लिक 15। और याद रखना सेंट्रल एंगल इज नथिंग बट हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो वो जिस बंदे ने क्वेश्चन बनाया ना, उसकी ये बड़प्पन है कि उसने ये लिख के दी। ठीक है, तो अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? देखो दो वे में सॉल्व कर सकते हैं, या तो सबसे पहले सबका टोटल, हाँ वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो आ जाओ सबका टोटल कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि किसका कितना हिस्सा है। 120 प्लस 25 प्लस 40 दोनों का मिला के डीआई और गवर्नमेंट का प्लस 15, तो ये सब मिला के 200 है, 200। ठीक है, अब एक काम आप कर सकते हो, सबसे पहले प्रोमोटर का फाइंड आउट करो, 120 अपॉन द टोटल कितना है उन लोग का 200 इंटू 360, जो भी आंसर आएगा फाइंड आउट कर लो। फिर 15 अपॉन 200 इंटू 360, जो भी आंसर आएगा फाइंड कर लो, और फिर वो दोनों को माइनस कर दो। या तो फिर डायरेक्टली 120 माइनस 15 अपॉन 200 इंटू 360 करो, आंसर रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो मैं तो दूसरा वे से ही जाऊंगा, आप कोई भी वे से जा सकते हो, मुझे तो दूसरा वे पसंद है। दो बार कैलकुलेशन कौन ही करेगा? 105 डिवाइड बाय 200 इंटू 360, आंसर कम्स टू 189 डिग्री। सर ऊपर वाला भी अब कर ही लेना। चल ठीक है, तेरे लिए कर लेता हूँ। 120 डिवाइड बाय, आंसर सेम ही रहेगा, मैं अंतर्यामी लिख, मैं पहले से इधर आंसर लिख देता हूँ 189 डिग्री। ऑप्शन बी नहीं भरोसा है, देख लिया। 120 डिवाइड बाय 200 इंटू 360 216 डिग्री। 15 डिवाइड बाय 200 इंटू 360 27, ले कर ले माइनस, -216 आ गया 189, बस खुश। तो दोनों वे करेक्ट है, आपको जो भी वे से जाना हो, मैंने आपको दोनों बता दिया। आ जाओ क्वेश्चन 33। A professor has given assignment to students in statistics class.
स्टूडेंट जगन कंप्लीट्स द अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस। तो मुझे ये पता है कि n मेरा 100 है, मीन भी दे दिया है मुझे 50, अनस्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है 5। लेटर ऑन सोनाली पॉइंट्स आउट टू जगन। सोनाली ने जगन को बोला, ए पागल, तूने मिस्टेक किया है, यू हैव मेड अ मिस्टेक इन टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन एज 100 इंस्टेड ऑफ 50। एक ऑब्जर्वेशन था ना, वो 85 था और तूने ले कितना लिया, 100। तो रॉन्ग एक्स कितना है, 100, और करेक्ट एक्स कितना है, 50। What should be the correct mean if the observation is corrected? अब तो ये जो तेरे पास मीन है वो गलत वाला मीन है। हम लोग ने मॉक टेस्ट पेपर में से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, तो एक्स बार तेरा गलत आया क्योंकि तूने रॉन्ग सबमेशन एक्स ले लिया ना अपॉन एन, बराबर है। तो तेरे पास गलत मीन है, तो रॉन्ग सबमेशन एक्स को तू करेक्ट करेगा तो करेक्ट सबमेशन एक्स मिलेगा, और करेक्ट सबमेशन एक्स से करेक्ट मीन मिलेगा। तो अब तेरे को पता है मुझे रॉन्ग सबमेशन एक्स कैसे मिल जाएगा, n इंटू एक्स बार, n उधर जाएगा, ठीक है। तो n ऑलरेडी तेरे पास कितना था, 100 इंटू एक्स बार कितना है, 50। तो ये कितना हो गया बेटा, 5000, बराबर है। अब इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, तो करेक्ट सबमेशन एक्स, ये तेरा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये तेरा सेकंड स्टेप है, करेक्ट सबमेशन एक्स कैसे मिलेगा, तेरा जो 5000 वाला रॉन्ग सबमेशन एक्स में था उसमें से गलती को कर दे माइनस, तो गलत कितना था, 100, और सही को कर दे ऐड, तो कितना आ गया, 50। तो इसका तो टोटल करेगा, तो 5000 में कैलसी क्या यूज करता है, -100 + 50, तो 4950, खाली 50 ही कम हुआ। अब तीसरा स्टेप से तेरे को करेक्ट मीन मिल जाएगा, करेक्ट एक्स बार इक्वल्स टू करेक्ट सबमेशन एक्स कितना है, 4950, ऑब्जर्वेशन कितने थे, 100, तो आंसर कितना आ गया, 49.5। इजी, 2 मिनट का मैक्स टू मैक्स ये क्वेश्चन था, ठीक है। एग्जाम में तुझे कहां पे ये सब लिखना है, तेरा दिमाग उतना फास्ट चलना चाहिए। सबको समझा क्वेश्चन, गलती को माइनस, करेक्ट को प्लस, और फॉर्मूला क्लियर रखने का और वैल्यूज पुट ऑन करते जाने का। आ जाओ, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। वापस अब ये क्वेश्चन क्लास का है, क्लास का, ठीक है। तो मीन है मीन, तो यहाँ पे एक बार के लिए क्लासेस कंटिन्यूस नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, पर मीडियन और मोड के लिए कंपलसरी तुझे क्लासेस कंटिन्यूस रखने हैं। अब सबसे पहले मीन का फॉर्मूला याद करने का, एक्स बार इक्वल्स टू सबमेशन एफ एक्स अपॉन सबमेशन एफ, बराबर है। तो सबसे पहले अपन क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल लिख लेते हैं 10 से 20 से। एग्जाम में नहीं लिखने का भाई, ये अभी तेरे रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में प्लीज ये लिखने मत बैठना, टाइम वेस्ट मत करना। और फिर आके लोग बोलते सर पेपर छूट गया मेरा। 9 13 डायरेक्ट एफ लिखने का, एक्स फाइंड आउट करने का और एफ एक्स करने का। चलो सबमेशन एफ कर ही लेते हैं। 9 + 13 इज नथिंग बट 22 + 10 इज 10 ही होगा ना, 10 32 32 + 6 38 2 40 एंड 43। छोटे नंबर है तो ओरली करो, फटाफट आंसर आएगा। कैलसी जो लोग कर सकते हैं उन लोग के लिए, ठीक है। चलो बाकी के स्टूडेंट से रिस्क मत लेना। अब x फाइंड आउट करना पड़ेगा। x कैसे मिलेगा आप लोग को, क्लास इंटरवल जो है, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके मिलेगा, ठीक है। कर लो, तो 10 और 20 का मीडियन कितना होगा, 10 + 20 डिवाइड बाय 2, आपका आ जाएगा 15, क्लास मार्क फाइंड आउट करके, ठीक है। चलो 15, तो अब इसमें 10 बढ़ाते जाओ, गधों की तरह कैलकुलेट मत करने का। वो जो क्लास इंटरवल है ना वो 15 में ऐड कर दो। कितने का क्लास इंटरवल है, 10, तो 15 25 35 45 55 65 75। अब एफ एक्स करेंगे, एम प्लस में चीज़ें रखेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। मैं उधर लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट एम प्लस का आंसर लाएंगे अपन। चलो साथ साथ में 15 × 9 एम प्लस, 25 × 13 एम प्लस, 35 × 6 एम प्लस, 45 × 4 एम प्लस, 55 × 6 एम प्लस, 65 × 2 एम प्लस, 75 × 3 एम प्लस। एमआरसी किया 1535 आया मेरा सबमेशन एफ एक्स।
तो एक्स बार इक्वल्स टू 1535 अपॉन 43, तो डिवाइड बाय 43 करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 35.697, दैट इज नथिंग बट 35.7, ऑप्शन इजी। अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। मीडियन पूछा है, मीडियन। मीडियन का ही आपका रॉ डेटा है, रॉ डेटा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन देखते ही असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए। अब थोड़े लोग मुझे कभी कभी पूछते सर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकता है, पर अपन असेंडिंग से ही लिखते, ईजी रहता है, ठीक है, मतलब काम आसान हो जाता है। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा। हाँ चलो आ जाओ, छोटे में छोटा नंबर कौन सा? 18, फिर 18 के बाद 21, फिर 24, 25 भी है भूलना मत, 24, 25, 28, 29, फिर 30, 33, 36, 42। चलो अब एन गिन ले, एन। एन कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ए एन, तो E1। तो एन अगर E1 है तो E1 के लिए क्या हो जाएगा मीडियन? E1 के लिए हो जाएगा आपका n/2 प्लस n/2 + 1 द होल अपॉन 2, ठीक है। तो n/2 यानी कि फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म का एवरेज लेना है। तो चलो फिफ्थ टर्म कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स टर्म है। तो 28 एंड 29 का एवरेज कितना आएगा? रुको सर कैलसी पे करता हूँ, 29.5। ये देख बोला ना, कैलसी पे भी रॉन्ग करता है। 28.5 क्वेश्चन इजी। चलो वापस हार्डली 50 to 60 सेकंड, थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा सा टाइम जाता है, ज़्यादा नहीं। चलो आ जाओ। मीन डिविएशन 36, मीन डिविएशन अबाउट द मीन। वापस ही आपका रॉ डेटा है पर आपको चाहिए मीन डिविएशन अबाउट द मीन। तो याद रखने का सब्मेशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ये मॉड्यूलस का साइन आएगा। आपको ऑब्जर्वेशंस में से ये डिविएशन किसका लेना है? मीन का लेना है। मीन का मतलब x माइनस एक्स बार अपॉन n, ठीक है। ये आपका फॉर्मुलेशन बन गया, फॉर्मूला बन गया आपका मीन डिविएशन फॉर मीन का। सब्मेशन x माइनस एक्स बार द होल अपॉन n, और x माइनस एक्स बार के साथ आएगा मॉड्यूलस, राइट। चलो आ जाओ, तो अपन डेटा को एक बार लिख लेते हैं। x लिख देते हैं सारे, 12, 16, 24, 30, 35, 39, 40। तो 12, 16, 24, 30, 35, 39, 40, 196 मेरा टोटल आया 196। अब n एक बार काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 7। तो x बार मुझे मिल जाएगा सब्मेशन x बाय n, दैट इज नथिंग बट 196/7, एंड दैट इज नथिंग बट 28, 28। तो अब मुझे क्या करना है? x माइनस एक्स बार करना है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नेगेटिव नहीं, मॉड्यूलस में क्या होता है नेगेटिव भी बन जाता है पॉजिटिव। तो चलो 12 माइनस 28, तो 12 माइनस, मैं कैलसी पे नहीं करता है, अपन फटाफट करेंगे ओरली, ठीक है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है। तो 12 माइनस 28 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12। चाहिए तो प्लस करते जाओ साथ में। फिर नेक्स्ट है 24 माइनस 28, ये आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट है आपका 30 माइनस 28, ये आ जाएगा 2। ये आ गया आपका 35 माइनस 28, 7। फिर आ गया आपका 11। फिर आपका आ गया 40 माइनस 28, 12, ठीक है। टोटल किया, टोटल कम्स टू 64। देखो साथ साथ में अपना टोटल भी आ गया, टोटल को डाल देते हैं इधर, 64 डिवाइड बाय 7। तो 64 डिवाइड बाय 7 करेगी तो अपना आंसर आ जाएगा 9.14, ऑप्शन ए। क्लियर? किसी को कोई डाउट? आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे उसने मीन डिविएशन अबाउट मीडियन पूछा रहता तो अपन ऐसे मीडियन फाइंड आउट करते, फिर मीडियन को माइनस करते और फिर फॉर्मूला में लगाते। मोड पूछा रहता तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को अपन माइनस कर देते, ठीक है। आ जाओ थियरी क्वेश्चन। फाइनली व्हाट डज एन ऑजाइव कर्व? ऑजाइव का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है आपका नाम, ठीक है। तो
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम लिया और यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रहा है एंड क्लास बाउंड्री, क्या वो ये रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ क्लास की बाउंड्री दिखाता है और दूसरी तरफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाता है। जी हाँ बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर। आज एकदम बच्चे के साथ आ जाता हूँ। 38 फाइंड द मोड, अब मोड आ गया, किसका आया वापस, कंटिन्यूस क्लास का। तो मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से आप मॉडल क्लास मार्क करोगे, फिर गंदा वाला बड़ा वाला मोड का फॉर्मूला लगाओगे L1 प्लस, ठीक है। आ जाओ तो चलो देखते हैं, सबसे पहले अपन मार्क कर लेते हैं। हाँ ये देख लो, क्या क्लासेस कंटिन्यूस है, जी हाँ बिल्कुल क्लासेस आर कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस नहीं होते तो हम लोग कंटिन्यूस में उसको कन्वर्ट करते। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 20, 53, 42, 42, फिर अपने पास है 41, 43। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 53, तो मतलब ये हो गया F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ये आपका हो गया मॉडल क्लास, बिकॉज उसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब L1 मोड का गन्ना वाला फॉर्मूला L1, तो मॉडल क्लास का क्या है 30 है, 30 प्लस H, हाइट ऑफ द क्लास क्या है 5 इंटू F1 माइनस F0, मतलब 53 माइनस 20 अपॉन 2F1, तो 53 इंटू 2 106 माइनस F0 माइनस F2, तो माइनस 20 माइनस 42। अपन ने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली याद रहना चाहिए आप लोग को फॉर्मूला L1 प्लस H इंटू ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। मस्त रट्टा मारता है ये, है ना, थैंक यू। चलो आप लोग को भी मारना है रे, तो इतना फास्ट फास्ट आंसर आएगा। यही सेम क्वेश्चन आपके दोस्त लोग जो 5 मिनट में करेंगे ना, अपन उसको 2 मिनट में कर रहे, क्यों, पावर ऑफ रट्टा, फॉर्मूलाज वैल्यू सब पता होनी चाहिए आपको। आ जाओ फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 53 माइनस 20 तो इजी है, 33 हो जाएगा। नीचे वाला कर लेते हैं 106 माइनस 62, 42 एंड 20, ठीक है। और ऊपर की न्यूमरेटर की वैल्यू है 53 माइनस 20, यानी कि हो जाएगी 33। तो मैंने उसको डिवाइड कर लिया है, 0.75 आ रहा है इंटू 5 प्लस 30, 33.75, ऑप्शन सी आ रहा है, सी 33.75। थोड़ा कैलसी पे आपका स्पीड रहना चाहिए बेटा, ठीक है। आ जाओ देख, क्वेश्चन तू भी सॉल्व करेगा और तेरे साथ हजारों लोग भी ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बट विद इन टाइम में आना, सही आना, कैलकुलेशन फास्ट होना, वही तेरे को जिताएगा, ठीक है। आ जाओ 39, इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा इज दिस, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा इज दिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन है, और ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन आपका स्टैंडर्ड डिविएशन लगता है। पर उसने क्या किया तेरे साथ, थोड़ी छेड़खानी की, तुझे उसने डायरेक्टली शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल नहीं दिया, कुछ डेटा साथ में दिया। तो देख डेटा क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं, 2, 4, 5, 6, 8, 17, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है 4.47। ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था। दूसरा डेटा है 4, 8, 10, 12, 16, 34, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा। अब थोड़े लोग जो है ना क्या करें, हे मेरे को ये नहीं आता है, मैं काम करता सॉल्व करता हूँ, नहीं, 15 सेकंड का से भी कम का एक क्वेश्चन था, उसने तेरे जज्बातों के साथ खिला, उसने तेरे कंसेप्ट के साथ खिला, इसके लिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ये तेरी एक्स सीरीज, ये तेरी वाई सीरीज, जरा ऑब्जर्व कर एक्स से वाई में क्या चेंजेस हो रहे हैं, देखना 2 का 4, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 8 का 16, 17 का 34, मतलब कहना से उसने वाई की सीरीज कैसे बनाई, एक्स इंटू 2 करके, यानी कि इन शॉर्ट 2x करके। दिस इज नथिंग बट चेंज ऑफ स्केल, और अपन खड़े स्टैंडर्ड डिविएशन में, ओरिजिन की इज्जत नहीं, स्केल की इज्जत रहती है पॉजिटिव वाली। तो इज्जत 2 की मल्टीप्लीकेशन की है, सीधा इसका मल्टीप्लीकेशन बाय 2 कर दे, 4.47 इंटू 2, गेम ओवर, आंसर इधर 8.94, खत्म। सर अगर वो -2 से मल्टीप्लाई करता तो भी 8.94 ही आंसर रहता, क्योंकि स्केल में तेरा जो आएगा वो खाली पॉजिटिव इंपैक्ट ही आएगा। कंसेप्ट शुड बी क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन बनाता है तो कैसे कैसे बदल रहा है, ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन 40,
Between 9 AM and 10 AM the average number of phone calls per minute. इधर से ही दिमाग चलना चाहिए, तो पॉइजन है, पॉइजन a raised to minus m into m raised to x upon x factorial minus m कैसे मिलेगा, n into p करके, मीन n into p. सारी चीजें देख. अब मैं इससे तेरे को और लिंक देता हूं, इससे तेरे को ये भी याद आना चाहिए. अच्छा पॉइजन है, पॉइजन मीन n इक्वल्स टू p, तो मीन इक्वल्स टू वेरिएंस भी तो होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें तुझे याद रहनी चाहिए. अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्या बोलता है, कमिंग इनटू अ स्विच बोर्ड इज 4. तो एक मिनट में 4 कॉल ऑन एन एवरेज आ रहे हैं. तो एक मिनट में 4 कॉल आ रहे हैं, 4 कॉल, तो ये तेरा मीन हो गया 4. फॉर द टाइम बीइंग, चेंज भी हो सकता है. वो लोग तेरे को प्रोबेबिलिटी 2 मिनट के भी पूछ सकते हैं, तो ये तेरा मीन हो जाएगा 8. ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट, देख 1 ही दिया, अगर गलती से इधर उसने 2 दिया था ना, 2 पर्टिकुलर मिनट, तो इधर 4 का 8 हो जाता, तेरा मीन बढ़ जाता, एम बढ़ जाता. देन देयर विल बी आइदर 2 फोन कॉल्स और नो फोन कॉल्स. तो तुझे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए है, आइदर 2 फोन कॉल्स की और प्लस नो फोन कॉल्स की. ठीक है, तो e रेस टू माइनस एम इंटू एम कितना है 4 रेस टू एक्स प्लस अपॉन एक्स फैक्टोरियल. एक्स फैक्टोरियल क्या हो जाएगा तेरा बेटा, एक्स क्या, एक्स है 2 फैक्टोरियल प्लस ई रेस टू माइनस 4 इंटू 4 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. अब यहाँ से मैं ई रेस टू माइनस एम कॉमन ले लेता हूँ, ई रेस टू माइनस एम कॉमन, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 रेस टू 0 इज 1 एंड नीचे भी 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 इज 1. चलो आ जाओ, ई रेस टू माइनस एम की वैल्यू दी है, क्या दी है 0.018 इंटू ये 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, तो इंटू 9 कर ही देता हूँ, आंसर आएगा 0.1648 विच इज नथिंग बट 0.165. ये तेरा क्वेश्चन के लिए तुझे 45 सेकंड से 1 मिनट देने थे, इतने में तेरा आंसर आ जाता. राइट, चलो तो 40th भी डन. अब 41 है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है. क्या बोलता है, कंपनी ए प्रोड्यूसेस 10% ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. ओके, तो अपन साथ साथ में लिख ही देते हैं. मैं डिफेक्टिव को ए लिखता हूँ, नॉन डिफेक्टिव को मैं डैश लिख देगा. ठीक है, तो ये डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं अपन, नॉन डिफेक्टिव के लिए अगर अपन चाहिए तो अपन डैश लिख देंगे. ठीक है, तो ए प्रोड्यूसेस 10% ऑफ द डिफेक्टिव, तो 10% यानी कि कितना हो गया 0.1 है. तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश कितना हो जाएगा 0.9, है ना. ओके, अब बी की मैं बात करूं तो बी की क्या है 20% है, तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश 0.8. सी खाली 5% ही प्रोड्यूस करता है डिफेक्टिव, मतलब 0.05, तो सी डैश क्या हो जाएगा, सी डैश 0.95. इफ चूजिंग अ कंपनी इन एन इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट मतलब इन 3 में से कोई एक ही आ सकता है, मतलब जो भी तेरी बेटा प्रोबेबिलिटीज होगी ना वो डिवाइड बाय 3 होगी, डिवाइड बाय 3. इक्वली लाइकली मतलब क्या, सबको इक्वल चांस मिल रहा है, ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा. बेसिकली इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल, चांसेस ऑफ कमिंग आर इक्वल. जैसे कि हेड्स, तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी आधी, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी आधी. अगर मैं डाइस की बात करूं तो हर एक नंबर जो तेरा आएगा 1/6 1/6 1/6 इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स. ठीक है, आगे क्या पूछता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट. हे मतलब फ्री फ्रॉम डिफेक्ट मतलब नॉन डिफेक्टिव ना, मतलब नॉन डिफेक्टिव. तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 0.9 डिवाइड बाय 3, क्योंकि उसकी आने की चांसेस 1 डिवाइड बाय 3 है ना. बी के आने के चांसेस 0.8 डिवाइड बाय 3, 0.95 डिवाइड बाय 3, 1/3 1/3 1/3, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट दिया है. तो ए डैश के आने के चांसेस भी 1/3, बी डैश के आने के चांसेस भी 1/3, सी डैश के आने के भी चांसेस 1/3. तो कर लो कैलसी पे 0.9 प्लस 0.8
प्लस 0.95 डिवाइड बाई 3 आएगा आपका 0.88 ऑप्शन डन। इजी था, खाली ये चीज पे आपको ध्यान रखना है, ये चीज यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते थे। आ जाओ, हे ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम बच्चे जैसा है, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। क्या बोलता है देखो, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन एज मीन इज इक्वल टू नथिंग बट प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स सबमेशन पी इनटू एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आ जाओ, तो ये x है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, समेशन पी x है, तो यही तो आपका मीन है। तो 1 इंटू पी पी, 0 इंटू 1 माइनस पी 0, 0 प्लस पी पी, तो आंसर क्या आ गया, पी 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 पी। एकदम बच्चे जैसा, एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन। आ जाओ 43, ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं और कंसेप्ट्स को वापस साथ में याद करते हैं। For any two events A and B, it is known that P of A is 2/3. Okay. P of B is 3/8. Okay. P of A intersection B is 1/4. Okay. Okay. Then the events are, सबसे पहला ऑप्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उन लोग के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। और अगर आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अच्छे से पता है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आर इक्वल टू 0। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसा होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पर यहां पे तो वो लोग ने P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/4 गिवन है ना, गिवन है। ये देख ये देख ये देख ये देख, मतलब A और B यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तेरा हो सकता नहीं। मैं वापस एक बार मेरे आपको रिपीट करता हूँ, खुद को रिपीट करता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, कुछ भी कॉमन नहीं। और वो ए और बी का इंटरसेक्शन कैसा रहता है, 0। पर ये लोग ने यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, अब बी ऑप्शन देखो, कोई बोलता है म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव, बात तो उसकी बराबर है। अब आगे बोलता है दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो आ जाओ देखते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या आता है। तो देख, P ऑफ A इंटरसेक्शन B शुड बी इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये इंडिपेंडेंट की खासियत है। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो LHS इक्वल्स टू RHS तो होना चाहिए। तो आ जाओ चेक करते हैं। A इंटरसेक्शन B अपने को 1/4 गिवन है, A की वैल्यू है 2/3, B की वैल्यू है 3/8। करो सॉल्व, 3 3 कट, 1 जा 4 जा, A आ गया, वही तो अपने को दिया था। तो ये जो तेरे इवेंट्स यहाँ पे वो लोग ने जो दिए है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है पर इंडिपेंडेंट है। बात सही है, ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था। लोग गड़बड़ कर सकते थे क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो कंसेप्ट क्लियर होते तो तू बच जा, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 44। इफ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट P of x equals to 2 equals to 1/3, P of x equals to 3, then the standard deviation of the distribution is। पॉइसन का स्टैंडर्ड डिविएशन, तो अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉइसन की बात करूं, इट इज नथिंग बट रूट ऑफ m, वेयर रूट ऑफ m इज नथिंग बट रूट ऑफ n इंटू पी भी तो लिख सकता है, बराबर है। ओके, अब बात करते हैं ये टाइप ऑफ क्वेश्चन की। तो ये आपके मॉड्यूल्स में भी ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है, क्या करने का ना, उसको सॉल्व करने का। x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1/3 P ऑफ x इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला तो तुझे आता ही है, e रेस टू माइनस m, e रेस टू माइनस m, m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल। और यहाँ पे 1/3 e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या होगा, m स्क्वायर और m क्यूब, तो यहाँ पे एक m बच गया, e रेस टू माइनस m, e रेस टू माइनस m हो गया कैंसिल। अब LHS पे खाली 2 फैक्टोरियल बचा, यानी कि 1/2। RHS पे 1/3 इंटू m अपॉन 3 फैक्टोरियल बचा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, अपन ये 3 इंटू 3 फैक्टोरियल को सीधा ऊपर वो बाजू लेके जाते हैं, तो खाली m RHS में बचेगा। देयरफॉर m विल बी इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, बराबर है। अब इधर की बात करते हैं, तो m इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल। तो m कितना आ गया बेटा, 9। पर अपने को तो स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, तो रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल्स टू 3, ऑप्शन बी। इजी, इजी था ना। चलो क्वेश्चन 45,
क्या बोलता है क्वेश्चन 45, देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए। क्या बोलता है देखो, फॉर वेरिएबल्स x एंड y वी कलेक्ट 4 ऑब्जर्वेशंस विथ सबमिशन x equals to 10, summation y equals to 14, summation x square equals to 65, summation y square equals to 5, summation xy equals to 3, then what is the regression line y on x? अब बात करते हैं regression line y on x की, तो regression line y on x क्या बोलती है, y minus y bar equals to, अब ये y on x है तो y से चालू होगा, तो इसका regression कोएफिशिएंट रहेगा by x, x minus x bar। ठीक है, अब आप लोग को x बार y बार नहीं दिया है, तो अब हम लोग पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। x बार इज नथिंग बट सब्मिशन x बाई n, तो सब्मिशन x कितना दिया है 10 और n दिया है 4 ऑब्जर्वेशन, सो 10 डिवाइड बाय 4 इज नथिंग बट 2.5, बराबर है। अब y बार की बात करते हैं, तो सब्मिशन y अपने को दिया है 14 डिवाइड बाय 4, तो 14 डिवाइड बाय 4 इज नथिंग बट 3.5, राइट। सो y माइनस आपका y बार था 3.5, अब बी एक्स वाई अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, x माइनस आपका x बार कितना है बेटा, यहाँ पे x बार है आपका 2.5, करेक्ट, ओके। नाउ बी वाई एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो बी वाई एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो इसके अलग अलग मेथड्स है। सो वन ऑफ द मेथड्स इज विदाउट डेविएशंस, ठीक है, वन ऑफ द मेथड इज विदाउट डेविएशन, कोवेरियंस से है, विद डेविएशन से है, विदाउट डेविएशन से, एंड यूजिंग आर से। 4 मेथड्स है रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। सो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे ये डेटा के हिसाब से मेथड यूज करने वाले हैं वो है विदाउट डेविएशंस। तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, n इंटू सबमिशन एक्स वाई माइनस सबमिशन एक्स सबमिशन वाई। अब पीछे कौन है यहाँ पे, बी वाई एक्स, पीछे कौन है x, तो नीचे भी कौन आ जाएगा, x ही आएगा, n इंटू सबमिशन एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन x द होल स्क्वायर। तो हम लोग के पास डेटा है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, n था 4, सबमिशन एक्स वाई कितना दिया है देख लो, 3 दिया है, माइनस सबमिशन x इंटू सबमिशन y दैट इज 10 इंटू 14, बराबर है, अपॉन n इंटू सबमिशन एक्स स्क्वायर कितना दिया है 65, माइनस सबमिशन x द होल स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। आ जाओ, तो 12 माइनस 140 न्यूमरेटर कम्स टू माइनस 128, डरने का नहीं माइनस देख के, अपॉन 65 इंटू 4 करोगे तो आएगा 260 माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 100, डिनोमिनेटर आ गया 160, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.8, नेगेटिव 0.8, तो y माइनस 3.5 इक्वल्स टू नेगेटिव 0.8। अब मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, नेगेटिव 0.8 x, बराबर है, ओके। साथ में माइनस 2.5 इंटू 8, तो 2.5 इंटू 0.8 आ जाएगा 2, तो ये आपका आ गया नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव 2, बराबर है। अब वो माइनस 3.5 था, ये आपका माइनस 3.5 था, माइनस 3.5 था, ये बात हो जाएगा तो प्लस 3.5 हो जाएगा, तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू नेगेटिव 0.8 x प्लस वो माइनस 3.5 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2 प्लस 3.5 प्लस 5.5, देख लो कौन सा ऑप्शन है, नेगेटिव 0.8 x प्लस 5.5, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन सी। समझा आपको फ्लो, समझा सबको क्वेश्चन का, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, तो सबसे पहले y बार x बार फाइंड आउट किया, फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया, सब्स्टिट्यूट किया, ब्रैकेट ओपन किया, खत्म, गेम ओवर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2.5 से 3 मिनट ले लेता, ठीक है। आ जाओ, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़े क्वेश्चंस में टाइम बचाओगे तो आपको यहाँ पे काम आएगा वो सारे टाइम। आ जाओ 46, इफ अ रैंडम वेरिएबल x इज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो अभी सिखाया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैसे मिलेगा, x इंटू द प्रोबेबिलिटीज। पर यहाँ पे पता नहीं क्वेश्चन ने शायद प्रिंटिंग मिस्टेक किया लगता है, आपकी जो एग्जाम में यहाँ पे वो लोगों ने फ्रीक्वेंसीज दिया था, एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज नहीं होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटीज होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, तो देखते हैं, अपन अपना काम करते हैं, अपना काम बनता, आगे कुछ नहीं बोलूँगा मैं, नॉट अ सलमान फैन। आ जाओ, ठीक है, तो ये दोनों का अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है। आ जाओ, माइनस 1 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 1/3, ठीक है। फिर आगे माइनस 2 इंटू 1/6, तो ये भी आ जाएगा नेगेटिव 1/3, माइनस 2/6 बोलो या 2 और 6 कट हो गए, माइनस 1/3 बचेगा,
ओके आगे 0 इंटू 1/5, 1/5 है ना, 1/5 ना, हाँ मुझे पता ही था आप लोग ये बोलोगे, स्मार्ट हो ना तुम लोग। ये आ जाएगा 1/6, तो ये भी आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। अब मुझे ये सबका सबमेशन करना है, सबमेशन XP, तो -1/3 -1/3 प्लस 0 मत लिखना, इग्नोर कर देना, प्लस 1/6 प्लस 2/3। ये कितना इजी है। तो ये देख +2/3 -1/3 -1/3 कैंसिल ना, है ना, -1 कम्स टू -2 -2 प्लस 2 कैंसिल, तो डायरेक्टली आंसर क्या बचा 1/6, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन सी। दिमाग से कैलकुलेशन करते हो ना तो जल्दी खत्म होता है ना। चलो आ जाओ 47, द रिग्रेशन लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख रिग्रेशन लाइन या तो परपेंडिकुलर हो सकती है या तो आइडेंटिकल हो सकती है, या तो परपेंडिकुलर हो सकती है या तो आइडेंटिकल हो सकती है। जबकि वो परपेंडिकुलर रहती है तब क्या होता है, तब आर रहता है 0। ये परपेंडिकुलर है तो आर 0, आइडेंटिकल बन गई, पैरेलल बन गई, ठीक है, तो आपका आर हो जाएगा +1 या तो -1। क्लियर, चलो आ जाओ। Which of the following index is computed by taking the average? किसका एवरेज ले रहे हो लोग, बेस ईयर एंड करंट ईयर का। तो ये याद रखना, अगर बेस ईयर एंड करंट ईयर का एवरेज, मतलब देखो वेट सबके अलग अलग थे, लास्ट ईयर ने कुछ अलग वेट्स यूज किया, पास्ट ईयर ने कुछ अलग वेट्स यूज किया, ठीक है, तो वैसे ही बेस ईयर एंड करंट ईयर का एवरेज किसने लिया था, मार्शल एजवर्थ ने। फिशर्स ने तो ज्योमेट्रिक मीन लिया था, पास्ट ईयर्स का आपको पता है, लास्ट ईयर का आपको पता है। अगर नहीं समझता तो ऐसे करते, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सही तो मार्शल एजवर्थ। थोड़ा दिमाग लगाने का, अगर भूल जाओ तो हाँ, भूलने का नहीं। 49th, तो बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी और लास्ट ईयर दिया है, तो एकदम इजी है, सबमेशन P1 Q0, सबमेशन P0 Q0, अरे हाँ ना, तो P1 और Q0 तो अपन मार्किंग करते हैं, P1 Q0 का कॉलम बनाते हैं, P0 Q0 का कॉलम बनाते हैं और बात खत्म करते हैं। तो ये आपका P0 Q0, P1 Q1, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, P1 Q0, तो P1 यानी कि ये, Q0 यानी कि ये, तो करो फटाफट, ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, ये हो गया 120, ये हो गया 120, तो 120 120 240 और 200 तो आएगा 440। कैलसी से वापस बोलता हूँ, कैलसी से फटाफट आंसर आता है अगर आप करने जाओ तो 440, तो ठीक है, लास्ट ईयर का फॉर्मूला ये इंटू 100, तो न्यूमरेटर तो मिल गया 440 डिवाइड बाय, अब कर देते हैं डिनोमिनेटर फाइंड आउट, P0 Q0, तो ये 50, ये 60, ये 80 और ये 75, 50 60 80 75 आ गया 265, तो 265 डिवाइड बाय 440 इंटू 100, 166.03, ऑप्शन ए। 037 है, मतलब वो राउंड ऑफ होके 04। इजी था, बच्चे जैसा क्वेश्चन था, फ्री का 1 मार्क था। आ जाओ क्वेश्चन 50, द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइसेस ऑफ अ कंट्री एट अ गिवन डेट इज 250 इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड प्राइस। द प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय कितना टाइम। तो बोलना क्या चाहता है कि एक कंट्री का एक गिवन डेट पे जो इंडेक्स था वो था 250, ये करंट ईयर का था। बोलता है बेस ईयर के कंपैरिजन में, मतलब बेस ईयर कुछ नहीं बोला तो 100, बेस ईयर के कंपैरिजन में ये कितने गुना बढ़ गया, ये कितने गुना बढ़ गया। तो अब सबसे पहले चेंज फाइंड आउट कर लो, चेंज कितने टाइम का आया, करंट ईयर माइनस बेस ईयर करके चेंज आया 150 टाइम्स का ना, हाँ ना, 150 ना, 150 का इंडेक्स आपका बढ़ गया, कितने पे 150 से बढ़ा, तो 100 पे, तो 150 डिवाइड बाय 100, 100 पे 150 बढ़ा ना, तो कितने टाइम से बढ़ा, 150 डिवाइड बाय 100 कर लो, तो आ गया 1.5 टाइम्स। और नहीं भरोसा है कर लो, 100 इंटू 150, 100 इंटू 150,
तो उतने का आपका चेंज हो गया, उतने से इंक्रीज हुआ। आंसर 1.5। क्लियर? क्लियर? कितना इंक्रीज, कितना इंक्रीज? 1.5 टाइम से इंक्रीज हुआ। चलो आ जाओ 51। इफ द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 160, पास्ट इज 140, देन लास्ट पेयर्स क्या? तो अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द आंसर। फिशर्स इक्वल्स टू नथिंग बट लास्ट पेयर्स इनटू पास्ट इज। तो फिशर्स आपका था 160, स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट पेयर्स फाइंड आउट करना है 140, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो हो जाएगा 160 का स्क्वायर इक्वल्स टू लास्ट पेयर इनटू 140। तो लास्ट पेयर विल बी इक्वल्स टू 160 का स्क्वायर डिवाइड बाय 140, 182.85, ऑप्शन बी। हार्डली 7 सेकंड का क्वेश्चन, अगर लिखे भी ना करो तो दिमाग से करो, ठीक है। आज सो यहां से आई गेस आपका वापस मैथ्स चालू हो रहा है। मैथ्स 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 आया नहीं 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 आ गया। एलआर, वापस एलआर। आ जाओ देखते हैं। 5 बॉयज अजय, ब्रिजमोहन, चंद्रू, धीरज एंड एहसान आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो सबसे पहले अपन सर्कल बना लेते हैं और 5 लोग फेसिंग द सेंटर है। नहीं 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 ये नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग ने डायरेक्शन स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया। आ जाओ चलो अपन नहीं बिठा सकते अपने हिसाब से क्योंकि वो लोग ने डायरेक्शन के हिसाब से होता है। क्या बोलता है? अजय इज फेसिंग साउथ वेस्ट। अब देख एक बात है, लोग गड़बड़ क्या करते हैं, सर ये साउथ ये वेस्ट, तो अजय ऐसे साउथ वेस्ट में बैठा है। चल तेरी बात मान के मैंने उसको उधर बिठा दिया साउथ वेस्ट में, उधर फेसिंग करके देखना, अभी भी वो साउथ वेस्ट में दिख रहा है, पर क्या वो फेसिंग द सेंटर है? क्या वो फेसिंग द सेंटर है? नहीं, वो नॉट फेसिंग द सेंटर हुआ। तो मतलब बेटा तूने ये जो किया ना बेटा, गलत किया। वो चाहती है तो गलत करे। क्वेश्चन फेसिंग द सेंटर का है, मतलब यहां पे वो देखना चाहिए, ना कि वो यहां पे। सेंटर 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 में देखना, सेंटर। तो मतलब अजय इधर बैठा रहेगा, इधर। अब देख, क्या अजय साउथ वेस्ट में देख रहा है? देखना है, ये देख साउथ वेस्ट और वो फेसिंग द सेंटर भी है। हाँ समझा? मेरी बात समझी सबको? मेरी बात समझी सबको? हेलो, समझना ध्यान से प्लीज। आ जाओ। धीरज इज फेसिंग साउथ ईस्ट। अब थोड़ा दिमाग लगाना, साउथ ईस्ट में देख रहा है मतलब उधर देख रहा है, मतलब धीरज इधर किधर होगा ना, इधर किधर, ये पॉइंट पे। अब मैं इसको रब कर देता हूं, अब तुझे समझ में आ गया है तो चलो। तो इधर बैठा है धीरज। अब आगे क्या बोलता है वो लोग, ध्यान से देखना। आगे जैसे ब्रिजमोहन एंड एहसान आर राइट ऑपोजिट टू अजय एंड धीरज। बोलता है ब्रिजमोहन और एहसान है ना, वो किसके ऑपोजिट है? अजय एंड धीरज के रिस्पेक्टिवली। ये भी वर्ड आ गया, मतलब ब्रिजमोहन किसके ऑपोजिट है? अजय के। तो अजय के ऑपोजिट यहां पे आ जाएगा ब्रिजमोहन, और एहसान किसके सामने है? धीरज। तो धीरज के सामने आ जाएगा एहसान। मुझ पे एक ही एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। चलो अब आगे क्या बोलता है? एंड चंद्रू इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वल स्पेसिस पे बिटवीन धीरज एंड ब्रिजमोहन। धीरज और ब्रिजमोहन में के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा है? चंद्रू, और वो भी ऑब्वियसली फेसिंग द सेंटर ही है, सब लोग फेसिंग द सेंटर है। क्या बोलता है? विच डायरेक्शन इज चंद्रू फेसिंग? चंद्रू वो बाजू देख रहा है। कौन सा डायरेक्शन है वो बाजू? वो बाजू तो सर ईस्ट है, ईस्ट। इजी, ठीक है। गड़बड़ कर सकते थे तुम लोग ये क्वेश्चन में। आ जाओ नेक्स्ट। फाइंड द नंबर, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो ये अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन है। अल्फाबेट को अल्फाबेट के हिसाब से करो, नंबर को नंबर के हिसाब से करो, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। Q1F S। तू तो इजी बोलेगा ना, तू तो सर है, सर के लिए तो सब इजी ही होता है। नहीं ऐसा नहीं होता है यार, अब मैं तुझे क्या ही बताऊँ, छोड़ जान दे। क्वेश्चन मार्क। तो अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स के जैसे करते हैं, नंबर्स को नंबर्स के जैसे। सबसे पहले FEDC सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है। देख जीरो पीछे जीरो पीछे जीरो पीछे जा रहा है, जीरो लेटर्स पीछे जीरो लेटर्स पीछे जीरो लेटर्स पीछे, तो ऑब्वियसली इधर की जीरो लेटर्स पीछे कौन आ जाएगा? B। इधर देखते हैं QRS, तो एक लेटर आगे, STU वापस एक लेटर आगे, UVW एक लेटर आगे, तो WX और इधर आ जाएगा Y।
तो स्टार्टिंग में y है, एंड में भी है, उतना मुझे पता चल गया। ओके, अब बीच में नंबर्स। अब देख मैंने तुझे सिखाया क्या नंबर अचानक बढ़ रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, नंबर्स आर इंक्रीजिंग सडनली। तो अगर नंबर्स अचानक बढ़ रहे हैं तो प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे प्रीवियस नंबर क्या है, गेम है, ध्यान से देखना। प्रीवियस नंबर 2 का है 1, कहने से 1 1 जा 1 प्लस 1। अचानक बढ़ रहा है ना, तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। 6 का प्रीवियस नंबर क्या है 2, तो कहने से प्रीवियस नंबर 2 इंटू 2 प्लस 2। 21 का प्रीवियस नंबर क्या है 6, तो 6 3 जा 18 प्लस 3। तो देख पैटर्न क्या बना, प्रीवियस नंबर इंटू 1 प्लस 1, प्रीवियस नंबर इंटू 2 प्लस 2, प्रीवियस नंबर इंटू 3 प्लस 3। तब आगे क्या आ जाएगा, प्रीवियस नंबर है 21 इंटू 4 प्लस 4। तो 21 4 इज नथिंग बट 84 प्लस 4 88। तो ये आ गया 88। तो आंसर क्या आ गया, वाई 88B, ऑप्शन सी। इजी, समझा? पैटर्न में ना देखने और सुनने में अच्छा लगना चाहिए। जैसे वो लोग ने प्लस किया ना, वैसे लोग माइनस भी करते हैं रे, कुछ भी करते हो लोग, ऑब्जर्व करने का, ऑब्जर्व। आ जाओ क्वेश्चन 75। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखते हैं। प्राण कोमल, कोमल का स्पेलिंग देख कितना मस्त लिखा है, कोमल लिखा, कोमल। रवि, शालू, त्रिलोक, उर्वी, वासु एंड वॉल्टर। इन शॉर्ट वो लोग ने क्या किया पता है, PQRSTUVW का एक एक नाम दे दिया और कुछ नहीं किया। आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो ये तो मैंने तुम लोग को सिखाया है। चलो आ जाओ तो बना लेते हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉर्थ में बैठे हैं, तो ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। आगे क्या बोलता है ध्यान से देखना। प्राण इज फोर्थ टू द राइट ऑफ त्रिलोक, वॉल्टर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ शालू। तो प्राण जो है वो त्रिलोक से चौथे राइट में बैठा है, वॉल्टर है वो शालू से चौथे लेफ्ट में बैठा है। रवि एंड उर्वी आर नॉट एट द एंड्स, आर द नेबर्स ऑफ कोमल एंड त्रिलोक रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में रवि उर्वी नहीं बैठे हैं, यहाँ पे एंड में भी रवि उर्वी नहीं बैठे हैं। तो रवि उर्वी किधर, तो बीच में बैठे हैं। और वो किसके नेबर्स है, कोमल एंड त्रिलोक। तो कोमल एंड त्रिलोक के नेबर्स कौन है, आपके रवि एंड उर्वी। एंड रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब रवि इज द नेबर ऑफ योर कोमल एंड उर्वी इज द नेबर ऑफ त्रिलोक। रिस्पेक्टिवली लिखा है ना बेटा, ठीक है। आ जाओ आगे दिखता है, वॉल्टर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्राण। जिधर भी प्राण बैठा है, प्राण का इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट मतलब एग्जैक्टली बाजू में कौन बैठा है, वॉल्टर। एंड प्राण इज द नेबर ऑफ कोमल, ठीक है। तो अब देख मुझे ये तीन से मेरे को एक बात तो मुझे समझ में आ रही कि ये तीन से तू स्टार्ट एटलीस्ट दे सकता है कि ये तीन लोग साथ में बैठे हैं। कौन कौन, वॉल्टर इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्राण। तो जिधर भी प्राण बैठा है, प्राण सपोज किधर तो भी बैठा है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में, एग्जैक्टली लेफ्ट में कौन है, वॉल्टर है। एंड प्राण इज द नेबर ऑफ कोमल, और बोलता है प्राण कोमल का भी नेबर है, तो पी के राइट साइड पे क्यू है। तो ये लाइन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब मैं ना ऊपर से किधर से ढूंढता हूं, क्या ये तीन से मुझे कोई कनेक्टिंग लाइन मिलती है। तो तेरे पास है, प्राण इज फोर्थ टू द राइट ऑफ त्रिलोक, ये फर्स्ट वाली लाइन। प्राण किधर बैठा है, त्रिलोक के चौथे राइट में। तो इन शॉर्ट अगर मेरे चौथे राइट में कोई है, तो मैं उसके चौथे लेफ्ट में हूं। तो प्राण इज फोर्थ टू द राइट ऑफ त्रिलोक, तो त्रिलोक इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ प्राण। तो ये सपोज मेरा प्राण यहाँ पे है, तो ये मेरा पहला लेफ्ट, ये मेरा दूसरा लेफ्ट, ये मेरा तीसरा लेफ्ट और ये मेरा चौथा लेफ्ट। यहाँ पे कौन आ जाएगा, त्रिलोक। अब देख ये अरेंजमेंट मुझे शिफ्ट भी करना पड़ सकता है, ठीक है, तो अपन शिफ्ट कर देंगे अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो, पर फॉर द टाइमिंग मैंने रैंडमली उधर प्राण को बिठाया है। आ जाओ, तो त्रिलोक उधर बैठ गया, चलो 4 लोग तो बैठ गए। अब नेक्स्ट लिखता है, वॉल्टर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ शालू। हाँ इधर ये भी अपना काम हो सकता है ना, वॉल्टर किधर है, शालू के चौथे लेफ्ट में, तो शालू किधर है, वॉल्टर के चौथे राइट में। अगर मैं तेरे लेफ्ट में तो तू मेरे राइट में, बस वही कंसेप्ट में इधर यूज कर रहा हूं। तो वॉल्टर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ शालू, तो शालू इज फोर्थ टू द राइट ऑफ वॉल्टर। तो वॉल्टर से चौथा राइट, पहला राइट ये, दूसरा राइट राइट ये, दूसरा राइट ये, तीसरा राइट ये, और चौथा राइट कौन है, शालू। अब देख एंड पे आर और यू, मतलब रवि और उर्वी नहीं हो सकते, पर शालू बैठ सकती है। तो ये दूसरा लाइन भी मेरा फॉर द टाइमिंग सॉल्व तो हो गया है। चलो
तो इतना अरेंजमेंट तो बेटा मेरे पास क्लियर है। अब तीसरा लाइन क्या दिखता था, रवि एंड उर्वी। रवि किसका नेबर है, रवि इज द नेबर ऑफ कोमल, तो कोमल के बाजू में देखिए एक जगह खाली है, उधर रवि बैठ जाएगा। एंड उर्वी इज द रिस्पेक्टिवली नेबर ऑफ किसका, किसकी नेबर है वो, त्रिलोक की, तो उर्वी आ गई इधर। अब कोई जगह बचा क्या, कोई बचा क्या, देख तो पी क्यू आर एस टी यू, वी बचा ना, तो वी के लिए देख एक जगह बची है, वासु। खत्म, मिल गया अरेंजमेंट। हा हा हा, थोड़ा दिमाग से सॉल्व करने का अधिक काम हो गया, हार्ड नहीं था उतना। हाँ 70 to 80% यू कैन से थोड़ा डिफिकल्टी टाइम कंज्यूमिंग था, पर ये एक्सट्रीम लेवल का हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। अगर इसको तू ये मेरे साथ सॉल्व किया तूने, 3-3.5 मिनट ऑलमोस्ट लिया तूने, ठीक है। सो हो सकता है तू इसको 4 या 5 मिनट दे दे, बट ठीक है, 1 मार्क इसका अच्छे से तेरे को मिल सकता था। आइडेंटिफाई हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम पे टी और एस बैठे, टी और एस मतलब त्रिलोक और शालू, ऑप्शन डन। चलो आ जाओ, आया ऑड मैन आउट, आया सिखाया था, ऑड मैन आउट का डिफरेंस सिखाया था। तो देख क्या ये नंबर्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, 190, 145, 136, 352, 460, 324। हाँ देखिए रैंडम नंबर्स है, मतलब ये प्योर ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं, मुझे तो बहुत मस्त लगा था। अब ऑड मैन आउट में ना बेटा स्क्वायर क्यूब ये सब चीज़ें कम रहती है, प्राइम नंबर्स, फिर आपको देखने के कि डिविजिबल है या नहीं है, ऐसे सब चीज़ें करने की, और ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है। तो मेरा तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत मस्त था, और मैंने ऐसे क्लासिफिकेशन के वेज, देख मैं वर्ड्स भी कितने संभाल के यूज कर रहा हूँ, पैटर्न नहीं, क्लासिफिकेशन के वेज, क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत मस्त पैटर्न है। 1 + 9 + 0 कितना होता है, 10। 1 + 4 + 5 कितना होता है, 10। इसका भी टोटल 10, इसका भी टोटल 10, तो ये सबका टोटल 10 10 10 10 हो रहा है, देख 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10। इधर देखना, इधर देखना, 4 + 3 7 + 2 9 9, इधर देख इधर देख इधर देख 10 10। तो मेरे को बता ऑड मैन आउट क्या हुआ, सबका सम 10 10 10 10 10 10 तारा आ रहा है, पर इसका अकेले का 9 आ रहा है। आंसर डी, ऑड मैन आउट। ये ऑड मैन आउट है जहां पे पैटर्न नहीं बनता, क्लासिफिकेशन एक हटके है बाकी सबसे। इधर ऑड इवन नहीं खेलना है यार, समझा कि नहीं समझा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। थोड़े थोड़े लोगों का अगर मेरे जैसा ऑब्जर्वेशन है तो जल्दी आंसर आ जाता, वरना घूमते रहते, हार्ड है सर। डायरेक्शन एकदम अच्छे जैसा क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले प्लस बना ही लेते हैं, वो ईस्ट वेस्ट चल रही है, लेफ्ट राइट सिखाया है, क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। सुनीता वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो 2 किलोमीटर चली, चला के लेके जा। देन टर्न्स लेफ्ट, अभी सिखाया था, अभी ईस्ट का लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, तो नॉर्थ में वो कितना मुड़ी, 1 किलोमीटर मुड़ी, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से 1 किलोमीटर हो गई नॉर्थ में, ओनली 1 किलोमीटर। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 2 किलोमीटर। तो अब वो नॉर्थ में जा रही थी और लेफ्ट मारा, तो नॉर्थ का वापस एंटी क्लॉकवाइज क्या आता है, वेस्ट आता है। तो यहाँ से वो वेस्ट में कितना मुड़ी, 2 किलोमीटर मुड़ी, 2 किलोमीटर। एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 1 किलोमीटर एंड देन हॉल्ट्स। तो देख वो वेस्ट में जा रही थी 2 किलोमीटर, और उधर से लेफ्ट लिया, तो वेस्ट का एंटी क्या आता है, साउथ, तो साउथ में वापस 1 किलोमीटर आई। हे स्टार्ट भी उधर से किया और एंड भी उधर ही किया। तो क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस इज सुनीता फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, 0 किलोमीटर। तेरे साथ उसने प्रैंक किया, इधर पूरा क्वेश्चन बनवाया, सॉल्व करवाया, आंसर तो 0 ही आया। आ जाओ 78, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एकदम बच्चे जैसा। ये एक मॉक टेस्ट पेपर का आपका ये क्वेश्चन है, एकदम बच्चे जैसा। देख क्या बोलते हैं, एक्स पति है, पति मतलब डिब्बा है, किसका डिब्बा है, वाई का, मतलब उसकी शादी हुई है वाई से, तो वाई ऑब्वियसली वाइफ रहेगी ना, क्योंकि एक्स हस्बैंड है। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, तो डब्ल्यू कौन है, बेटी है एक्स की। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू का पति कौन है, जेड है। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, और एन कौन है, बेटी है जेड की। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ वाई टू एन, तो आप लोग को सिखा है पीछा कौन है, एन, एन के हिसाब से किसको देखने का, वाई को देखने का, एन के हिसाब से वाई, एन के हिसाब से वाई, एन के हिसाब से वाई। तो ये मेरा पापा,
ये मेरी मम्मी, डब्ल्यू मेरी मम्मी हुई ना, मम्मी का पापा को बोलता अपन नाना, मम्मी की मम्मी, डब्ल्यू की मम्मी भाई थे ना, उसको बोलते नानी, यानी कि इंग्लिश बोलता है ग्रैंड मदर। धीरे धीरे सॉल्व करने का आंसर आता ही आता है। आ जाओ 79, वापस सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एन एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इजी सा क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं। सर्कल बनाते हैं और 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या बोलता है, पढ़ो। ई इज नॉट सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, ई जो है वो बी डी के बीच में बैठा नहीं है, ये अपने को दिया हुआ है। आगे क्या बोलता है, ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए किधर है, एफ के लेफ्ट में। तो सबसे पहले ये बना देते हैं, इधर से ही चालू करते हैं। मैं सपोज एफ को इधर लिखता हूं तो ए उसके लेफ्ट में है। C इज 4 टू द राइट ऑफ ए, जिधर भी ए बैठा है C उसके चौथे राइट में, ए के चौथे राइट में। तो पहले राइट में तो F बैठा है, ये हो जाएगा दूसरा राइट, ये हो जाएगा तीसरा राइट, और ये हो जाएगा चौथा राइट। यहाँ पे कौन बैठा है, C। D इज इमीडिएट राइट ऑफ E, जिधर भी E बैठा है ना उसके इमीडिएट राइट में D है। ए मतलब ये दोनों साथ साथ में बैठे ना। अब देख A और C के बीच में खाली एक ही जन की बैठने की जगह है, मतलब ऑब्वियसली ये साइड D और E रह गए। D इज इमीडिएट राइट ऑफ E, मतलब E के राइट में, तो E इधर बैठना चाहिए और उसके इमीडिएट राइट में कौन है, D। और आप लोग को लाइन दी थी E इज नॉट सिटिंग बिटवीन B एंड D, देख ले E B D के बीच में नहीं है, बराबर है। आगे क्या बोलता है, और कुछ बोला है उसने, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब बचा एक ही बंदा ना, कौन बन गया, बी, तो बी आ जाएगा इधर। क्या पूछता है क्वेश्चन, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में कौन है, डी, ऑप्शन सी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का है। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फाइंड हु इज द अंकल ऑफ पी। तो हम लोग ने देखा था ये सेम क्वेश्चन, हम लोग ने दिसंबर के मॉक टेस्ट पेपर में देखा था, और मैंने बोला भी था प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद है, यही ओरिजिनल क्वेश्चन है। क्या बोलता है, के एंड जे आर ब्रदर्स। तो आज सॉल्व करते हैं, के बी भाई जे बी भाई। के इज द सिस्टर ऑफ एम, और के की बहन का नाम क्या है, एम, तो एम उसकी बहन। पी एंड एन आर सिबलिंग्स, मतलब पी और एन सिबलिंग्स है। आगे क्या बोलता है, एन इज द डॉटर ऑफ जे, जे की डॉटर कौन है, एन, डॉटर है मतलब बेटी, और तुझे पता था पी और एन आर सिबलिंग्स। अब बोला क्या, हु इज द अंकल ऑफ पी, अंकल मतलब क्या, या तो चाचा या तो मामा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पप्पा और पप्पा का भाई ना, तो ये हो गया चाचा, तो के इज द अंकल, ऑप्शन ई। एकदम इसी था, बच्चे जैसा क्वेश्चन था। आ जाओ, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 81। देयर आर 6 persons in a family, A and B are married couple and A is a male member। तो बोलता है A और B की शादी हुई है, एंड A कौन है, A कौन है, मेल मेंबर है, तो B कौन होगी, फीमेल मेंबर। D इज द ओनली सन ऑफ C, डी कौन है, सी का अकेला बेटा है। सी हु बोला था, जो सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, सी कौन है, ए का भाई है, एंड डी उसका अकेला बेटा, ए ओनली, ओनली हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई कौन है, जी की बहन है, मतलब सी की बेटी है ई, ओके। आगे क्या बोलता है, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी कौन है, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, बहू। तो मैं बहू किसको बुलाऊंगी, मेरे बेटे की बीवी को, तो ऑब्वियसली मेरा बेटा ए होगा, उसकी बीवी तो देख दिया है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ, एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड, और एफ का पति टपक गया, तो ये रहेगी लड़की। तो तेरे को पूछा है हु इज द मदर ऑफ सी, तो देख ए और सी भाई भाई थे दोनों, तो सी की माँ कौन हुई, सी की माँ हुई एफ, ऑप्शन डी। कितना इजी था ये भी। आ जाओ क्वेश्चन 82। द फॉलोइंग इज द डेटा रिलेटेड टू इनकम ऑफ 86%। ये इजी क्वेश्चन है, देखते क्या पूछता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग एटलीस्ट 1500 पर डे। तो देख कम से कम 1500 पर डे, तो 1500 से लेके वो लोग 2500 तक कितना भी कमा सकते हैं ना, एटलीस्ट कम से कम 1500 पर डे का परसेंटेज क्या है। तो टोटल लोगे 86, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 36 वाला स्लैब भी आएगा एंड 7 वाला स्लैब भी आएगा, 1.5 से 2000 वाला भी आएगा, 2000 से 2500 वाला भी आएगा, और परसेंटेज पूछा है मतलब इंटू 100, तो 43 इंटू 100 डिवाइड बाई 86,
तो 43 का डबल 86 होता है। ओके, तो ये आ जाएगा 50%। इजी था ऑप्शन। बच्चे जैसा क्वेश्चन था ये भी। आ जाओ नेक्स्ट। For the tabulation, caption, the upper part of the table, the lower part of the table, the main part of the table, the upper part of the table describing rows and sub rows। 6 कॉलम एंड सब कॉलम डिस्क्राइब करता है वो। तो आंसर है ऑप्शन ए, अपर पार्ट ऑफ द टेबल। देख बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थोड़े लोग है ना मार्क कर देते डी। उधर अगर तू इंस्टीट्यूट का मटेरियल ध्यान से पढ़ेगा या किसी की भी नोट्स ध्यान से पढ़ेगा ना, अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम्स एंड सब कॉलम्स है। कॉलम्स को डिस्क्राइब करता है। देख मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम, एंड फिर बचा रो स्टब। सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इधर खाली आंसर है ए, डी आएगा नहीं। 84 फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन of marks in statistics of 200 students, the mean marks and median marks, find the model marks। तो आप लोग को पता है ये mod equals to 3 median minus 2 mean। तो मोड अपने को दिया है नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। 3 मीडियन 3 इंटू 52.4 माइनस 2 टाइम्स द मीन 55.6। तो कर लो कैलकुलेट। 3 इंटू 52.4 एम प्लस 2 इंटू 55.6, आंसर आया 46। ऑप्शन इजी था ये तो। कितने इजी क्वेश्चन देते हैं लोग। 85 फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डेटा व्हाट इज द मीडियन। बहुत सारे छोटे छोटे नंबर है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या बोलता है? छोटा में छोटा क्या? 2 काटते ना साथ साथ में 2, फिर 3 है 1 3 2 3, फिर 4 1 4 2 4 3 4। वाओ, 5 एक ही है, 6 भी एक ही है, 7 नहीं दिख रहा है, 8 9 9 देख 2 बार 9 है। ओके 10 10 है, 11 है, 15 है, 19 है, 11 15 19। अब गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, 15 15। तो ये तो डायरेक्टली n+1/2 हो जाएगा ना। तो कितना आया? 8th टर्म 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा है? 6। ऑप्शन कैलकुलेशन खाली उसने थोड़ा बढ़ा दिया था और कुछ नहीं। ओके 86 आया 86। ओके, तो ये क्वेश्चन में बेटा पता नहीं क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्या है, ऑप्शंस के साथ मैच, मतलब जो चीज़ उसने मांगी है वो नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं अपन डिस्कशन करते हैं कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में वो लोग बराबर करके वापस सेम क्वेश्चन पूछे, वी डोंट नो, बट क्वेश्चन अच्छा है तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलता है ध्यान से देखना। द मीन एंड द वेरियंस ऑफ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 9। तो ऑब्जर्वेशंस जब है 100, तब मीन यानी कि x बार इज 8 एंड वेरियंस इज 9। तो वेरियंस 9, तो बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा? 3 बराबर है। आगे क्या बोलता है ध्यान से देखना। आउट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशंस। अब वो n1 दे रहा है, 60 ऑब्जर्वेशंस दे रहा है, एंड x1 बार तुझे दे रहा है, मीन दे रहा है वो तुझे 10, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 1 दे रहा है 2। ठीक है, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिमेनिंग 40 ऑब्जर्वेशंस। तो तेरे n2 हो जाएंगे 40, x2 बार तुझे दिया नहीं है, एंड तुझे पूछा क्या है बेटा? स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 2 का पूछा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा बेटा? तो यहाँ पे तुझे जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का, जिससे तुझे तेरा आंसर आ जाएगा। और ये जो तेरे को x बार ऊपर दिया है वो कंबाइंड दिया है, कंबाइंड मीन दिया है तुझे। ठीक है, तो अब ये डेटा यूज़ करके हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो नाउ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन की बेटा 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू फाइंड आउट कंबाइंड मीन।
तो कंबाइंड मीन तो दिया है, तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा बेटा, इससे हम लोग को मिलेगा x2 बार। ठीक है, चलो इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, इधर थोड़ा जगह शॉर्ट गिरेगा तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा x बार c, दैट इज नथिंग बट n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो x बार c कितना दिया हुआ है हम लोग को बेटा, दिया हुआ है 8। n1 x1 बार वी हैव n1 is 60 and x1 bar is 10, तो 60 into 10 plus n2 we have 40, we have to find x2 bar, right, and the total we know of the observations is 100, so ये हो जाएगा 800 equals to 600 plus 40 x2 bar। तो x2 बार क्या आ जाएगा बेटा, x2 बार आ जाएगा 800 minus 600 that is 200 and 40 मल्टीप्लिकेशन में इधर में आ जाएगा डिवीजन में, so x2 बार वी गेट इज 5। तो चलो ये एक डेटा तो अपने को मिल गया, दैट इज 5, x2 बार अपने को मिल गया, दैट इज 5। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ ये था बेटा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के स्टेप्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहला था कंबाइंड मीन फाइंड आउट करने का, वो तो दिया था तो उससे हम लोग ने ये फाइंड आउट किया। फिर दूसरा स्टेप था फाइंड डिफरेंसेस एंड उसके स्क्वायर करने के, क्या करने का, फाइंड डिफरेंसेस एंड उसका स्क्वायर। तो डिफरेंसेस एंड उसका स्क्वायर, difference 1 is nothing but your x1 bar minus combined mean and difference 2 is nothing but x2 bar and minus combined mean। तो x1 बार कितना है आपका, वो है आपका 10 और combined mean था 8, तो आ गया 2 और उसका स्क्वायर करना है आप लोग को, जो कि यूज करना है वो है 4। फॉर्मूला में कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूला में डिफरेंस का स्क्वायर है। आगे x2 बार आपको आया था 5 माइनस 8 3 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। तो डिफरेंस 1 का स्क्वायर मिल गया, डिफरेंस 2 का स्क्वायर भी आप लोग को मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला की। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ n1 इनटू ब्रैकेट में वेरिएंस 1 प्लस डिफरेंस 1 का स्क्वायर, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, कितना था 4। ठीक है, प्लस n2 वेरिएंस 2 प्लस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2, जो कि हम लोग ने फाइंड आउट किया, कितना था बेटा 9। द होल अपॉन n1 प्लस n2। नाउ सी, हम लोग को यहीं से मिलेगा ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द अदर, ये नहीं, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिमेनिंग 40 ऑब्जर्वेशंस, है ना। चलो आ जाओ, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया था आप लोग को, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन था 3, है ना, वो वेरिएंस 9 था, तो ये हो गया 3। ओके, हो गया 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n1, आपके पास n1 कितना था 60, वेरिएंस 1, तो वेरिएंस 1 तो स्टैंडर्ड डिवीजन दिया था 1 का, हाँ था 2, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा 4, तो वेरिएंस हो गया 4। डिफरेंस 1 का स्क्वायर भी कितना था 4 प्लस n2 कितना था 40, वेरिएंस 2 वही तो अपने को फाइंड आउट करना है, वो अपने पास है नहीं, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है, पर इधर से वेरिएंस मिलेगा। ठीक है, प्लस डिफरेंस 2 का स्क्वायर कितना है 9 अपॉन n1 प्लस n2, वो कितना था बेटा 100। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट, यहाँ पे 9 आ जाएगा, वो छपरा हट जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 60 इंटू 8, तो 6 8 इज नथिंग बट 48, तो ये आ जाएगा 480। 60 ब्रैकेट में 4 प्लस 4 को किया, प्लस ये आ जाएगा 40 इंटू वेरियंस प्लस 9 4 36 प्लस 360। अब ये डिवाइड बाय 100 है ना, मैं एक काम करता हूँ वो बाजू लिख ही लेता हूँ। चलो नहीं मतलब तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा, फिर बोलेंगे सर मस्त पढ़ाता है पर आंसर किधर से लाता है। आ जाओ, तो अब ये 9 इंटू 100 करोगे, उधर 900 माइनस, अब प्लस 480 है, माइनस 360 उधर लेता हूँ, माइनस 480 माइनस 360 इक्वल्स टू 40 इंटू वेरियंस। ओके, अब कर लो 900 माइनस 480 माइनस 360 आ गया 60, और वो 40 है जो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 40 इक्वल्स टू वेरियंस।
ऑफ सेकेंड। चल आ जाओ, तो 60 डिवाइड बाई 40 करेगा तो आएगा 1.5। तो वेरिएंस आ गया बेटा 1.5। अब बस, अब तुझे पूछा था स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यू नो स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसका मैं रूट करता हूँ 1.5 का, तो आंसर कम्स टू 1.22। अब देख लो 1.22, 4 भी ले ले, तीसरा डिजिट भी ले लो, कहाँ पे। तो यहाँ पे वो लोग एक चीज़ क्या कर सकते थे, वो लोग को पूछना रहेगा वेरिएंस, गलती से दे दिया स्टैंडर्ड डिविएशन, या तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ही पूछना था और यहाँ पे ऑप्शन वो लोग ने गलत दे दी। दो में से एक चीज़ हो सकती है, राइट। बट आई होप आप लोग को वे समझ में आया कैलकुलेशन का, आई होप आप लोग को वे समझ में आया। ये फिक्स टाइप से बेटा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन अगर वो नॉर्मली भी पूछता ना, तो सबसे पहले कंबाइंड मीन फिर फाइंड डिफरेंसेस एंड फिर फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। क्लियर? अरे क्लियर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन अच्छा था, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो। आ जाओ 87, द मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप कैसे कैसे मोड्स में प्रेजेंट कर सकते हो डेटा को, टेक्सचुअल में कर सकते हो, डायग्राम में कर सकते हो, इंटरनल प्रेजेंटेशन, ऐसा तो मैंने नहीं सुना किधर भी। ये तीनों ऑप्शन में से कट गया, बचेगा सी, टेक्सचुअल, टेब्यूलर एंड डायग्रामेटिक, और वही आपने देखा हुआ है, राइट। चलो, if the mean of two numbers is 30, the geometric mean is 24, then what is the harmonic mean of two numbers? तो geometric mean है, हार्मोनिक मीन है, और अरिथमेटिक मीन है। इसका रिलेशनशिप आपको याद रहना चाहिए, दैट इज नथिंग बट GM स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू HM। या तो फिर थोड़े लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, GM इक्वल्स टू रूट ऑफ AM इंटू HM, तो भी बराबर है, क्योंकि आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करोगे तो यही फॉर्म निकलने वाला है। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो यूज़ करना। मैं डायरेक्टली सेकंड वाला यूज़ करता हूँ, एक स्टेप बचा होगा, तो GM का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू AM कितना दिया है 30 इंटू HM। तो HM विल बी इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कितना होता है डिवाइड बाई 30, 19.2। बच्चे जैसा 15 सेकेंड का क्वेश्चन था, उससे भी कम में आंसर आ जाता। आ जाओ, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ सेट ऑफ नॉर्मली distributed data, the following statistical parameters are known: mean 6, standard deviation 2.6, median 5 and quartile deviation 1.5. what is the coefficient of quartile deviation? अब देख, नॉर्मली कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन बेटा क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया उसने, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या रहेगा, तो गड़बड़ करता, तो फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल्स टू QD अपॉन मीडियन इंटू 100। तो QD देख दिया, कितना दिया QD 1.5, मीडियन कितना है 5 इंटू 100, तो 1.5 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, आंसर आएगा 30। सर बाकी का डेटा क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, गड़बड़ करता तो ये क्वेश्चन में 100 का गड़बड़ करता। चलो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, याद रखना, यही सारी चीजें याद रखनी है। चलो, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, अरे वाह सर, मुझे आता है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन देख 3, 7, 11, 15, 24, 28, 0 एंड 30 एंड 0, 30 एंड 0। ठीक है, 0, 30, 30, 0। ठीक है, और इसका सबका प्रोडक्ट, तो इन सबका प्रोडक्ट कर ले कैलसी पे, आंसर आएगा 0। ये तेरे को ऐसे पता, बस मैं सर हूं ना इसके लिए, मैजिशियन। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर आएगा 0, मेहनत करने का नहीं। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू दी जाती तो सर कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि नेगेटिव आता स्क्वायर रूट में, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आ जाओ वापस, उसने ये थियरी के साथ खेला तेरे, उसने ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले के साथ नहीं, जज्बातों के साथ खेला, कंसेप्ट के साथ खेला। आ जाओ 91, ये तो एकदम इजी है, तूने ऑलरेडी मॉड्यूल में किया भी रहेगा क्वेश्चन। देख क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग ऑफ 2, 5, 6, 7 विदाउट द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स वुड बी डिविजिबल बाय 4 इज क्या। ठीक है, तो मेरे पास 4 नंबर है, वो की है 2, 5, 6 एंड 7, और बोलता है ऐसी प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड आउट करके दे जब
जब जब तो उसको सॉल्व करे तो लास्ट के दो नंबर्स कैसे होने चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। तो अब सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का अपन रूल याद करते हैं, कब कब नंबर डिविजिबल बाय 4 हो सकता है। तो सबसे पहला ये है कि लास्ट में दो जीरोस होने चाहिए, लास्ट टू डिजिट शुड बी डबल जीरोस। तो यहाँ पे दो जीरोस तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि चार ही नंबर है, 2 5 6 7। एंड दूसरा ये है, बोलता है रूल ऑफ डिविजिबल ऑफ 4, ये बोलता है कि भाई लास्ट टू नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। मतलब अब मैं इधर लिखता हूँ 25, सपोज मैं नंबर लेता हूँ 6725, तो क्या है नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट्स कैसे है जो डिविजिबल बाय 4 नहीं हो रहे, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा नहीं। ओके, तो आ जाओ अपन दोनों नंबर की पैर उठाते और देखते जाते। मेरे को बता 25 क्या डिविजिबल बाय 4 होगा? नहीं। 26 क्या 26 4 के टेबल में आता है? नहीं। क्या 27? नहीं। तो लास्ट के दो नंबर्स 25 भी नहीं हो सकते, 26 भी नहीं हो सकता है, 27 भी नहीं हो सकता है। ओके, अब ऐसे देखते जा। 52, हाँ सर 52 तो आता है टेबल में, 13 4 52। वैसे ही 56, हाँ सर 56 भी आता है टेबल में। ओके, आगे 57, 57 आता नहीं है। वैसे 62 नहीं, 65 नहीं, 67 नहीं, 72 हाँ सर 72 आता है 4 के टेबल में। 75 नहीं, बट 76 आता है, हाँ आता है। तो अब अगर मैं 2 और 5 को यूज कर लिया तो नंबर्स कौन से बचे? 6 7। तो 6 7 5 2 या तो 6 7 2 5, ये दो नंबर्स बन सकते हैं। फिर वैसे 5 एंड 6 अगर यूज कर लिया तो 2 एंड 7 बचेगा, तो 2 7 5 6 या 7 2 5 6। अब वैसे ही 7 और 2 यूज कर लिया तो 5 6 7 2 या 6 5 7 2। एंड 7 6 अगर मैं 7 6 यूज कर लेता हूं तो 2 5 7 6 या 2 5 7 6। तो 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 नंबर्स है जिसको मैं अरेंज कर सकता हूं इतने वेज में कि वो लास्ट के दो नंबर डिविजिबल बाय 4 आए, तो मुझे मेरा न्यूमरेटर तो मिल गया 8। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। चार नंबर्स है, चार नंबर्स को तू अलग अलग वेज में अरेंज कर सकता है, तो कितने वेज में अरेंज कर सकता है? 4 फैक्टोरियल। तो 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट कम्स टू 24। तो 8 1 जा 3 जा 1/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन क्लियर। आ जाओ 92, क्या बोलता है 92? इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 42.7, थर्ड क्वार्टाइल इज 74.25 एंड देख आया, देख ये क्वार्टाइल डिवीजन का क्वेश्चन देख और ये क्वार्टाइल डिवीजन का क्वेश्चन देख। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे नॉर्मल वॉल्वर नहीं लिखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी क्या रहेगा? देख मतलब उसने ये पेपर में ना, तो एक बात समझ ले, क्यूडी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से टेस्ट कर लिया तेरा। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो पहले मैं Q3 माइनस Q1 कर लेता हूँ। Q3 है 74.25 माइनस 42.75 इक्वल्स टू 31.5 आया। ओके, नीचे वाला क्या बोलता है? 74.25 प्लस 42.75, 117 आया। आंसर सॉल्व करते हैं। आंसर आया 26.92, ऑप्शन इजी, राइट। चलो आ जाओ 93, क्या बोलता है? ऑन अ कमोडिटी एक्सचेंज व्हेन बुकिंग ट्रेड्स विद द प्रोविजन ऑफ द स्टॉप लॉस अ ट्रेडर कैन मेक 50,000 ऑफ प्रॉफिट। तो ये तेरा वेरिएबल दिया है, एक्स दिया है, 50,000 प्रॉफिट और इनकर अ लॉस ऑफ 20,000, तो नेगेटिव वैल्यू भी जा सकता है इसका, 20,000 लॉस। आगे क्या बोलता है? द प्रोबेबिलिटीज दिया है इसका ऑफ प्रॉफिट एंड इनकरिंग ऑफ द लॉस फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इज 0.75 प्रॉफिट का, 0.25 लॉस का। द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब x इंटू पी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x पूछा है यानी x इंटू पी, सबमिशन p एंड x। आज तो कर लेते हैं कैलसी पे, डायरेक्टली कर लेते हैं। 50,000 इंटू 0.75, 37,500 आया m प्लस। अब 20,000 इंटू 0.25, 5,000 आया m माइनस। आंसर सॉल्व कर
MRC कर 32,500 रुपया। ऑप्शन इजी। चलो आ जाओ, ये आपका रैंडम वेरिएबल चैप्टर में से उसने दिया था। 94, द इंसिडेंस of a skin disease in a chemical plant occurs such that the workers have 20% of chances suffering of it। मतलब वो तेरे को क्या बोलता है कि 20% चांस है, यानी कि 0.2% चांसेस है। 0.2 ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका चांसेस है कि उनको स्किन डिसीज हो। तो मतलब स्किन डिसीज ना होने का चांसेस क्या होगा? 0.8, राइट? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कर्स 4 और मोर विल हैव स्किन डिसीज? अब देख, ये तेरा जो क्वेश्चन है वो था बाइनोमियल का क्वेश्चन, ठीक है? आजा, मतलब ये जो है P है, ये Q है, स्किन डिसीज होने का पूछा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछा है, तो ना होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया। अब N, तो 6 लोग थे, 6। तो आ जाओ, बाइनोमियल क्या बोलता था? NCX P रेस टू X Q रेस टू N माइनस X। अब 6 में से कितने लोग को चाहिए? 4 और मोर। प्रोबेबिलिटी तेरे को चाहिए 4 और मोर वर्कर्स, तो 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा और 6 भी चलेगा। तो अब फॉर्मूला बोलते जाते लिखते जाते, NCX यानी कि 6C4, इधर क्या आ जाएगा? 6C5, इधर क्या आ जाएगा? 6C6। थोड़ा दिमाग लगाना। NCX P रेस टू X यानी कि 0.2 रेस टू 4, 0.2 रेस टू 5, 0.2 रेस टू 6, Q रेस टू 0.8 रेस टू N माइनस X, 6 माइनस 4 2 प्लस 0.8 रेस टू 1 प्लस 0.8 रेस टू 0। तो 6C4 मतलब 6 को 4 नंबर पीछे और 4 को भी 4 नंबर पीछे, तो यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 जा 4 3 जा कैंसिल, 2 1 जा 3 जा, तो ये 5 3 जा कितना आ गया बेटा? 15। अब क्या करते हैं, वो बाकी की वैल्यूज को इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और एम प्लस में डाल देते हैं। आ जाओ, तो 0.2 रेस टू 4 स्क्वायर क्यूब 4 0.0016 आया इंटू 0.8 का स्क्वायर, तो 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64 इंटू 15। तो ये जो मेरी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट की जो वैल्यू आ रही है आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल द थिंग्स इज 0.01536। चलो अब दूसरे की वैल्यू देखते हैं, 6C5। तो यानी 6 को 5 नंबर पीछे देखे जाते हैं, 6 को 5 नंबर पीछे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 5 को 5 नंबर पीछे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया ना, तो बच गया 6। अब 0.2 रेस टू 5, तो आ जाओ करते हैं 0.2 रेस टू 5, 0.2 रेस टू 5, 0.2 रेस टू स्क्वायर क्यूब 4 एंड 5, तो 0.3 टाइम्स 0 एंड 3 2 इंटू 0.8 इंटू 6, तो ये आ गया 0.001536 प्लस। अब देख 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, राइट? 0.2 रेस टू 6, तो 0.2 रेस टू 6 स्क्वायर क्यूब 4 5 6 एंड 0.8 की वैल्यू रेस टू 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ठीक है? तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 0.000064 और सबका मार देते हैं टोटल। मेरा आंसर आया 0.01696। है ऐसा कोई ऑप्शन? देख, 2 ऑप्शन दिए, बहुत क्लोज दिए, 0.01696 है, तो ध्यान देना ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्लियर? मेन गेम कैलकुलेशंस का है, अगर प्रोबेबिलिटी समझ गया तो 4 और मोर, 4 या 4 से ज़्यादा, तो 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। आ जाओ 95, क्या बोलता है 95? ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ कर सकते हो तुम लोग। 4 पर्सन आर चूजन एट अ रैंडम, 4 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया, 4 लोगों को सिलेक्ट किया, कितने में से? फ्रॉम 3 मैन 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन। तो टोटल लोग कितने हो गए? 4 और 3 7 और 2 9 हो गए, 9। तो मतलब डिनोमिनेटर तो तेरे को क्लियर होना चाहिए, 9C4 बराबर है, मैं थोड़ा बाजू में लिखता हूँ 9C4, ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन है, मतलब
दो तो चिल्ड्रन पक्के होने चाहिए, तो चिल्ड्रन को खींचने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देख दो चिल्ड्रन में से, देख तू चार लोग को खींच रहा है तो दो अगर चिल्ड्रन में से खींच रहा है तो बाकी के दो इनमें से होने चाहिए ना, बराबर है। तो चिल्ड्रंस की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4c2, और बाकी के जो दो लोग खींचने हैं वो पांच में से कितने, देख उसने बोला नहीं उसमें से कितनी वुमेन कितने मैन चाहिए, दो लोग को खींचना है, दोनों वुमेन भी हो सकती है दोनों मैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। तो इंटू 5c2, ये सर ये 5 किधर से आया तेरा, अरे ये 5 तीन मैन एंड दो मैन, 5c2 हो गया ना, समझा कि नहीं समझा, हेलो आ जाओ। तो अब कैलकुलेट करते हैं इसको, 4c2 मतलब चार को दो नंबर पीछे, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ये 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 9 को चार नंबर पीछे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एंड अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में देख क्या क्या है 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, और जो 4 इंटू 3 इंटू 2 1 है वो भी ऊपर ही रहेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 ही लिखता हूँ, 1 नहीं लिखता हूँ, टाइम पास नहीं करने का है। अब डिनोमिनेटर में पहले 2 इंटू 1 यानी दो बार 2 इंटू 2 पड़ा है, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब सोच समझ के काटाम काटी करना, हाँ गलती से और कुछ, हाँ चलो आ जाओ बात करते इधर, च्यू च्यू तो हो गया 4 एक 4 कट गया, ठीक है 4 2 जा 8 कट गया, और क्या कटेगा 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, बराबर है। तब ऊपर 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 और भी कटेगा 2 2 जा 2 3 जा, तो ऊपर क्या बचा 2 5 जा 10, नीचे क्या बचा 7 3 जा 21, तो 10/21 दैट इज नथिंग बट ऑप्शन ए। हाँ आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन था, इतना भी बुरा नहीं था। चलो क्वेश्चन 96, प्रोबेबिलिटी आपको समझनी चाहिए, मैं अभी भी बोलता हूँ। क्वेश्चन 96 क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4, ए बाई बी इज 1/6, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला याद करते हैं, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पीछे कौन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो नीचे भी कौन आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अपने पास नहीं है, पर अपने पास एक डेटा जरूर गिवन है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी का डेटा है, दैट इज 1/6, तो इससे अपने को वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे मिलेगा, तो वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कौन है नीचे कौन है बी, तो इधर भी कौन आ जाएगा बी, ठीक है। अब मुझे दिया है कि ये 1/6 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी इज 1/6, ए इंटरसेक्शन बी मुझे फाइंड आउट करना है, वही तो मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करेगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है तेरे को 1/4, ठीक है। तो अब ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान से सोच समझ कर सॉल्व करना, तू गड़बड़ कर सकता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, इधर डिनोमिनेटर में है तो उधर न्यूमरेटर में जाता है ना, तो सोच समझ कर सॉल्व करना, ये आ जाएगा आपका 1/6 इंटू 1/4, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 1/24, तो ए इंटरसेक्शन भी मिल गया 1/24 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/24 इंटू 3/1 दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1/8। कौन सा ऑप्शन है 1/8 ऑप्शन। कैलकुलेशंस बहुत संभल संभल के करने के, गड़बड़ करने का नहीं। चलो इजी क्वेश्चन है, मार्क जाएगा, और इधर से तेरे उसने दोनों फॉर्मूला टेस्ट कर लिए, ए बी बाई बी का भी किया, बी बाई ए का भी किया। अच्छा 97 ये अच्छा था, इसमें मेरे को लगता है 90% लोग फंसे रहेंगे, क्योंकि ये है ना एकदम छुपा हुआ पॉइंट है थियरी में, और इसको ढूंढते ढूंढते लोगों को अपनी नानी याद आ जाती है ना, तो एकदम मतलब एकदम बोलते ना वो कोने में छुपा के रखा था ये पॉइंट को थियरी में, और उससे वो लोगों ने क्वेश्चन बना दिया। आ जाओ, तो पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन की क्या बोलता है, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या पूछा है। Given that r equals to 0.4 and n equals to 81, determine the limits for the population correlation coefficient। तो अपन बात करते हैं what is the limits for population correlation coefficient। तो limits for population correlation coefficient is nothing but r plus or minus probable error। क्या है बोलो, वापस बोलो,
आर प्लस और माइनस प्रोबेबल एरर। नाउ प्रोबेबल एरर तो आप लोग को पता है, व्हाट इज प्रोबेबल एरर? प्रोबेबल एरर इज नथिंग बट 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है। और उसको प्लस और माइनस किस में से करना है? आर में से। तो सबसे पहले अपन ये सब्स्टिट्यूट करके ये इसका प्रोबेबल एरर का फाइंड आउट करते हैं। आंसर 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर इज नथिंग बट 0.4 इंटू उसका स्क्वायर, और उसको माइनस किस में से करना है बेटा तुझे? 1 में से। तो आगे जाएगा 0.84 अपॉन रूट ऑफ एन। एन कितना है बेटा? 81। तो 81 का रूट क्या हो जाएगा? 9। तो इसको अपन करते हैं सॉल्व। डिवाइड बाय 9 इंटू 0.6745। तो इसका मेरा आंसर आ गया कुछ ऐसा, कुछ आ रहा है 0.062953। और इसको मुझे प्लस माइनस किस में से करना है? आर में से। तो आर में से मैं एक बार इसको प्लस करूंगा और एक बार इसको माइनस करूंगा। तो आर प्लस एक बार करूंगा प्रोबेबल एरर, और आर माइनस प्रोबेबल एरर करूंगा, तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा बेटा? लिमिट्स मिल जाएगा। तो एक बार मैं प्लस करता हूँ, तो इसमें मैं कर देता हूँ प्लस 0.4, प्लस 0.4, आर अपना 0.4 था, तो आ गया 0.4629, 0.4629। ओके, उन लोग ने अपने को 3 डिजिट ही दिया है, तो अपन बाद में राउंड ऑफ करेंगे। और एक बार मुझे माइनस 0.4 करना है, तो ये आ जाएगा आपका 0.337 है 0.337 एंड 0.463। अब देखना, इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा तो ये हो जाएगा ना 0.463। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना इसको। एग्जाम के एक दिन पहले वापस इसको देख के जाना, ये हो सकता है बाद में कभी वापस पूछ ले, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया। ठीक है, लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर प्लस और माइनस पॉइंट प्रोबेबल एरर। ठीक है, आ जाओ। और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या है? 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ। आ जाओ क्वेश्चन 98, हाश फाइनल थियरी क्वेश्चन आया। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाइज डैश टेस्ट व्हाइल फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय कौन? तो देख, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन वो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। ओके, एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर्स सेटिस्फाई करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये जो है ना, ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी जो इंडेक्स नंबर में आता है वो तो दिख ही गया रहेगा। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी प्लीज थियरी पढ़ के जाना, प्लीज प्लीज, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी की थियरी, क्योंकि 1 मार्क इसमें से मैंने ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में देखा और दिखाई है। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बेसिकली क्या बोलता है बेटा? कि एक इंडेक्स नंबर कितना स्ट्रांग है, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट है, यूनिट टेस्ट, हाँ, वैसे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो आपको बताना है कि एक इंडेक्स नंबर कितना स्ट्रांग है, उसके लिए आपको टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी यूज करना पड़ेगा। और चौथा सर्कुलर टेस्ट, 4 टेस्ट है। और फिशर्स को आइडियल इंडेक्स नंबर इसके लिए बोला है कि एक फिशर ही एक अकेला है जो 4 में से 3 टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलो आ जाओ, बात करते हैं आगे। 99 स्पीयरमैन रैंक, एकदम बच्चे जैसा चीज, डायरेक्ट स्पीयरमैन रैंक का फॉर्मूला पूछ दिया, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो ऑप्शन कौन सा है? डी। आ जाओ, इफ द रिग्रेशन इक्वेशंस आर दिस एंड दिस देन द मीन। तो ये तो सिखाया ना आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x प्लस 2y माइनस 5 को उधर लेके जाता हूँ प्लस 5, 2x प्लस 3y माइनस 8 उधर जाएगा प्लस 8। अब क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2। आ जाओ करते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 माइनस, मैं डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर ही देता हूँ, प्लस 3y इक्वल्स टू 8। तो नीचे वाले की साइन चेंज होगी, कटेगा y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 मिल गया। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे y 2 है, यानी कि y बार 2 है, तो ऑब्वियसली सी इज द आंसर। x बार क्या हो जाएगा? 1। नहीं भरोसा है मेरे पे तो सब्स्टिट्यूट करके देख ले। फर्स्ट इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 5। तो 2 चूजा 4, उधर जाएगा 5 माइनस 4 1, आ गया ना ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा 60 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग हो गया डिस्कस ऑफ जून एग्जामिनेशंस पेपर 2023। आई होप आप लोग को आशीष सर और मेरे साथ मजा आ रहेगा। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज सबके साथ शेयर करो, सबका भला करो, एंड वी विल सी इन फर्दर सच amazing videos and amazing sessions. Thank you. I had a great time.